ಇವರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾಂ ಸೇವಿತಂ ಪವಿತ್ರಂ ಗೋಕುಲ ಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶಿವಕಂ ನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ. ಓಂ ಗಣಪತಾಯ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಸತ್ಯದ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ 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 ನಮಃ ನಮಃ. ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತೆ. ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾನೆಚ್ಚಿಮೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಜೆಪ್ಪು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾನೆಚ್ಚಿಮೆಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request two captains, please come forward. Vaishak, the captain, and Sujit is the captain of Sarvagni. And Santosh will going to spin the coin and call for Sujit. Call for Sujit, yes, and Vaishak will go and spin the coin. Call? Tail is a call, and it is head. So toss which is on by Vaishak. Vaishak, congratulations. First of all, ಈ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಸೊ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್? ಈಗ ಒಂದು ಟಾಸನ್ನು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಟು ತುಂಬ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎದುರು ತಂಡವನ್ನು
ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೈದಾನ ಅವರ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವರು ಡೈಲಿ ಆಡುವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಫೇವರೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್? ಎಷ್ಟು ರನ್ನಿಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೌಲರ್ಸ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಟು? 30 ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಟ್ಟರ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಸ್. ಸೊ 30ರೊಳಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, 30-35ರೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸರ್ವಾಜ್ಞ ಸುಜಿತ್, ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಸುಜಿತ್, ಟಾಸ್ ಸೋತಿದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಡುವವರು. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 30 ರನ್ನಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ? ಇದು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವೆರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್, ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನಾವೊಂದು 50 ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅವ್ರದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ. 50 ರನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನಮ್ದು ಅನಿಸಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ 50 ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, 11 ಜನ ಸಹ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೇಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಗೇಮ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಾವು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ 50 ರನ್ ನೀವು ಮಾಡಿ. So this is what the news from the center. The toss which is on by the captain of team Red Wings Kunjat Bail, and he elected to ball first. Thank you. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ್ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅಂಕಲ್, ಆಂಟಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ತಾವುಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಟೀಮ್ ಜೆಫು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So straight away we are going to the commentary box. Over to Gopi. Thank you.
Bolar all set now for opening match after the inaugural ceremony. And we are in the inaugural match between so after that the formal formalities of inaugural ceremony, after lighting the lamp by the chief guest and the parents of in this pitch, it looks like the curator, the groundsman did all hard work here to make this beautiful pitch here for this prestigious cricket tournament. Looks like the wicket is so good for the batters, but challenge here for the batter is that the ball which is used for this particular tournament, which is Dunlop Stage 1, it's not that much of hard in the nature, and it's definitely a very competitive ball which is used for this cricket tournament. So that I think it's not easy to straight away to get the big shots in the books, and some sensible batting which is required from opening batters of Sarvagni cricketers to get some runs against a strong bowling department of Red Wings Kunjat Bail. So while talking about this morning condition, I just mentioned about slight a bit of our condition. Sun has to come with the full strength, and the slight bit of our condition out here in the usage cricket ground. But still, I think it's a good condition for cricket in the month of November. Is considered as a winter season in Mangalore, but so far we are not witnessing that much of cold weather condition, and wait and see how well the weather will going to progress here, and just hoping for some good competition for the day number 1 of this prestigious cricket tournament, and prestigious cricket tournament in the name of Gaurav Trophy 2025. Umpires already make their way to the middle of the pitch with the respective position. In the non-striker's end, umpire Sri Raj signaling towards our scorer Deepak, and at square leg umpire Roland Pinto also signaling to his partner umpire that is everything is ready for here for the first over of the power play. 6 hours game. This is not 2 hours going to be a power
the quickest wicket keeper in the present cricket. What an outstanding work done by Sabit. And already I'm mentioning about the technique of gathering the ball outside the line of leg stump. The only the good wicket keeper can do that kind of gathering. They are always mentioning the blind spot whenever the batter trying for the sweep shot and the ball is down the leg side. It's always considered as a blind spot for the wicket keeper. And one who can judge the line of the ball, then that wicket keeper can consider is one of the fantastic bowler. Here comes the next ball out. Oh, just outside the line of offside. They're going for a run and they got this wicket in the form of run out. Unfortunately, captain Sujit is also disappointed. The first ball is out for a duck in the form of run out. No other option at all in this situation where the runs which is required for the team, but wickets which are falling. 19 on the board for the loss of 7 wickets, and I think this is not a good batting performance so far from Sarvagni. They wanted to go for the expansive drive, chance of run out in the non-strikers, and one more wicket back in the pavilion in the form of run out. The Prasad back in the pavilion, and Mubir has got the opportunity to make the run out. So disappointment continues here for the Sarvagni Urva against disciplined bowling performance and a very good piece of fielding by the team. Red Wings Kunjat Bail are really dominating in the morning session, winning the toss, very important toss. Elected to bowl first, and every bowlers are justifying the addition of their captain by bowling some accuracy in the line and length. If you see that the success in this particular innings for the bowler is that not really trying to bowl quickly. They just try to exploit the morning condition. Umpire says that the fielding team exceeds the time limits, so that they have to bring one fielder inside the ring. And here comes last delivery of their innings, and the batter Shiva will going to take the strike. Here comes last delivery, dancing down the track, played it straight to the hands of Yadnesh. Not more than a single fumble from the fielder. Chance of run out, and looks like the batter is safe, and they completed couple of runs in that last delivery of the over. So that's it. The team Sarvagni Urva, they finished their 6 overs quota with the total score of 21. And they set a target of 22 to win the match for team Red Wings Kunjat Bail, and this is really the good performance from the bowlers of team Red Wings Kunjat Bail, that they are bowled with great line and length and some discipline in the bowling performance. I am wide saying this discipline in the bowling it means there is only one wide. And this is only one wide they conceded, and altogether 3 extras, 2 leg byes. There is no mistake in that leg byes, but you need to appreciate the bowlers are stick with their line and length, and they restricted their opposition for 21 runs. Now all up to the bowlers of team Sarvagni Urva, because the bowlers' temperament will go into tested when they try to defend this small total against top batting department of team Red Wings Kunjat Bail. You can't say anything in cricket because everybody knows the cricket is an unpredictable game, and especially when coming to the UCG cricket ground, and especially when a team like Sarvagni Urva, they got the sweet records in this UCG cricket ground of defending a small total. And that's why I'm just mentioning about even though 22 looks to be a little bit small target, but I think they need to work hard to get that 22 against the good bowling attack of team Sarvagni Urva. Altogether, it's time for Gopi to get that opportunity to
to share the mic for this innings. And good morning, Gopi. Welcome welcome for the day number 1 of the prestigious Gaurav Trophy 2025, and which is organized by the team Jeppu Friends and memory of late Gaurav. And altogether, I think it's a 2-day we are going to witness some excellent cricket in this in this historical UCG cricket ground. ಶೈನ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ SGC ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ SGC and Shine Kala, please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं, एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला गौरव ट्रॉफी 2025 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया जप्पू फ्रेंड्स मंगलूर ने, और आज इस श्रृंखला का पहला मैच इस वक्त खेला जाता हुआ सर्वाग्नि उर्वा और रेड विंग्स कुंजत बेल के बीच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाग्नि उर्वा ने बनाए 21 रन, 22 रनों का लक्ष्य उन्होंने इस वक्त रखा है। और इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज, दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और गेंदबाजी शुरू करते हुए रोहित, और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद थी। गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 0 पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू हो चुका है और गेंदबाज रोहित अपने ओर के अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद उछाला, एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद जाती हुई इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। गेंद का पीछा करते हुए फील्डर, और जब तक पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे फील्डर, और 2 रन बल्लेबाज को लेने का मौका। और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है यहाँ पर रेड विंग्स को जतबेल के लिए 2 रन बिना किसी नुकसान के। और एक बार फिर से रोहित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। जलाल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद खेला, मिस जजमेंट इस वक्त मिड ऑन पर जो फील्डर थे। जैसे ही जलाल ने स्ट्रोक खेला, मिड ऑन फील्डर ने दाहिनी ओर दौड़ना शुरू किया, जबकि गेंद गई उनके बाईं ओर, और जब तक खुद संभल कर बाईं ओर दौड़ते बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 3 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 3 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज रोहित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद थी। इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, लेकिन गेंद को ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 3 रनों पर। और इस बीच रोहित, यह गेंद उछाला, इस वक्त लंबोल पर गेंद जाती हुई, शायद वहां पर फील्डर मौजूद है। जी नहीं, गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ प्रीतम के बल्ले से, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, और पावर प्ले का फायदा उठाते हुए इस वक्त गेंद को उछाल दिया वाइड लॉन्ग ऑन के बाहर छक्के के लिए। और इस बीच अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, बॉल 2 फॉर साथ लेग स्टंप, वाइड का इशारा। और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 10 रन
ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछाला है, शायद वहां पर फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर, और इसी के साथ आखिरकार ये विकेट यहां पर गिर चुका है प्रीतम का। गेंद को इस वक्त उछाला था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा इस बार मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करने में असफल, और गेंद हवे में उछली और वाइड लॉन्ग ऑफ पर प्रोटेक्शन मौजूद था, और आखिरकार प्रीतम का विकेट यहां पर गिर चुका है, पहला विकेट गिर चुका है दर्शन। लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है इस वक्त। नो नीड टू पैनिक एट ऑल एट दिस सिचुएशन। सिर्फ 22 रनों का लक्ष्य है। और जहां तक सवाल है रेड विंग्स के गेंदबाजों का, तो एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए उन्होंने इस वक्त सर्वाग्नि उरुआ के बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 21 रन पर रोक कर रखा, और इस वक्त एक बेहतर शुरुआत कर चुका है। हालांकि अंतिम गेंद पर विकेट जरूर गिर चुका है रोहित का, लेकिन विकेट जरूर गिर चुका है प्रीतम का रोहित की गेंद पर, लेकिन 10 रन जोड़ने में सफल। और इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से प्लैनेट एयर ट्रैवल इनकी ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज जलाल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि चम्मी नए बल्लेबाज के रूप में जिनका आगमन हो चुका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त दूसरा ओवर शुरू करते हुए शिवा इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए निश्चित रूप से कम बैक करना है, तो इस वक्त एक मैजिकल गेंदबाजी, चमकदार गेंदबाजी की जरूरत है सर्वाग्नि उरुआ के गेंदबाजों को। इस बार बेहतर गेंद थी, धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर, और गेंद पर स्ट्रोक्स लगाना चाहता, करारा प्रहार करना चाहता, लेकिन गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाया। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। शिवा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहे, लेकिन अंतिम क्षण में इस दुविधा में इस गेंद को छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है, और इस दुविधा में पड़ गए थे कि गेंद को खेला जाए या ना खेला जाए, और गेंद को छोड़ दिया अंतिम क्षण में, लेकिन गेंद खुद ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। अगली गेंद लेकर शिवा जलाल के लिए, लेग स्टंप से बाहर, इस बार वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद थी और गेंद को इस वक्त छोड़ दिया। गेंद इस वक्त विकेट कीपर ने फील्ड कर लिया। 1 रन का इजाफा हो चुका है। 11 रन 11 ऑन द बोर्ड in the over number second in progress. Still 11 more to they have to score for victory. Lost it this time. I think it's caught. It's taken comfortably just inside the fence. जलाल का स्ट्रोक इस वक्त बेहतर जरूर था, लेकिन प्लेसमेंट गलत, और वाइडिश लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे, हालांकि कुछ ज्यादा दौड़ उन्हें लगानी नहीं पड़ी, 2 से 3 कदम, लेकिन इस कैच को लपकने में सफल एक बेहतर जजमेंट के साथ। तो जलाल कुछ खास इस मैच में नहीं कर पाए, और 3 रन बनाने के बाद, आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए 11 रन पर दूसरा विकेट खो चुका है इस वक्त रेड विंग्स को। जब पहल ಶೈನ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ STC ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और number 4 batsman is now comes out to the middle. सफान का आगमन इस वक्त होता हुआ नए बल्लेबाज को इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज नंबर 4 बैट्समैन, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शिवा की गेंदों का फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए गेंदबाज शिवा। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी में इस वक्त जा रही है। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थोड़ा सा वाइडर तैनात, जबकि लॉन्ग ऑन पर बिल्कुल वाइडर डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान एक फील्डर मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। और शिवा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार ब्रिलियंट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय द मिड विकेट फील्डर. In a fraction of second, he just jet the ball with both hands and he taken that one perfectly. This is a fantastic catch taken by the mid wicket fielder. जितनी तेजी के साथ गेंद उनकी ओर आई, उतनी तेजी के साथ गेंद पर अपने दोनों हाथों को अड़ाते हुए अपने गेंद को दोनों हाथों में दबोच लिया बेहतरीन तरीके से। और इसी के साथ इस बेहतर कैच के जरिए पहली गेंद पर सफान का विकेट गिर चुका है. It's out for golden duck. Safwan back to pavilion and third wicket loss for Red Wings. 11 for 3 now. तो यही एक रास्ता इस वक्त बचा है सर्वाग्नि उरुआ के गेंदबाजों के सामने की वो विकेटें उखाड़े जल्द से जल्द. और जहां तक सवाल है 3 विकेटें यहां पर गिर चुके हैं.
तो इस वक्त हैट्रिक गेंद शिवा के सामने और देखना यह कि वो अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। वैशाख नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और कैप्टन रेड विंग्स के, और इस वक्त शिवा हैट्रिक गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ कटर गेंद, परफेक्ट ऑफ कटर, अच्छा स्टॉप इस वक्त फॉलो थ्रू में किया। इस वक्त परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद फेंकी थी, धीमी ऑफ कटर गेंद थी और फॉलो थ्रू में बेहतर स्टॉप करते हुए इस वक्त गेंदबाज शिवा रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर शिवा बाउल्स। वैशाख सामना करते हुए यह गेंद ऑफ कटर, एक बार फिर से हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया था। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ ओवर नंबर 2 के समाप्ति हो चुके हैं। बेहतरीन ओवर यहां पर शिवा का समाप्त हो चुका है। सिर्फ 2 रन इस ओवर में उन्होंने प्रदान किया, हालांकि उन 2 रनों में एक वाइड के रूप में रन बना है, 2 विकेटें प्राप्त करने में सफल और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी रेड विंग्स को एक बेहतर स्थिति में नजर आता। दे आर लुकिंग इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। इट्स 12 for 2 आफ्टर 2 overs। तो इस वक्त इस मैच में हर छक्के के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया है। दिवंगत गौरव, जिनके नाम से ये श्रृंखला इस वक्त प्रगति पर है, दिवंगत गौरव के पिता हेमचंद्र ने हर छक्के पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार इस वक्त घोषित किया है। तो इस वक्त जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए प्रदीप दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बीच ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए यहां पर वैशाख, जो कि अंतिम गेंद पर सिंगल रन के बाद स्ट्राइक इस वक्त अपने पास रख चुके हैं और प्रदीप इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बेहतर गेंद, just waiting to the ball to come onto his bat at the last moment and driven that one perfectly, turn to mid on for a single. ಶೈನ್ ಕಾನದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಶೈನ್ ಕಾನದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಸ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ an absolutely a straightforward dismissal. हल्के से गेंद को इस वक्त पुश करना चाहता है, ऐसा कहना पड़ेगा। द बॉल गेट्स अ एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट, गेंद बल्ले के बैट के ऊपरी भाग पर टकराए और सीधे गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथ में और इसी के साथ विकेट नंबर 4 गिर चुका है। चम्मी की पारी समाप्त और 13 रनों पर चौथा विकेट खो चुका है इस वक्त रेड विंग्स को जत पहल। ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम गेंद पर गेंद की उछाल बाउंस को समझ नहीं पाए और गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद आसान सा कैच शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में पहुंचता हुआ और प्रदीप यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं और गेंदबाज बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता है। न्यू बैट्समैन नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल, अश्विन, और इस वक्त वो स्ट्राइकर एंड पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार, जबकि प्रदीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, सिर्फ एक रास्ता इस वक्त सर्वज्ञ उर्वा के गेंदबाजों के सामने बचा है कि वो विकेटें तुरंत उखाड़े और यहां पर विकेटें उखाड़ने की पूरी कोशिश इसमें इस वक्त गेंदबाज लेग कटर, परफेक्ट लेग कटर, स्लो वन, जस्ट मिसिंग और साथ ही ऑफ स्टंप लिटिल बिट एट द लास्ट मोमेंट और गेंद की टर्न को भांपते हुए हल्के से रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज प्रदीप, ये गेंद कट किया खूबसूरती के साथ बैकफुट पर जाने के बाद, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, बैकवर्ड थर्ड मैन पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 14 रनों पर, 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। प्रदीप अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद टॉप एज और शॉर्ट फाइनल फील्डर के हाथों में गेंद और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। परफेक्ट ऑफ कटर गेंद थी, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद इतनी ज्यादा उछाल ली कि गेंदबाज की बल्लेबाज इस वक्त गेंद की उछाल को समझ नहीं पाए, टॉप एज पर गेंद टकराई, गेंद को स्वीप करना चाहते थे और टॉप एज पर गेंद टकराने के बाद सीधे शॉर्ट फाइनल फील्डर के हाथों में पहुंची, जो कि पहले ही गेंद की ताक में खड़े हुए थे और इसी के साथ 5वां विकेट गिर चुका है। हालांकि अपने लक्ष्य से 8 रन अभी भी दूर है और 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है इस वक्त रेड विंग्स कुंजत बहल का। तो निश्चित रूप से अगले चंद गेंदों में
2-3 विकेट अगर लगातार उखाड़ते हैं इस वक्त, खासकर इस ओवर में 2-3 विकेटें गेंदबाज इस ओवर में तो उखाड़ नहीं सकते क्योंकि सिर्फ एक गेंद बाकी है। तो अंतिम गेंद पर एक और विकेट इस वक्त उखाड़ते हैं गेंदबाज प्रदीप। तो शायद यहाँ पर सर्वाग्नि उर्वा के लिए विजय के द्वार खुल सकते हैं। तो इस बीच नए बल्लेबाज मितेश का आगमन यहाँ पर होता हुआ और प्रदीप की ओवर की आखिरी गेंद, अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस वक्त प्रदीप दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, देखते हुए कि मितेश इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज मितेश के लिए इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर ठीक बल्लेबाज के पास इस वक्त खड़ा हुआ और इस ओवर में अंतिम बार प्रदीप इस वक्त मितेश के लिए। For the last time in this over, Pradeep bowls to Mitesh. ये गेंद हमें में जरूर, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग फील्डर थोड़े से स्क्वायर तैनात, 1 रन का इजाफा, हल्के से गेंद को मोड़ दिया था। ओवर की समाप्ति 3 overs completed and now after completion of 3 overs 15 for the loss of 5 wicket. Now just 7 to get from remaining 3 overs. That means it remaining 18 till overs and still they got 5 wickets kept intact. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶೈನ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ STC ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो मैच नंबर 1 का इस वक्त प्रगति पर एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मंगलूर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। जनाब कमल ब्रदर्स इनके सारथ्य में और इस बीच सुजीत गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और 3 ओवर का खेल बाकी, कोई जल्दबाजी की अभी भी उन्हें जरूरत नहीं है, काफी गेंदे बाकी पड़े हैं। इस वक्त रेड विंग्स कुंजत बेल के बल्लेबाजों के सामने यह मुद्दा ठहरता है कि विकेटें बचाए रखें और सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहे। जहां तक सवाल है सर्वाग्नि उर्वा के गेंदबाजों का, तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, सिर्फ विकेटें इस वक्त उन्हें जल्द से जल्द यहां पर उखाड़ने होंगे अगर इस मैच में कमबैक करना है। तो सुजीत तक गेंदबाजी शुरू करते हुए मितेश के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फर्स्ट बॉल हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त और गेंद इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर के हाथों में, वो रन बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार गेंदबाज सुजीत इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज मितेश के लिए इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा, जस्ट सिंगल गॉट, इट्स गॉट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर, 16 for the loss of 5 wickets in the over number 4th started just short while ago in their innings। और गेंदबाज इस बीच सुजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट सामना करते हुए इस वक्त अश्विन, रेड विंग्स के अनुभवी खिलाड़ी अश्विन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस बीच सुजीत अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, 1 रन का इजाफा और 1 रन इस बीच मिल चुका है, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा, 2 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल, ओवर थ्रो इस वक्त और 2 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल हो चुके हैं, 2 रनों का इजाफा, 18 ऑन द बोर्ड। फ्लडलाइट्स की रोशनी, फ्लडलाइट्स की खंबे के बत्तियां इस वक्त जल चुके हैं, शायद परीक्षार्थ इस वक्त बत्तियां जलाए गए हैं और बदली भरा वातावरण जो कि मैदान पर इस वक्त रुक चुका है, इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 19 रनों पर, 3 रन चाहिए बचे हुए 14 गेंदों में और सुजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार मितेश के लिए ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ हाफ स्टॉप, लेकिन गेंद इस वक्त पकड़ा स्क्वायर लेग की दिशा में जाती, विक्रम बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं, दूसरा रन पूर्ण करने में सफल और इन 2 रनों के साथ नाउ द स्कोर्स आर लेवल्ड। तो सिर्फ एकमात्र रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए और इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर सुजीत बॉल्स, सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है और गेंदबाज इस वक्त सुजीत, अंतिम गेंद और बेहतर गेंद इस वक्त, बेहतर गेंद और ओवर की समाप्ति, 4 overs completed and after completion of 4 overs and now अंपायर इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए इशारा करते हुए कि क्या यह वाइड है या नहीं, यह परखने के लिए तो इस वक्त अंपायर ने तीसरे अंपायर के इस वक्त निर्धार सौंपा है, शायद गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के आड़े आ गए थे, तो इस वजह से
इस वक्त अंपायर कुछ सोच विचार करने के बाद उन्होंने तीसरे अंपायर के लिए निर्धार सौंपा और तीसरे अंपायर प्रदीप जो हैं, देखते हैं इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। It's a fair delivery. So 4 overs completed. After completion of 4 overs, ऐसा कहना पड़ेगा रेड विंग्स कुंजत बैल विजय के द्वार पर आकर रुक चुका। जस्ट सिंगल रन दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 2 overs. 5th ओवर स्टार्ट्स, 5वां ओवर शुरू होता हुआ। प्रदीप जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 3 रन प्रदान करते हुए 2 विकेट प्राप्त किए थे। इस वक्त तैयार, ये गेंद उछाला इस वक्त हवे में, फील्डर शायद वहां पर नहीं है और गेंद इस वक्त गेंद को लपक लिया गया है बेहतरीन तरीके से। दिस एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर इन फैक्ट। तो यहाँ पर एक बेहतर कैच लपकने में सफल फील्डर और इस बेहतर कैच की बदौलत ये विकेट गिर चुका है। 5th ओवर स्टार्टेड, 1 डिलीवरी ऑलरेडी बाउल्ड एंड प्रदीप गॉट हिज 3rd ब्रेक थ्रू। और एक रन अभी भी अपने विजय से दूर, छोटा विकेट खो चुका है। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स फॉर रेड विंग्स कुंजत बैल। 5th ओवर स्टार्टेड, 1 डिलीवरी ऑलरेडी बाउल्ड इन दिस ओवर और नए बल्लेबाज यज्ञेश का आगमन होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे प्रदीप की गेंदों का। सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में और प्रदीप दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद उछाला खूबसूरती के साथ यज्ञेश ने और इस रन के साथ रेड विंग्स कुंजत बैल रजिस्टर्ड 4 विकेट्स विक्ट्री विद 10 balls to spare in their innings against Sarvagni Urva, and with that victory they are through to the next round of this tournament. So the first match of this prestigious cricket tournament, Gaurav Trophy 2025, which is proudly organized by Jeppu Friends, has came to an end, which won by Red Wings Kunjat Bail by 4 wickets with 10 balls to spare against Sarvagni Urva, and with that victory they are through to the next round of this competition. So the next match, one more good match is now coming up. The host team, Planet STC Jeppu, will take over Shine Khana in the next match, and that match starts within just a short while. तो दूसरा मैच शुरू हो गया छोटे से अंतराल के बाद, और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर दूसरा मैच शुरू होगा। तो अब वक्त है देखा, नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So man of the match of this match award goes to the man who bowled brilliantly, conceded just 6 runs in his 2 overs, and also he captured 2 wickets. His bowling analysis: 2 overs, no maiden, 6 runs and 2 wickets. Dharma, because of this fantastic bowling performance, Dharma of Red Wings Kunjat Bail enjoyed the man of the match, and I request Dharma of Red Wings, please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. I request our honorable guest, Mr. Hemachandra, please distribute the award, man of the match award for Dharma, and also we request Pritam. I request Pritam, please go to the stage and receive the cash prize of 500 rupees for hitting a 6 from which is declared by Mr. Hemachandra. And I request Mr. Hemachandra, please distribute rupees 500 cash prize for 6 for Prajwal, as well as the man of the match award for Dharma for his fantastic bowling performance. 2 overs, no maiden, 6 runs, 2 wicket. Now the second match is going to start within just a short while, and we'll be back right after short break with my friend Satish in English. Thank you. Dhanyavad. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್.
So thank you very much, Gopi. Welcome to the match number 2 of day number 1 of prestigious Gaurav Trophy 2025 in loving memory of late Gaurav Bolar. And Jeppu Friends, Planet Air Jeppu Friends presenting this cricket tournament. And we are just waiting for the opening batters. And Shine Kana, please send your opening batters to the middle as quick as possible. So first match, which is comprehensive victory for the team Red Wings Kunjat Bail against team Sarvagni Urva, and we are in the match number 2, and Shine Kana takes on Planet Air SDC. The winning the toss, captain of Planet Air SDC, they are elected to ball first. I request once again the opening batters of Shine Kana. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೈನ್ ಖಾನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾಕಲಾ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. So opening batters already there made their way to the middle of the pitch, and Shah Nawaz will go in to start the proceedings as always for the team SDC. And from the commentary box, and the signal came from umpire Roland Pinto, and the bowler will go in to start the first over from the commentary box, and Shah Nawaz in that power play. And here comes the first ball, right arm over the wicket. Ball starts with a beautiful delivery, and typical power play deliveries, isn't it? When you are operating in the power play, the little margin for error, the need to keep the line and length straight away to get away from the big shots. And it's a good start from Shah Nawaz with a decent line and length just around outside the line of off stump. Second time in this over, ball quicker and faster one, and umpire rightly so difficult to judge that line of the ball, but it's gone far outside the line of off stump, and wide call by umpire, as Shah Nawaz just coming in front of umpire after that. This time again the ball drifting down the leg, some chance of run out in non-strikers, and wide throw came from the fielder at square leg. Very wide throw indeed, and from the fielder, so enough time for the batter to complete the single. Good over from the point of view of team STC Jeppu. After completion of first over, it's 5 for 1, team Shine Kana against team STC Jeppu. Opportunities created for the fielder Acha Bannur when the ball is went straight to the hands of the fielder, but he couldn't manage to capitalize. The throw is not the good enough to gather the throw in the non-striker's end. Now he himself coming to the bowling area to bowl the second over. And from the Planet Air Travel and bowled the second over of the power play. Umpire Pradeep Kothari the first time. And this day number 1 officiating in the middle. Again played it nicely in the gap and quite deliberately chipped the ball into the gap. And coming for looks like the throw, which is definitely little bit powerful. Definitely the opportunity for run out is created, but I think the opportunity is still there for the wicket keeper for Shashi to gather the throw from the fielder, but ample time for the batter to complete a couple of runs here. 7 on the board. Acha balls this time against the line, played it straight to the fielder, chance of run out again and non-strikers, and again the throw which is missed by the bowler. So 2 chances in 2 balls. The wicket keeper, the first attempt, first chance, missed the throw. Now the bowler misses the throw from Shah Nawaz. A very good piece of fielding there from Shah Nawaz from the short mid wicket.
pick up and throw. It's a very good throw actually from Shahnawaz. It's not a good position for him to return the throw, but he made it very nicely. Again, a good looking stroke there from Azim to get the single down to long on, walkable single. With the addition of that single score, but now moves on to 9 on the board for 1 wicket in the over number second of the power play is in progress. Here comes Acha. Oh, this time appeal for leg before wicket. Looks like the last moment he's got a bat onto that. Possibly, slight a bit of doubt in the mind of the wicketkeeper whether the bat burst or pad burst. But certainly I think the bat which just came right in front of his front foot, so that certainly it's a bat from the batter. Here comes Acha. Right arm over the wicket. This time both Acha bowling there from Acha Bannur. Right on the target, right on the money. Beautifully delivered, just a sharp incoming delivery. The batter has no clue whatsoever with that sharp incoming delivery, beaten by the pace as well as the turn. And Acha has got the wicket for his team with a beautiful incoming delivery. And wicket number 2 is back in the pavilion. It's 9 for 2. Team Shine Khana. Meantime, match number 3 after this match will be played between Durga Konchadi versus Jaguar Kudroli. So that I request the players of both the teams kindly request you to please complete the formalities of signatures as soon as possible. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗೂರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Nawaz. And if it's not Acha Bannur, little bit correction. And a very good over from Hanif. Excellent over, the second over which is bowled by the bowler Hanif. And over number 2 which is comes to an end, and still searching for the right track. Shine Khana are 9 on the board for the loss of 2 wicket. The 4.5 runs per over, and it's a really good toss to win by the captain of the side, Nishu, winning the toss, selected to ball first, and so far that bowlers picked up 2 wickets. Both the opening bowlers picked up 1 wicket each, the opening bowler in the power play. And now the need to rebuild the innings here from 2 batters of Shine Khana to get some partnership here, very important. Azim still there in the middle as opener for the side. He's on Sigers, and the new batter Shifaz is in non-Sigers, and no change in bowling from the commentary box end, and Shahnawaz will going to continue because of his very good first over of just 5 runs and a wicket. And here comes first ball. Nicely swept that one down to short, fine degradation, not a powerful shape, just closing the face of the bat. Good technique there from Azim, and those who are watching this live telecast, and of course the youngster can see that how we need to implement that technique of sweeping the ball, and is a perfect technique. This time reverse sweep. After the sweep shot, Shifaz is interested with the reverse sweep, and
played it gently down to point region for a single. He's off the mark and total score now moves on to 11 on the board without for the loss of 2 wicket. Shahnawaz. Third time in this over away from us. Wow, lovely delivery, excellent one in the occasion. Chance of run, wall party, directed and is gone. Altaf Walpadi, who is standing at short mid off region, quickly moving towards the ball and gets the ball and hits the stump in the non-strikers end. Unfortunately, Azim, who is looking so good so far in the middle, is not really survived from that directed from Altaf Walpadi. The wicket number 3 back in the pavilion. Now we can see that Shaheen Khana are struggling to get that partnership going. That even though I think late reaction coming from the batter, it's not so easy once you are a striker, because after you are getting into the position and try to hit the ball, it takes a little bit this few seconds for the strikers to start the run. But for the non-striker, they will start straight away. There starts the run straight away from the non-striker. But for the striker, it takes a little second to get into that position to get run. That's what lacking here is a few seconds he is missed to save his wicket from the run out. Shahnawaz drives, nice looking stroke down to long off wideish and wanted to come back for the second and managed a couple of runs quite easily. Good placement here from Shifaz in the negation. He got the width outside the line of off stump and with the full face of the bat he drives that one nicely in the gap for a couple of runs. And 13 for the loss of 3 wickets in the over. Number 3 is in progress. Shahnawaz bowls, wanted to go for the reverse sweep, missed it completely. Wicket keeper behind the stump. Shashi gathers the ball and no chance of any run. The condition continues here of the similarity. We can see the usage cricket ground. No big sunshine here. Again leaning into that drive. In fact, he just reaching for the delivery, opening the face of the bat and just getting the direction down to back point region. One more successful over which is comes to an end, and successful in the sense of the run out which is taken place in this over after completion of over number 3. Shaheen Khana are 14 for 3. Vinod Pollard is one more very key player for the side of STC Jeppu. One bidded for some good money in that Kudla Premier League and the good all-rounder for the side as well. We're going to start the over number 4. Here comes the first ball from the far end. Very clever, very clever. The slow leg cutter in the negation to start with, and batter almost confused with that slowness of the delivery. Shifaz just tried to get the bat into that ball. Missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. They wanted to go for the switch it. Missed it completely. Back to back 2 dot deliveries from Vinod Pollard. Useful cricketer. Complete cricketer in fact. One who gives everything when he comes into ball or into bat or in the field. Quite a different delivery in the negation. Chance of run out. Altaf Walpadi once again trying for the shy at the stumps in the non-strikers end. Definitely the batsman is out of a crease if the ball hits the stumps. But this time the ball which is all over the stumps, almost over the stump. And lucky escape for the batter. Top edge. Who is going to take this one? Shashi, the man who is very comfortable to take the catch. Leading edge of the bat. And that's the end of Akeem in the negation. Leg cutter which is a slower one. Batsman too early into the stroke. And tried to flick that one off his legs and misses that completely. The wicket number 4 which is back in the pavilion. So disappointment continues here for team Shaheen Khana.
So wicket number 4 back in the pavilion, and number 6 batter walks towards the middle, and with the jersey number 06 for the team Shine Kana, Vinod. Right above the wicket, ooh, beautifully balled, just missing the stump in the negation. Bails her off, but not from the ball, but from the hands of wicket keeper. Afreed, the batter, is on strike now. Vinod from the Planet Air Travel End, outside the line of off stump, wide call by umpire, rightly so. Trying for the quicker and faster one, straighter one. He is mixing up the delivery very well, but this time he is looking for some experiment in the negation. They lost his concentration over the line. Again the good one outside the line of off stump, quite end wicket taking over, which is comes to an end here from Vinod Pollard, and Shine Khan are still searching for the right track, struggling in the middle. It's 16 for the loss of 4 wicket after completion of over number 4. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗ್ವರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Nawaz brought into attack. One more the useful cricketer, one who was sold for good money in that auction of mega auction of Kudla Premier League 2025, is brought into attack from the commentary box end, and one more very useful all-rounder, one can contribute from both bat and ball, is on attack from the commentary box end with the jersey number 44, left arm around the wicket. Drives, nice looking drive, and Shifaz in fact is looking so good. Akim correction, and Shifaz correction, who's looking so good so far, as strikes the ball very well. Change of face, and in the air, but played it very nicely over head of the extra cover fielder, quite deliberately, because maybe looks like the batter hit the toe along with the bat while trying to just a lovely shot. Oh, what a catch! What a fantastic catch taken by the fielder. I think the fielder is Anif there in the deep square leg region, taken that absolutely a blinder, because ball went like a tracer bullet, and there no chance for a reaction for that square leg fielder. Just have a look at the catch there, absolutely fantastic, isn't it? Because batter hit that one pretty firmly. Akim, everything right behind the stroke, but just a problem for that placement is not good enough, and the deep fielder taken a fantastic catch in the deep, and the wicket number of 5 is back in the pavilion. This time lovely delivery coming into the batter and going for the single, and looks like it's from the bat, inside edge of the bat, and one more addition to total, with the addition of that single score, but moves on to 19 on the board. Tidy bowling performance continues here from the field bowlers of team Planet Air STC. Even fielders also really getting some good support for the bowlers in the field, getting some good catches, getting some good run-outs. Altogether, they're making some difficult for the batters of team Shine Kana. Over number 5 in progress. So far, Nawaz bowled 4 deliveries in this over, picked up a wicket for 3 runs. And now the batter is on strike, is Afreed. Afreed this time wanted to go for the expansive drive, doesn't get that much of timing enough, picked up a single down to deep square leg region. With the addition of that single score, but moves on to 20 on the board.
20 for the loss of 5 wickets. Last time in this over, drives that one down to deep long on. Not more than a single. Shravan, the batter, picked up a single. He will go to retain the strike. Tidy over and wicket taking over. 5 runs and a wicket in this over there for Nawaz after completion of over number 5. It's 21 Shine Khana for the loss of 5 wickets. Gaurav Trophy 2025 is under progress. A good start for this cricket tournament with that inaugural ceremony. A very meaningful inaugural ceremony by the lighting the lamp by the parents of late Gaurav Bolar, and with their presence, inauguration which is completed in the morning. This time, what a delivery! What a fantastic delivery! Wicketkeeper Sashi there in the behind the stump, and again fails to gather, and a slight bit of opportunity is created for the stump out with that flighted leg cutter from this time. Well, going to be a bonus run. This is going to be a bonus run. All we can see there's some experiment from bowler Vinod Pollard. This is one of the problems for him. Sometime he is looking for quicker delivery and different delivery, but fails to maintain the line and the length. 23 on the board for the loss of 5 wickets. Again going for the big shot without seeing the line of the ball. Blind attempt, and the ball which came into the hands of a wicket keeper. Dot delivery. Vinod. Right arm over the wicket bounce. This time chipped it away, but Shahnawaz in the cover point will going to take this catch very comfortably. Wicket number 6 back in the pavilion of team Shine Khana are looking in more trouble now. 23 for the loss of 6 wicket. Of course, we are watching this cricket tournament, Gaurav Trophy 2025. We are thankful and grateful to all the donors and sponsor of this cricket tournament. We are thankful and grateful. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರು ವಾಹನ ಮಾಲಕರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಟೆಂಪೋ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಟೆಂಪೋ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ us. Thank you very much. And here comes the next delivery. Bowled him, cleaned him up. Fantastically bowled. The quicker and faster one and straighter one, and no turn whatsoever, but he's just maintaining that line, targeting the middle stump. Wicket number 7 is back in the pavilion of Shine Khana. They're struggling. 23 on the board. Yes, we are talking about the support coming for this cricket tournament. We are grateful and thankful for all the donors and sponsors. Special thanks to fine sponsors, Planet Air Travel Dubai, and we are thankful and grateful for Elite Cafe Krishnapura, and Laundry Wala, the Karavali Credit Cooperative Society Limited. We are coming to the more names after this over, and we know this bowling the last over, last delivery of the innings, and this time it's going to be a dot delivery. The last delivery, the dot and the run out. That's it. Shine Khana will going to finish the innings with just 23 runs, and they set a target of 24 runs to win this match, and wait and see how well the team STC Jeppu will going to get this target. Meanwhile, coming to the more names here, we are contributed heartily for the success of this cricket tournament, Gaurav Trophy 2025. We are thankful and grateful for Raki's Chai Station, Gujjar Kere, Mulihitlu Friend Circle registered Mulihitlu, Gokarnatha Tigers Jeppu, Sridevi Engineering Works Mulihitlu, City Friends Mulihitlu, 10 FC Sports Mr. Farooq Melkor, and sponsors for all man of the match. We are really thankful and grateful for your support for the success of Gaurav Trophy 2025. We'll get a short break here, and after a short break, my friend Gopi will going to take over the
The last delivery, stump out. Thank you. It's not a run out, it's a stump out. So that wicket for Vinod Pollard in the last delivery of the over. So outstanding bowling performance from Vinod. 2 overs, no maiden, 4 runs and 4 wickets. And one more excellent bowling figure from Vinod Pollard. It's over to Gopi. ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ as well as ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ, please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. धन्यवाद सतीश. तो जहां तक सवाल है इस वक्त एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए प्लैनेट एयर एसटीसी के गेंदबाजों ने सिर्फ 22 रनों पर रोक कर शाहीन खाना के बल्लेबाजों का उनकी पारी की शुरुआत होती है. नवाज लेफ्टी और अल्ताफ वालपाड़ी जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद, गेंदबाजी शुरू करते हुए हुजैफ और पहली गेंद उनकी पारी की लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग आउट साथ ही ऑफ स्टंप और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर. पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और जहां तक 23 रनों के लक्ष्य के अंदर 24 रनों के लक्ष्य के अंदर रोक कर रखने का सवाल है. इस वक्त शाहीन खाना के गेंदबाजों को राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक घातक गेंदबाजी यहां पर करनी होगी अगर प्लैनेट एयर एसटीसी के सशक्त बलाढ्य बैटिंग लाइनअप पर अगर अंकुश लगाना है तो. और पहली गेंद बेहतर फेंक चुके हुजैफ और अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार नवाज लेफ्टी जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और इस बीच हमला करने के लिए तैयार हुजैफ. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 22 का इशारा अंपायर का और 1 रन के साथ 1 रन बिना किसी नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर इस वक्त दिखाई देता हुआ एक और आक्रामक बल्लेबाज अल्ताफ वालपाड़ी का स्ट्राइक पर इस वक्त वो आ चुके हैं और हुजैफ की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार. अल्ताफ वालपाड़ी और लेफ्टी नवाज दोनों भी पावर प्ले का फायदा उठाने में माहिर खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी. और हुजैफ दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी, दिस इज एन परफेक्ट ऑफ कटर और गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहता अल्ताफ ने लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को उछाल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 3 बेहतर गेंदें गेंदबाज हुजैफ इस वक्त फेंक चुके हैं और अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोला कलाइए के साथ इनटू द गैप एज वेल. डीप मिड विकेट पर फील्डर काफी पीछे था ना. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल. जैसे ही अल्ताफ ने जाना कि आक्रामक स्ट्रोक लगाना हुजैफ की गेंद पर उन्हें मुश्किल हो रहा है तो हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया कलाइयों के सहारे खाली क्षेत्र चुनते हुए और 2 रन इस बीच दौड़कर पूर्ण करने में सफल. और इन 2 रनों के साथ 3 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है हुजैफ. एक्स्ट्रा क्विकर अपने पेस को वृद्धि करने के प्रयास में ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद इस वक्त उन्होंने फेंकी वाइड के रूप में और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर. 4 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट और हुजैफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार अल्ताफ वालपाड़ी के लिए.
स्वीप करना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। स्क्वायर लेग पर जब तक फील्डर आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। अब एक बार फिर से नवाज लेफ्टी जो कि इस वक्त क्रीज पर आ चुके हैं और हुसैफ की ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज हुसैफ अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार नवाज लेफ्टी के लिए। यह गेंद उछाला, गेंद हवा में, ये कैच था जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में इस कैच को लपकने में असफल। ऐसा कहना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन। और हुसैफ इस वक्त गेंदबाज हैं, इस वक्त काफी असंतुष्ट दिखाई देते हुए, और इस वक्त गेंद सीधे पहुंची थी एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में, लेकिन इस कैच को लपकने में असफल, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। 6 ऑन द बोर्ड टू लूज एन विकेट। फर्स्ट ओवर हैज बीन कंप्लीटेड एट अ गुड ओवर केम रन फ्रॉम हुसैफ। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद प्लैनेट एयर एसटीसी 24 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 6 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस आउट ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर्ड बाय प्लैनेट एयर एसटीसी, चेसिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 24 in 6 overs. Still 18 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs. Required run rate exactly 3.60 runs per over for them at this situation. और प्लैनेट एयर ट्रैवल एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए श्रवण, और सामना करने के लिए तैयार नवाज लेफ्टी। और इस बीच अपनी ओर की पहली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार गेंदबाज श्रवण, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद लेफ्टी नवाज के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची इस वक्त, चूंकि पूरी तरह से रिवर्स शॉट खेलने में, और गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया गया शॉट फाइन लेग फील्डर द्वारा। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस बीच श्रवण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार नवाज लेफ्टी के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर। इस बीच वाइड का इशारा, certainly the ball drifting down the leg side at the last moment, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर। ये गेंद रिवर्स शॉट, just clearing the infield at cover point. In fact, he's got a single for that. In fact, they come back for the second, और 2 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। ऐसा कहना पड़ेगा, स्ट्रोक पर नियंत्रण नहीं था, नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट शॉट, बट इट क्लियरिंग द इनफील्ड एट द लास्ट मोमेंट, और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। 9 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और श्रवण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद bowling just gone for a big one this time, and he lost his off stump. This is a fantastic delivery with a much straighter line bowled by the bowler Shravan, and he just got the rid of Nawaz lefty. और पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है। करारा प्रहार इस वक्त करना चाहा था, लेकिन बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, और आखिरकार गेंद को उछालने के प्रयास में चूंकि गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराए, और गिल्ली बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 9 रनों के ऊपर। इट्स 9 for 1 for प्लैनेट एयर एसटीसी। तो इस वक्त विकेट यहां पर गिर चुके हैं। पहला विकेट गिर चुका है नवाज लेफ्टी का, और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, वन मोर अल्ताफ इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, दिस टाइम इट्स बसवनगुडी, और अल्ताफ वालपाड़ी और अल्ताफ बसवनगुडी इस वक्त क्रीज पर मौजूद, दोनों अल्ताफ जो कि क्रीज पर मौजूद, और श्रवण इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त गेंदबाज की दाईं ओर से मिड ऑन की दिशा में गेंद पहुंची, इस वक्त रन नहीं मिलेगा। हालांकि अल्ताफ वालपाड़ी 2 कदम आगे जरूर आगे बढ़ाए थे नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को मिड ऑन पर फील्ड किया जा चुका है, और श्रवण ने इस बीच अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तो विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अल्ताफ बसवनगुडी के लिए। यह गेंद swings and this time he finds the gap as well, just clearing the infield and just took the advantage of the power play.
इस बार गेंद को उछाल दिया तो ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ अल्ताफ वालपाड़ी ने, माफ कीजिए अल्ताफ बसवनगुडी ने, और पावर प्ले का भरपूर फायदा यहां पर उठाते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच श्रवण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद एक बार फिर से उसी तरह का स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहता, रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। दूसरे ओवर के समाप्ति 2 overs completed and after completion of 2 overs Planet Air SDC looking in a good situation. In fact, the match to score 13 runs on the board for losing 1 wicket after completion of 2 overs. And now just 11 runs to get from 4 overs, and straight away the required run rate is now coming down to exactly 2.75 runs per over. और इस वक्त काफी बातचीत चलती हुई शाइन खाना के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। निश्चित रूप से कमबैक करना है तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा एक घातक एक मैजिकल गेंदबाजी ही अब शाइन खाना को इस मैच में वापस ला सकती है। और उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में नई ओवर की शुरुआत करते हुए इस वक्त गेंदबाज राजिक और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त अल्ताफ वालपाड़ी। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और इस बीच राशिक अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। सुबह का वक्त लगभग 11:05 इस वक्त बज चुके हैं। बिल्कुल बदली भरा वातावरण, क्लाउडी एटमॉस्फेयर मैदान पर छा चुका है। और इस बीच यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। इन फैक्ट राजिक फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ अराउंड द विकेट तैयार। यह गेंद धीमी गेंद थी और इस धीमेपन को पहचानते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया और तेजी के साथ 1 रन के साथ अपना छोड़ बदलने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 15 रनों पर 15 for 1 नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। इन फैक्ट राजिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अल्ताफ बसवनगुडी इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है प्लैनेट एयर एसटीसी के बल्लेबाजों को। नो नीड टू पैनिक एट ऑल एट दिस सिचुएशन। काफी गेंदें बाकी पड़े हुए हैं, सिर्फ 9 रन चाहिए और विजय के लिए। फुल टॉस क्विकर गेंद को खेलने में चूके, गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे और दूसरे प्रयत्न में गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया। फील्डर ने रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 15 रनों पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। अगली गेंद धीमी गेंद, ड्राइव कर दिया गेंद को, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट इज बैट एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली डाउन टू अ लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल इन अ स्लो डिलीवरी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। राजिक अल्ताफ वालपाड़ी के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। फुल टॉस, लेकिन इस गेंद को उछालने में असफल। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, काफी तेजी के साथ आई थी और इस तेजी को पहचान नहीं पाए। गेंद उनके पैरों पर टकराई, लेग पाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 17 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर और राजिक का अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार टैप किया है, लेकिन न खाली क्षेत्र पर गेंद की टिप्पा खाते हुए कवर पॉइंट पर और 1 रन का इजाफा इस बीच हो चुका है। ये दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, दोनों अल्ताफ वालपाड़ी और अल्ताफ बसवनगुडी। और राजिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, अल्ताफ वालपाड़ी के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। फुल टॉस कट किया इस वक्त, गेंद गली फील्डर को बीट कर चुकी है। इस वक्त 1 रन मिलेगा, दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, इसमें खतरा हो सकता है अल्ताफ के लिए, लेकिन थ्रो काफी वाइडर और बल्लेबाज 2 रन इस बीच पूर्ण करने में सफल। Couple of runs added to the total, 20 on the board, 3 overs completed, 24 the target, that means 4 required in remaining 18 delivers, that means in remaining 3 overs. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो देखते हैं कौन सा गेंदबाज यहां पर शुरू करते हैं। मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ गौरव ट्रॉफी 2025 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है जप्पू फ्रेंड्स बैंगलोर ने। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अपने हमसे दूर वाले छोर से प्लैनेट एयर ट्रैवल एंड की ओर से गेंदबाज तैयार।
Fourth over starts in their innings. First ball comes. And two bowled out, two for Osadi off stump and shot, third man fielder also misses. Again the no ball का इशारा इस बीच है, शायद गेंद को वहां पर रोकने में सफल हो चुके हैं फील्डर, और 1+1 2 runs now added to their total. Now it's a free hit delivery for the batsman. फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, सिर्फ 2 मात्र रन और चाहिए विजय के लिए, और गेंदबाज इस वक्त तैयार अल्ताफ के लिए उछालना चाहा और रन आउट इस वक्त होता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अल्ताफ अपना विकेट सैक्रिफाइस इस वक्त कर चुके हैं। जैसे ही अल्ताफ वालपटी ने गेंद को खेला, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अल्ताफ बसवनगुडी दौड़ा है स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन गेंद सीधे पहुंची थी मिड ऑन फील्डर के हाथ में, और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है। वालपटी डिपार्ट्स एंड नाउ इट्स 22 for 2. इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर, थर्ड मैन के दिशा में वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ, इन 2 रनों के साथ, Planet Air STC registered a comfortable victory against Shine Khana by 8 wickets with exactly 3 overs to spare. That means exactly 18 deliveries left, and with that comprehensive 8 wickets victory, SDC Planet Air STC are through to the next round of this competition. So match number 2 of this prestigious cricket tournament, Gaurav Trophy 2025, has been came to an end, which is proudly presented by Jeppu Friends Mangalore in loving memory of late Gaurav Bolar. And now the match number 3 is now going to start between Jaguar Kudroli versus Durga Konchodi. So news is here from the center that the captain of Jaguar Kudroli, after won the toss, elected to field first, and that match starts within just a short while. तो नया तीसरा मैच यहाँ पर शुरू होगा। तीसरा मैच यहाँ पर शुरू होगा एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद, और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे एक और काबिल दोस्त, हमारे टैलेंटेड एक और कमेंटेटर श्रीमान सात्विक के साथ आपके साथ हम उपस्थित होंगे, सात्विक के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 3 शुरू होगा। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Yes, thank you, Gopi. Heading over to the third match, that's between Jaguars Kudroli as well as Zaman Boys Kalarka. I pardon, it's Jaguars Kudroli versus Durga Konchadi, the third match of Gaurav Trophy 2025. The man of the match of the second match, that was between STC Jeppu Planet Air versus Team Shine Khana, is Vinod Polar of Team Planet Air STC Jeppu. Congratulations on being the man of the match award of the second match of Gaurav Trophy 2025. Yes, the man of the match award, Vinod Polar of Planet Air SDC Jeppu. I request Sandhya to hand over the man of the match award. Pardon, Srimati Sandhya to hand over the man of the match award to Vinod Polar of Planet Air SDC. Congratulations on being the man of the match of the second match of Gaurav Trophy 2025.
It's the man of the match award of the second match of Gaurav Trophy. It's Vinod Pollard from the Planet SDC Jeppu. A big round of applause. Yes, thank you. Heading over to the third match of Gaurav Trophy, that's between Dhruv Konchari as well as Jaguars Kudroli. Yes, welcome back. It's going to be the third match of Gaurav Trophy 2025 that's going to be held between Sri Durga Konchari as well as Jaguars Kudroli. Yes, we have on the batting attack for Sri Durga Konchari, it's Daivik as well as Vinith on the strikers and Daivik on the non-strikers end. Coming to the bowling department of Jaguars Kudroli, we have Riaz to do the proceedings of the first over. Coming from the Planet A end, passing on by Sriraj for the first time. 2 Vinith on the strikers end. Start of the first over and start of the first innings in the third match. Vinith is the first ball. Ball was coming round the carpet, just a flick towards the onside. Well field protection there coming from Sahal. Just a single start of the scoreboard for the Sri Durga Konchari there. After completion of one ball, 1 run on the scoreboard. Still 5 more to go in the first over. Second ball in progress. 2 Daivik on the strikers end. Riaz for the second time. 2 Daivik. And the ball said, ball was having an extra piece coming down the carpet there. And just a misfield. There was a misfield between the two fielders. The ball was going towards the boundary 4 was there. It's the start of the boundaries coming from the bat of Daivik. Just a fumble in the field. Let them giving extra 4 runs for the team. Good start for Sri Durga Konchari. 2 balls completed. 5 on the scorecard. Third ball in progress. 2 Daivik. Is the bowler coming to the third time and hits it in the same region, and I think the fielder there given a protection, just a single coming in this delivery.
well back up after giving 4 runs in the previous delivery. Good protection given in this next one. 3 balls completed, 6 runs on the board, no wicket down for Sri Durga Kanchari. 3 balls completed, last 3 more to go in the first over. 4th ball in progress. Riaz coming to win it. He balls it slightly outside the half stump. A good ball. Dot ball coming after 3 deliveries. 4 balls completed, 6 on the scorecard. Last 2 balls remaining. We need to face the 5th time of Riaz's delivery. Slight a bit of field setup done from Riaz. 5th ball in progress. 2 win it. And he balls it. He tries to put it into the extra covers but missed it completely. No connection between the bat as well as the ball. A slight bit of 2 consecutive balls after giving many runs in the previous 3 deliveries, I would say. Last ball remaining in the first over. And this is the last ball. Tries to flick that on the onside region but missed it. There's a miscommunication between the batsman. Miscommunication. This leaded to the first wicket of Sri Durga Kanchari in the very first over. So the first wicket is departed for Sri Durga Kanchari. It's Vinith going back into the pavilion. Slight a bit of miscommunication between the batsmen led them to the first wicket falling down for Sri Durga Kanchari. Nevertheless, completion of 1 over. Scores just 6 on the board. Loss of 1 wicket down. Let's see, still 5 more overs remaining in the first innings. Batsmen are still there in the Sri Durga Kanchari to bring up a score and the maximum score towards the team. 6 on the scorecard. It's a third umpire call for the man who's gone out there. Is looking for the third umpire who's gone out in the last delivery of the first over. Yes, Daivik is departed. Daivik is departed. The man who has went outside the park. I request him to come back inside the field. That's Vinith. Daivik was the man who got departed because the man Vinith has stepped inside the crease first. After that, Daivik was slight a bit out of the crease. Because of that, he was departed in the last ball of the first over. Slight a bit of miscommunication in the last delivery, I would say. Vinith has come back into the field. It's completion of first over, 6 runs on the scorecard. 1 wicket down. It's the start of the second over. I think Sahal is doing the proceedings and to start the second over for Team Jaguars Kuthroli. Coming from the commentary box and for the first time to the left-handed batsman. It's Vinith on the striker's end. And Jayant on the non-striker's end. The new man coming at the number 3 batsman for Sri Durga Kanchari. Sahal to start the proceedings for the second over. To Vinith. Passing umpire Pradeep Chari for the first time. And he balls it. What a great delivery. See, just a flake coming from the last moment from the batsman. Just a single coming in this delivery. Good start for the over. Single one coming on the scorecard. Addition coming. 7 runs on the board. 1 wicket down. Jayant on the striker's end to face his first ball of his innings.
Second ball in progress towards the right-handed batsman. There's a right and left combination for Sri Durga Konchadi on the batting attack. Second ball in progress. Giant on the striker's end. Sahal to ball. The second ball to Giant of the second over. And the ball said, flicks it towards the onside. Picks up. Well, and just till moment, there was a catch attempt, but fielder was right a bit behind. Because of that, he could not get hold of that ball. So the batsman had ample of time to take up 2 easy runs there. So a combination of 2 balls, scoreboard moves on to 9 on the board after 2 overs. Third ball in progress, to Giant. Third ball towards Giant, passing on by Pratik Kothari. Sahal coming right arm over towards the man. And he balls it, and he tries to play that shot towards the same region, but I think there was not a good connection there. Nevertheless, they have got a single run in this delivery. 3 balls completed. The score moves on to double digit 10 on the board after completion of 3 balls of the second over. Fourth ball in progress to win it on the striker's end. Sahal coming for the 4th time in the second over. Coming right arm over towards the left-handed batsman Vinit. And he delivers, and he tries to play towards the outside there. Missed it completely. Last 2 balls remaining after this delivery. Score moves on to 11 on the scorecard. 5th ball in progress. Giant on the striker's end. Sahal for the 5th time to Giant. Coming right arm over from the committee box end. And the ball said, tries to flick down, ball moving towards the final region. A fielder there, just a fumble at the last moment, but the batsman had ample of time to take up a single run there. So after completion of 5 balls, the score moves on to 12 on the board. Last ball remaining of the second over. Last ball remaining, 2 minutes. And the ball said, what a ball that was. He picks up straight down the ground, but I think fielder there given a protection. On the middle 5 region, just a single military. Good over coming to an end. 2 over completion. Score is 13 on the board with the loss of 1 wicket down for Sri Durga Konchadi. It's the start of the third over, and Rihas has brought back into the attack from Jaguars Kudroli. After bowling the first over, he has brought back into the attack to bowl the third over for the team. Coming from the Planeteer end, passing umpire Shuraj for the first time towards the left-handed batsman on the striker set, jersey number 33. It's Vineet from Sri Durga Konchadi. So having the right and left combination, the fielders need to set up the field after the batsman rotate the strike, because they are left as well as right-handed batsmen on the field. So it's for the first time to win it. Riaz. He ball said ball was completely coming right down the carpet, but I think ball was slightly missing the off stump. A leg by signal by the umpire with the start of the first over. Single run added to the scorecard. 14 on the board after completion of first ball of the third over. And it's dry in the field, the second ball of the third over. As a ball, that's the feeder from extra cover brought back into the mid-off region there. Second ball in progress of the third over to Giant, and he tries to play the sweep shot, and he's got that result. Single coming in this delivery after completion of 2 balls of the third over.
A well decent stroke played from Giant at the second ball of the third over. Single coming in that ball. 15 on the scorecard after completion of 2 balls of the third over. Vinith on the striker's end to face the third ball of the third over. Yes, coming for the third time. Passing him by Suraj. Coming right arm over. He was in. It was a slight bit of bump at the last moment. Fumble in the fielding end there in the cover point region. Nevertheless, the batsman could take only single run in this ball. 3 balls completed. Score moves on to 16 on the board with the loss of 1 wicket down. Still 3 more balls remaining of the third over. Fourth ball in progress. He balls it and sweeps it, but I think a fielder there. Fielder placed at the right place because the batsman like Giant will hit the slog sweep shot on that point. Because of that, the field placement was done by Jaguars Kudroli. There was given a prediction, just a single coming in the previous delivery. 4 balls completed, 17 on the scorecard. Last 2 balls remaining of the third over. And hits it into the cover region, but I think fielder running from that point. Given a prediction with that ball. Just a single coming in this delivery as well. So 5 balls completed. Last ball remaining into the completion of third over. Score is 18 on the board. Last ball. 2 Giant. Riaz coming. Right arm over. For the last time in the third over. He balls it. Switch it. And the ball is fading. Fielder is in. At the last moment they got hold into the ball. I think the batsmen are running for the third one. And they have successfully made the third one. They have run 3 runs in that meantime when the fielder got fumbled at the last moment and thrown towards back into the keeper hand. 3 runs have taken in the last delivery of the third over. With this 3 run score has completely moved on to 21 runs after completion of 3 overs. As I request the team of Zaman Boys as well as United Suratkal to come to the combos to sign the official chart. The starter of the fourth over is jersey number 77, Muzammil, to take the proceedings of the fourth over from the committee box end. Talking about the last 3 overs, score moves on to 21 on the board with the loss of 1 wicket down. 2 batsmen are decently playing for team Sri Durga Gonchadi, bringing up runs with the singles and doubles and adding up the scorecard till now. 3 overs completed, 21 runs on the scorecard. 1 first ball of the fourth over. Full toss, a juicy delivery. Appealed for leg before, but I think the ball was slightly bit outside the leg stump. Because of that, leg by signal by the umpire Pradeep Kothari. Single run coming up in the first ball of the fourth over. 22 on the scorecard. Second ball in progress. Beneath to face the first delivery in this fourth over from the bowler Muzammil. Jersey number 77. Coming towards the second time. It's Muzammil. Second ball in progress. To win it. And he balls it. This was second full toss. But he thought of playing a decent stroke. Just flicking that ball towards the cover point region. And with that delivery, 2 balls completed. 2 runs added to the scorecard. Score moves on to 23 on the board after completion of 2 balls of the fourth over. Third ball in progress. Giant on the striker's end. He balls it, a lower full toss delivery. He missed it completely. There was no connection between the bat as well as the ball. Ball was slightly inside the white line. Because of that, ball was completely beaten. The scoreboard is frozen there. 3 balls completed. The score is 23 on the board. Yes, I request the players of Zaman Boys, Kalarka as well as United Suratkal to please come to the commentary box and to sign the official chart. It was a by signal by the umpire. Single one coming up. Addition to the scorecard. 24 runs on the board after completion of 4 deliveries. Last 2 balls remaining of the fourth over. Vinith on the striker set to face the 5th delivery of the fourth over.
A baller coming right up round the wicket, passing up by Pradeep Kothari from the committee box end for the fifth time. 2 win on the striker's hand. He balls it, flicks it, and it was a tough catch, but the ball was slightly above the head of the fielder. Because of that, the batsman had ample of time to take the second one. Appeal for one out, and it's given. Not is the third umpire for the run out on the non-striker's end. Let's wait and see what will be the call. Is batsman inside the crease? It's out, as well as batsman Jayant has shown his sportsman spirit, has walked outside the pavilion, knowing him as out. The before end, the new man coming into the batting attack for Sri Durga Konchadi. It's Santosh. One more experienced campaigner here, jersey number 55 for Sri Durga Konchadi. Is the final delivery of the fourth over. Muzamil coming for the final time to win it. And what a delivery that was. A slight of turn at the last moment. Because of that, there was no connection between the bat as well as the ball, like by signal by the umpire. Now the completion of 4 overs, the score has strictly moved on to 26 runs on the board after 2 wickets down for Sri Durga Konchadi. Is talking about the tomorrow's match. We are looking about many high voltage match, because it's going to be the Mangrove Pool going to be witnessing in the Gaurav Trophy 2025 in this most prestigious UCG cricket ground. Hoowa. It's a new man coming into the bowling attack from the Jaguars Kudroli. It's Charan, jersey number 1. Completion of 4 overs, score is 26 on the board. Loss of 2 wickets down for Sri Durga Konchadi. And to do the proceedings of the 5th over is Charan, who has brought into the attack for the bowling department of Jaguars Kudroli. Vinith is still on the striker's end under the batting attack for Sri Durga Konchadi. There he is playing decently for the team, bringing up the runs in singles and doubles, making up the scorecard up to an highest mark to set up the target for team Jaguars Kudroli there. So start of the 5th over. First ball, tries to play the switch hit, but I think missed it completely. There was a chance for an out. I think even the keeper missed it. Batsman was well inside the crease. By signal by the umpire. Single one taken in this first delivery of the 5th over. 27 on board at the start of the 5th over. It's the second ball in progress to Santosh on the striker's hand, and he was it. It was a great delivery. Batsman just flicked that. The baller went back towards the bowling side, and there was no run taken in this delivery. 2 balls completed of the 5th over. Third ball in progress. And I request the players of Zaman Boys Kallarka as well as United Suratkal to please come to the combox to sign the official chart. Third ball in progress. The ball was slightly drifted away from the offside line. Umpire stretches his arm, given up the wide. One more addition to the scorecard. Score moves on to 28 on the board. Still the third ball in progress. Santosh on the striker's end. Charan in the third time. Well played into the cow point region. Fielder there, given a protection. I think non-striker batsman Santosh was eager to take the second run, but
Vineet declined for it. Nevertheless, they have got a single run there. 3 balls completed. 29 on the scorecard. Last 3 more balls remaining in the 5th over. He balls it. Flicks it away towards the cover region. Yet again, fielder there present. Given the prediction there. Just a single coming in this delivery as well. They are rotating the strikes with a single one. Addition giving up to the scorecard. 30 on the scoreboard. 4 balls completed. 5th ball in progress. And tries to flick that. But fumbles there in the fielding end. And in the meantime, a batsman had ample of time to take up the second run as well. 2 run has been added up to the scorecard. 32 on the board after completion of 5 deliveries of the 5th over. Last ball remaining in the 5th over of the first innings. It's Santosh to face the final delivery of the 5th over. Coming from Charan from the Planet 8A in the passing umpire Sriraj for the final time. And he balls it. What a shot, what a plate, what a stroke there. At the meantime there, the ball is laid out to the final region for a boundary. What a stroke played from Santosh. Behind the gap. The fielders even can't get rid of that ball. The ball was sliding, going there towards the final region for boundary 4 runs. A good stroke to end up the 5th over. Score has strictly increased up to 36 runs after completion of 5 overs there. Still 1 more over remaining of the first innings. Yes, now Sahal, the young talented bowler, has brought back into the attack jersey numbers 25, bowling from the committee box and passing umpire Pradeep Kothari to bowl the 10th over of the first innings. It's Vineet on the striker's end. A sensible player, I would say, for Sri Durga Gonchadi, bringing up the ones from his bat. Now the scoreboard on is 36 for the team with the loss of just 2 wickets down. Start of the first ball of the final over and well played towards the cover region. In the meantime, batsman's quick between the wickets to take up 2 runs. He just played a stroke towards the cover point region. A fielder there was present, but batsman's very quick and between the wickets to take up the 2 runs. So with this 2 runs, scoreboard is strictly moved on to 38 on the board after completion of first ball of the 6th over. Second ball in progress. Sahal to ball the second ball to Vineet. In this final over, coming right arm over. Passing umpire Pradeep Kothari, and he balls it. This was a lower full toss delivery, but the ball was having an extra pace. Because of that, the ball just slightly moved towards the mid-on region there. Fielder they given a protection. Just a single coming in this delivery. After this single, score has moved on to 39 on the board. Third ball in progress. Santosh on the striker's end. Santosh to face the third ball of the final over of the first innings. Sahal coming to the third time. And he tries to hit that. But I think the connection with the bat was not well. Because of that, the ball did not sail many miles. With that ball, just a single coming to the scoreboard. Now the scoreboard has reached up to 40 mark for Sri Durga Konchadi after 3 balls completion of the final over. Still 3 more to go. Fourth ball in progress. Fourth ball towards Vineet. And he was it. This was a full toss delivery. But I think batsman just flicked that towards the mid-wicket region. Fielder they given a prediction. Just a single coming in delivery as well. 4 balls completed. 41 runs coming on the scoreboard. Last 2 balls remaining of the first innings. Fifth ball in progress. Santosh to face the 5th delivery of the final over. And he was it. This was a full toss. Santosh and picked up right from the middle of the bat. Hits that towards the mid-wicket region there.
He got the boundary 4 runs. Now the scoreboard has strictly increased up to 45 runs. Last ball remaining of the final over of the first innings. The final delivery. And this time. He has saved many runs. I think just 2 runs coming in the final delivery. I thought the ball was sailing towards the maximum, but at the last moment, the fielder got the ball there. Because of that ball, just 2 runs coming in the final delivery. With that ball, score moves on to 47 on the board. 48 is a target for Team Jaguars could really take up in 6 overs. Now it's time to change the voice in the commentary box and handing over the mic towards the most popular English commentator, Satish Shalyan. Over to you, sir. Thank you so much, Satvik, and welcome back once again for the match number 3, the innings number 2 of this match, and 47, which is the total score of team Durga Konchadi, set a target of 48 to win the match for the team Jaguars Kudroli, and wait and see how well the youngsters of Jaguars Kudroli will go into chase this big total. In fact, it's one of the highest total of the day number 1, and which is scored by Sri Durga Konchadi. And till now, of course, a long way to go for this tournament. And the thanks to the innings of the batter Vinith, who scored some runs from his bat, scored not unbeaten 19 runs and 14 correction, and in 19 balls, and then Santosh in that small cameo when his team is required some runs, he's scored a valuable runs, 14, the quick fired 14 runs in just 7 deliveries with the strike rate of exactly 200 with the help of 2 delightful boundaries. So altogether, very good batting display. Even some contribution from Jayant, scored 8 valuable runs from his bat. Altogether, it's a teamwork, and from the contribution from the top order batters of Sri Durga Konchadi, they managed to get a huge total in front of team Jaguar Kudroli. So opening batters already they came into bat here and open the innings for Jaguar Kudroli. And wait to see, we're going to start the proceedings from the commentary box and in the power play. So as far as this particular match
for Jaguar Kudroli is concerned. I think it's very important for these opening batters to get some runs in the power play. And the power play is always going to be the route for the success sometime when you're chasing a total like 48 to win the match. They need to capitalize these 2 overs of the power play when only 2 fielders outside the circle, and a lot of opportunity for the batter to grab some boundaries for the team. And wait to see how well these 2 batters will going to lay the foundation. Not only the foundation is not important, at the same time they need to look for their run rate which is needed from the beginning, and almost 9.33 runs per over the required run rate. And wait and see and how well this batter will going to get the start here. The bowler Kevin will going to start the proceedings from the commentary box end, and he's keeping one fielder at short fine, one at square leg behind the square, one at mid wicket, one fielder at mid on. Looks like the protection which is given in front of wicket, long off and orthodox long on. A short third man, the fielder is almost in the cover point and extra cover. The first ball straight away, the batter Sahal, the young talented player from Kudrodi, just wanted to get that unorthodox stroke in the beginning itself. He tried to play the reverse sweep but fails to make a contact with the bat. No run scored. Kevin, second time away from us. This time, ball is in there, chance for the fielder at cover point and is gone. Almost looks like the batter is trying for the stroke. Maybe he's in last moment, he's checking the stroke in the last moment. Maybe the ball which is came late to him, he just wanted to play that one on the onside region because of that leading edge of the bat. Maybe the bat and ball is a bat and pad. In fact, the bat which is stuck and because of maybe the stuck in the ground while he tried to play the ball. And the reason that ball is got a leading edge, and cover point fielder have to run quickly to his friend Santosh from the cover point. One more very experienced campaigner down at cover point region, making no mistake at all, and the first wicket back in the pavilion. What we are talking about, the start for the Jaguar Kudroli, but unfortunately they lost their first wicket without opening the account. 0 for 1. Experienced batter for the side of team Jaguar Kudroli came as a number 3 batter. Straight away sub the ball down to square leg region. Quick single taken there by both the batters, especially the Shiaz, who is running towards the dangerous end and responding for that single from Awez. Awez 2025. What I don't know how we will going to go for the next year. We'll going to change the jersey number 2026. But it's only 1 month remaining, and it might be very costly. And for the team owner, outside the line of off stump, again the very good delivery. But I don't know what the reason behind that jersey number 2025. Maybe it's some lucky number for the players. Again, one more dot delivery. The batter is not really technically what we are talking about. Is not playing that cricketing stroke. What is trying for the sweep shot. When the line is outside the line of off stump, not so easy to get the ball to the bat. Far outside the line of off stump. This time Kevin just looking for the experiment, seeing that the batter who is struggling to swap the ball, he just wanted to ball outside the line of off stump, and it's gone far away. And white call by umpire Pradeep. This time he's got the connection but not proper. And fielder will go, second attempt. Looks like the first attempt, the fielder from deep long on. And Sumit was almost standing in the deep long on. You have to run in front, but he's a tall man. So quickly he came to that ball, and ball is just popped up from his hand, and but he's just kept the eye on the ball. In the second attempt, he completed the catch, and wicket number 2 is back in the pavilion. Actually, it's a struggled innings which comes in here from Siaz. After that, back-to-back 2 dot delivery. Again, he played that same stroke what he was trying for earlier. Tried to sweep the ball outside the line of off stump, and the line is outside the line of off stump. Fantastic over which comes to an end from Kevin. Only 2 runs he conceded in that power play, and 2 wickets back in the pavilion in that over. So still they needed another 46 runs in remaining 5 overs. 30 fall and 46 needed for the victory. The new batter
walks towards the middle, and Daivik, the captain of this organization, vice captain of the side, brought into attack from the Planet Air Travel end. And in the power play, keeping one fielder and long on, it is wideish, and one at long off is not orthodox long off. Same field set, and here comes the first ball. Drives in the gap, no one there in that mid off, and so that easily Aways picked up a single and rotate the strike. So with that single scoreboard now moves on to 3 on the board. Next match, Zaman Boys takes on United Suratkal. So that I request all the players of both the team, please complete the formalities of signatures as soon as possible. Balled him, cleaned him up, played that wrong shot. Naushim is the batter. He just wanted to get the ball into the mid wicket, but he is not really able to get into the line of the ball. The Daivik bowled a slow incoming delivery in cutter, and that just pays the penalty for trying for the wrong shot and against the line, and pays the penalty. It's quite unusual scoreboard. We can see 3-4-3. All happening when you are chasing a total like 48 to win the match. The batter always looking for some big shots, but sometime along with the big shot you have to look for some rotation of strike for the good deliveries. It's not like that you are chasing, of course you are chasing a big total, but sometime sensible thing to do is that choose the right delivery for the big shot, not try to get each and every ball for the big shot. Of course for the good ball you just play a soft hand and place the ball here and there and rotate the strike. Just need to wait for the opportunity to swing your bat for the bad deliveries. So new batter in is Azim came into bat as a number 5 batter, left-hand batsman in this power play. Mid wicket, which is in the city in the deep for left-hand batter Azim of the bowling of Daivik. Daivik bowls. Balled him, cleaned him up once again. Nowhere near the pitch of the delivery, just he wanted to go for the big shot. Daivik once again producing a beautiful in-cutter. Absolutely Jaffa from Daivik to get that beautiful delivery. 2 wickets in 2 consecutive deliveries, and both are the bowled out. And disaster continues here for the team Jaguar Kudroli, and it's 3 for 4. Well, over number 3, it is 2, it is absolutely fantastic so far for the team Durga Konchadi. Daivik is on hat-trick now. So far, no hat-trick in 2 matches. So, wonderful opportunity for Daivik to get the first hat-trick of the tournament. Here comes. Oh, that was one more good delivery. Slower one coming into the batter. And Aman, the new batter, denying the hat-trick from Daivik. And for 5th time in this over, Daivik bowlers back drive, lack of placement, very good one. That absolutely consistency we can see here from Daivik as far as the line and length is concerned. Just getting that line which is into the batter, and one more lovely delivery. Wicket keeper absolutely made the stump out. He's gone, he's walking. All we can see there, the wickets are tumbling like a pack of cards of team Jaguar Kudroli. Wicket number 3 for Daivik as well after completion of over number 2. And quite unfortunately watching the scoreboard, it's the 3 for 5. So never looks like it's going to be the cricket scoreboard here. The 3-5. What we are seeing usually in tennis match, badminton match, even in a kabaddi and volleyball match, the scoreboard is like that only. 3-5. It's
Sumit is a tall man. One more very quality bowler for the side. He's got a height so that some kind of extra bounce on the flight for the bowler that definitely will going to exploit this morning condition. Still, it's not a bright sunny morning. It's overcast condition. Even the time is exactly 12 o'clock in the what you call is almost in the edge of to call it's the morning or afternoon. But after crossing 12, it might be that afternoon 12, which is 11:54 exactly. And here comes Sumit bowls at first delivery of the over number 3rd. And straight away, the batter Awais wanted to go for the reverse sweep just like a left-hand batter facing the ball. And no run scored. Second time in this over. Sumit bowls. Delicately played it down to deep square leg. Full toss delivery, low full toss. Awais already made his mind that he wanted to play that improvising sweep shot down to fine leg, but ball went towards a square leg region. Addition of that single score, but moves on to 4 on the board for the loss of 5 wickets. 4-5. Whoa, beautiful incoming hit. Oh, opportunity. Santosh given us everything to take this catch, but not good enough to take this catch. And almost in an unorthodox place, mid wicket, which is very close to the batter. And here comes Sumit. Again wanted to go for switch it. Again deflected from the leg, so that leg by call by umpire. Half-hearted appeal from bowler. Ball is missing the off stump straight away. And one more single in the form of extra. 6-5. Again, quite deliberately, Muzammil is a good player actually for experienced player as well for team Jaguar Kudrali. Pushes the ball down to point region to pick the single. Ball is in there for a while, but no one there in the circle, in the edge of the circle, so that both the batters are completed the single. With that single score, one moves on to 7 on the board. The 7-5. This time slower one, fit captured beautifully into the gap between mid wicket and the square leg. All the time in the world for Awais to pick that one. Already is picked his position to play that leg cutter from Sumit is a slower one, and the batter absolutely picked up right from the middle of the bat. First confident stroke which just came from the batter of Jaguar Kudrali. 3 gone. It's 11-5. So lights are on here in the UCC cricket ground, not because of bad light, but I think is a testing work which is going on, and some lights are not proper, so that tomorrow maybe they're having some underflood light, so some repair work is going on from the electrician by the city corporation, and so get some good light condition for tomorrow's match. Again driven nicely into long on region by Muzammil for single, with the addition of that single score, but moves on to 10 on the board. 10-12 for the loss of 5 wickets. Awais is a man who's looked so far confident enough. Will going to face next one. Again played at reverse sweep. He lost his bat from hand, but still he completed the run. Quite interestingly, again looks like Awais has absolutely wanted to go for the reverse sweep. By playing that reverse sweep is almost uncomfortable, because a slower one there from the bowler Mani. The batter have to wait for the ball to coming into his bat. Muzammil not happy with his bat, so that straight away is calling his teammates to bring the bat. And Muzammil, good striker of the ball, and very surprisingly watching him is coming in number 7 batter in the middle order, and 7 maybe is a lucky number because his just number is also 7-7. Altogether outside the line of off stump. One more dot delivery. The toss which is won by United Suratkal. We are talking about the next match against Zaman boys, and they elected to ball first. That's the news for the next match. Low full toss picked at nicely by Muzammil. Didn't really settle the bowler for the Yorker leg delivery.
That's reaching for that low full toss and played it nicely into the mid wicket for a single. 14. Again, that's going to be a very interesting to see the umpire decision. The ball running down to deep third man region. They're crossed for a couple of runs. Even they're looking for the third. And umpire called it wide delivery. And wide plus 2. Couple of 3 more valuable runs are added to total. Scoreboard numbers on to 17 on the board. Misjudgment. Away is almost shuffled across the line of the delivery, misjudging the line. And good thinking there from Mani to ball that excellent delivery, which is just inside the frame line of outside the line of off stump. Away is again. Oh, this time wicket keeper. Looks like is very confident. Umpire will going to ask for the third umpire for that. The experienced campaigner behind the stump. Jayant did a very good walk, quick walk, and wait and see whether Away's is safe or not. Wait and see. Umpire Roland Pinto will going to watch here in our commentary box with the technicians of Mangrove Media. They have to give some 2 angles, especially the front angle, of course, from the front camera square angle. From the cameraman who was operating from left side of our commentary box, we're going to give some angles here for umpires to get the result. And altogether, slow cricket is going on here, and not like looks like it's not out. The batter is safe. Umpire Roland Pinto, and just watching that very closely, and the batter is safe enough. Away's the only one batter who is looking so confident so far. 4 completed, 2 more overs remaining. Still long way to go. Only 17 on the board. 31 more runs required for the victory. The no ball called by umpire. No ball. The ball which is gone outside the line of the pitch. So that Pradeep Kothari has got no hesitation to call that no ball. Ritu. Reaching for the delivery, Away is played it in the air, and fielder is underneath it. Santosh will go into complete, but it's a free hit delivery, so that no question of batter getting out, and only 1 run added to total. 20 on the board for the loss of 5 wicket. Again, it's going to be 1 more wide. The Ritu is really struggling. Of course, he's got a beautiful bowling action, even the leg cutter, but line what he was bowling is not proper. When you were having a leg cutter, bowling outside the line of off-stump man's ball is further moving away from the batter. And even that ball is missing the line as well. This is a beautiful shot. Absolutely perfect pick there from Muzammil. Magnificently struck, picking up that line and then so quickly. So more than that, I'm just talking about this particular cricketing stroke of Muzammil, that is how quickly he's taken his position to become a left-hander very quickly. It's not so easy. The quick movement of his feet and position is getting him into very good position to swing his bat to the line of the ball to get the boundary. Terrific shot from Muzammil to take the score into 25. Now he's played it very high. Will it going to be handsome? No, it's not handsome. It's long on. Fielder takes the catch. My goodness, Muzammil has got everything behind the stroke, but something wrong about that. He played it very high. The platter version, definitely that ball is going to travel out of the park. But he played it very high and pays the penalty for that. Good comeback by bowler Ritu to pick that the batter after that boundary. The very next delivery, he sent him into the pavilion. The partnership which is comes to an end between Awais and Muzammil of 22 runs is a very good partnership from this batter for the team. 25 on the board. And the new batter in his experienced campaigner for the side of Jaguar Kudrauli. Riaz is considered to be an all-rounder, one who got a name and fames in underarm cricket with his bowling, mainly in the bowling department. Again, wanted to go for the sweep shot, misses the line completely, beaten by the flight, extra bounce in the last moment.
And Riaz just wanted to get the ball onto the onside region. Riaz is the bowler who contributed for NM Cricketers Mangalore in the bowling department. 3, 4, 5 years back when NM Cricketers are dominating in underarm cricket. He is the man who is leading from the front in the opening overs. He's considered to be a most economical bowler for the side of NM Cricketers for the NM Cricketers Mangalore. Ritu bowls again, is struggling with his line. Again is the third extra of this over. One more big wide. Wide plus one, a couple of runs, which is added total. With that couple of runs, Kobana moves on to 27 on the board. Another 21 more runs required for the victory in 8 balls. Again, a lovely delivery indeed. A good comeback by Ritu in the delegation as he pitched the ball on the middle end off stump. One ball remaining in this over. This is a prolonged over and overs of 9 deliveries because of 3 extras. 1 no ball, 2 wides. Last time in this over, 7 ball remaining, 21 needed. This time Ives lofted but not enough power and timing, and long off fielder taken the catch. So subtle batter back in the pavilion. In this particular over, maybe that will be expensive over from the point of view of Sri Durga Konchadi, but he got 2 wickets in that result. A subtle batter like Awais and Muzammil, the 2 subtle batter are back in the pavilion. So last over remaining in the innings of team Jaguar Kudroli. Still it's a long way to go. 21 needed in last over. 21 needed in last over. Do or die situation for the team Jaguar Kudroli in this last over. You can't say anything in cricket. Even 21, it can be manageable. But question raising here is that they lost 7 wickets in between, and the tailenders have to do the job. And when you're facing the bowler like Daivik, who has been outstanding in his first over, picked up 3 wickets in 1 over, and wait and see how well this batter will go and try their level best to get close to the target. Daivik, most successful bowler in this bowling department of team Sri Durga Konchadi, and they will go into bowl the first delivery of the final over from the Planet Air Travel end. Top edge, and Santosh won't get that catch here. Well, landed in the no man area down at square leg before Santosh to run to his right and front. Ample time for batter to complete the single. 20 needed from 5, and a new batter with the jersey number 00, Bashir, facing Daivik again, drags it from outside the line of off stump to get the single down to mid wicket. With the addition of that single, Skubana moves on to 29 on the board. 19 needed from 4 balls. Daivik. This time, lovely delivery. Wicketkeeper fumbles, and looks like the door almost closed. 19 needed from 3. 3 sixes will go into tie the match for team Jaguar Kudroli. 3 in a row is required for Jaguar outside the line of off time. Quicker and faster one in the negation. Daivik now 18 needed. 3 sixes will going to do the job here for the team. Misses. 2 balls remaining, 18 required for the victory. Now looks like just a format is left in this game. Daivik have to bowl 2 normal deliveries. Again, second wide of this over. That will go into kill is economical. What we're talking about is so economical. Bowling such wide deliveries will go into frustrate the bowler. One more good delivery. They're going for a single chance of run out, and is gone. Direct hit. Now last ball remaining to complete the formalities of victory for the team Sri Durga Konchadi. We'll have one more big match after this. Zaman Boys Kalladka will be the team which is organized one of the most successful cricket tournament in last 2 weeks back here in this UCG cricket ground. Really create the history in this fantastic 2 days of the cricket tournament, 3 days of cricket tournament organized, well organized, systematically organized.
really won the heart of all cricket lovers. ZBB Champions Trophy 2025. Meanwhile, the last ball remaining, and to complete the formalities of the victory. This time, dot delivery. That's it, victory. And the comprehensive victory of 16 runs for the team Sri Durga Konchadi. Congratulations, Sri Durga Konchadi, for their victory. It was a huge victory, in fact, and hard luck, Jaguar Kudrali. Thank you very much, Jaguar Kudrali, for taking part in this cricket tournament, Gaurav Trophy 2025, and congratulations for Sri Durga Konchadi for the victory. Now it's a time for the man of the match award. Of course, high scoring game means always the batter's contribution is good, big. And that's only because of the very, very good innings came from the bat of Santosh, who scored valuable runs in the slog overs. He scored 14 runs in 7 balls with a strike rate of exactly 200. So that I request Sai Santu will go in, request him to please go and collect your man of the match award, and I request Srimati Sunanda to please present this man of the match award in our correction, Santosh Kodakal. Santosh Kodakal, it's not Sai Santosh. Santosh Kodakal, I request him to please go and collect your man of the match award. The one more very experienced campaigner who scored some runs from the bat when team is required the most. So that I request Santosh, ದಯಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಡೆಕಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕೊಡೆಕಲ್. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Time to change in commentary box, and it's a time for Gopi to take over the microphone before the innings will going to start. The match will going to start between Zaman Boys Kaladka versus team United Suratkal. Thank you.
I request the openers, please go for bat immediately. धन्यवाद सतीश. So the match number 4 is now going to start between Team United versus जमन बॉयज का लड़का. और ताज़ा समाचार यह है कि टीम यूनाइटेड के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है. फलस्वरूप दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद आजिम और रशीद बाबा, और गेंदबाजी संभालते हुए तौसीफ. और इंतजार है इस वक्त पारी की पहली गेंद का, मैच की पहली गेंद का भी कहा जा सकता है. और पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी में शुरू होता हुआ, और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट. रिवर्स शॉट इस वक्त खेला, इंप्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ अजीम के बल्ले से. अंतिम एक्शन में मिडल ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ तिरछे बल्ले के सहारे विद रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया. थर्ड मैन फील्डर मौजूद थे, लेकिन गेंद उनकी दाईं ओर से निकलती हुई इस वक्त डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए. और इस चौके के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. जमन बॉयज का लड़का का 4 रन बिना किसी नुकसान के. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस बीच तैयार तौसीफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, लेकिन इस बार परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी और पिछले गेंद के मुकाबले. और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तौसीफ फिर से एक बार तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद ऑफ द टॉस हेलीकॉप्टर शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा को गेंद इस वक्त फील्ड कर ली गई है. लगता है बेहतरीन फील्डिंग के जरिए वाइड स्लॉन्ग के फील्डर को हालांकि काफी लंबा दौड़ जरूर लगाना पड़ा था, लेकिन गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में सफल. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर. 6 ऑन द बोर्ड. ये टुलुजनी विकेट. और इस बीच अंपायर ने तीसरे अंपायर के लिए शायद वहां पर इशारा किया है कि क्या ये सीमा रेखा को गेंद पार कर चुकी है या फिर सीमा रेखा के अंदर सफलता गेंद को रोका गया था फील्डर द्वारा, ये परखने के लिए. और जहां तक फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट आने वाले क्रिकेट श्रृंखलाओं का सवाल है, तो एक और क्रिकेट श्रृंखला, वन मोर फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट इज नाउ कमिंग अप ऑन द नेक्स्ट मंथ. दैट मींस 7, 14 and 21st of December, and that tournament will be held at Government High School Ground, Shaktinagar, in the name of PFC Trophy 2025, which is proudly organized by Padav Friends Club, registered Karnataka, Shaktinagar, Mangalore, on the celebration of their Golden Jubilee celebration. They are organizing this fantastic tournament in the name of PFC Trophy 2025. Winners will get 1 lakh rupees cash prize along with PFC Trophy, and runners will get 50,000 rupees cash prize along with the PFC Trophy.
And that tournament will be held on the next month, 7, 14th and 21st of December. 3 Sundays. That tournament will be held on 3 Sundays, 7, 14 and 21st of December. That means in the next month, which is PFC Trophy 2025, which is proudly organized by Padu Friends Club, registered Karnataka, Shaktinagar, Mangalore. On the celebration of their golden jubilee, they are organizing this fantastic tournament at Government High School ground, Shaktinagar. तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन और इस बीच चौके का इशारा 4 डिक्लेरेड बाय एम्पायर और गेंद को हालांकि रोका गया था जरूर, लेकिन शायद वहां पर तो जब गेंद को अंदर की ओर ढकेला गया था तब फील्डर का पैर जो कि लाइन पर वो रख चुके थे और इस वजह से तृतीय अंपायर ने इस चौका घोषित किया और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। 2 चौके इस ओवर में लग चुके हैं और बेहतर शुरुआत इस ओवर में कर चुके हैं अजीम। और इस बीच तौसीफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ड्राइव करना चाहा, बेहतर गेंद, परफेक्ट ऑफ कटर इनसाइड एज और गेंद को इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग पर विकेट कीपर ने जाकर फील्ड कर लिया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। अगली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर। निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है समन बॉयज लड़का के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर इस वक्त खड़ा करना है तो। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला एक्स्ट्रा कवर पर इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए और गेंद इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। Fantastically struck came from the bat of Azim. Just inside out cricket he played, just exposing the stumps and lofted that was square of the wicket and clearing the infield and finds the gap as well at last. 3 boundaries in 1 over hit by Azim. 3 चौके इस ओवर में Azim झड़ चुके हैं और इन 3 चौकों की बदौलत एक बेहतर शुरुआत इस वक्त कर चुका है जमन बॉयज। 12 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद। द फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर जमन बॉयज का लड़का। 12 ऑन द बोर्ड yet to lose any wicket. All 3 hit which converted into boundaries hit by Azim in the first over. और अब दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से प्लैनेट एयर ट्रैवल एंड की ओर से और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए जाबीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ। आज सुबह से बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है, हालांकि दोपहर के 12:30 इस वक्त बजते हुए, लेकिन पूरा नीला आकाश इस वक्त बादलों से ढक चुका है। जाबिर की पहली गेंद ऑन साइड पर रशीद बाबा के लिए, 1 रन के लिए गेंद को मोड़ दिया बड़ी स्लॉन्ग ऑन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 13 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और जाबिर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आजिम के लिए हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि बेहतर गेंद थी बिल्कुल सही रफ्तार के साथ और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 13 रनों पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, लेकिन अपील को अंपायर ने इस वक्त नकार दिया सही तरीके से, क्योंकि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और लेग बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 14 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। रशीद बाबा एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं इस वक्त सामना करते हुए, लेकिन इस स्ट्रोक को खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त जहां तक सवाल है विकेट कीपर के हाथों से चूकी थी और जब तक इनको फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 15 रनों पर। 15 ऑन द बोर्ड एंड दिस इज द सेकंड ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर रन्स नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है 15 रनों पर। 15 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। एक बेहतर ओवर अब तक जाबिर का साबित हो चुका है और यहाँ पर बल्लेबाज अजीम के बल्ले में यानी बैट में दरार इस वक्त आई है, शायद बल्ला वहां पर टूट चुका है और अपना बल्ला यानी बैट बदलने के लिए इस वक्त तो प्लेयर्स डगआउट की ओर बढ़ते हुए
और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला फैंटास्टिक टूर्नामेंट is now progressing here in the name of Gaurav Trophy 2025 which is proudly organized by Jeppu Friends Mangalore in loving memory of late Gaurav Bolar. They are organizing this fantastic tournament in the name of Gaurav Trophy 2025 under the great leadership of Mr. Santosh Jeppu. और आज इस श्रृंखला का पहले दिन का चौथा मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। पहले 3 मैचेस में फ्रेंड्स कुत्तार, रेड विंग्स और प्लैनेट एयर एसटीसी ने विजय दर्ज किया है और कुल मिलाकर चौथा मैच यहाँ का इस वक्त प्रगति पर। तो अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतर तरीके की विकेट कीपिंग और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। गेंद को खेलने के प्रयास में चूके और शायद अपना बैकफुट कुछ हद तक लिफ्ट किया था इस वक्त बल्लेबाज आजीम ने और इसे देखते हुए तेजी के साथ इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विकेट इस वक्त उखाड़ दिया विकेट कीपर ने बेहतरीन तरीके से। और स्क्वायर लेग अंपायर श्रीरज कुंपला के निगाहें काफी चौकन्ने, तुरंत उन्होंने अपनी उंगली उठा दी। बेहतर निर्धार इस वक्त, बेहतर निर्णय अंपायर ने दिया और इसी के साथ पहला विकेट जमन बॉयज का खो चुका। आजीम की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। He's out for 12 and now it's 15 for 1. माफ कीजिए, रेड विंग्स प्लैनेट एसटीसी और दुर्गा कुंचारी पहले 3 मैचेस जीत चुके हैं। चौथा मैच इस वक्त शुरू हो चुका है और अगला मैच खेला जाएगा रेड विंग्स और फ्रेंड्स कुत्तार के बीच। एक और बेहतर मैच इस मैच के बाद यहाँ पर होगा और इस वक्त मुकाबला जारी है जमन बॉयज और यूनाइटेड सूरतकल के बीच। नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल, जुनैद। इस वक्त सामना कर नॉन स्ट्राइक लाइन पर मौजूद निसार गेंदबाजी शुरू करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में रशीद बाबा सामना करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद लेकर निसार। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, पहुंची स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा। लेग बाई का इशारा और लेग बाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। 16 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और नए बल्लेबाज जुनैद का आगमन जो कि इस वक्त हो चुका है, सामना इस वक्त करने के लिए तैयार और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए निसार। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र अक्षर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर इस वक्त मौजूद और कोई डीप कवर पॉइंट नहीं। कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। पॉइंट शॉट, थर्ड मैन शॉट, फाइन लेग और मिड विकेट। और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज निसार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस बार चिप किया गेंद को बैकफुट पर जाने के बाद रशीद बाबा ने, लेकिन 1 रन मात्र मिलेगा। जुनैद जिन्होंने बल्लेबाज थे, गेंद को इस वक्त चिप किया था बैकफुट पर जाने के बाद। हालांकि गेंद कुछ देर तक हवा में जरूर थी लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए और बल्लेबाज और टीम के खाते में 1 रन जुड़ चुका है और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 16 रनों पर 17 रनों पर माफ कीजिए 17 ऑन द बोर्ड। और गेंदबाज निसार इस बार उछाला रशीद बाबा ने, हवे में जरूर लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे इस वक्त बड़ी लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 18 रनों पर 18 ऑन द बोर्ड। रन इस वक्त कुछ हद तक आसानी के साथ बनते हुए जमन बॉयज के लिए और एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ जमन बॉयज। और कम बैक करना है तो टीम यूनाइटेड के गेंदबाजों को इस वक्त एक बेहतरीन गेंदबाजी की जरूरत है। और इस बीच निसार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। जुनैद अच्छी गेंद इस वक्त, एक्स्ट्रा क्विकर वन, एक्स्ट्रा बाउंस, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस, गेंद को ड्राइव कर दिया गेंदबाज की बाईं ओर से लॉन्ग ऑफ पर और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 19 फॉर द लॉस ऑफ
1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज निसार इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। रशीद बाबा के लिए अगली गेंद। इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद पैरों पर गेंद टकराई। रन के लिए उछालना चाहा इस वक्त, लेकिन उछाल नहीं पाया, पैरों पर गेंद टकराई तो 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 20 द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। निसार जुनैद के लिए इस ओवर में अंतिम बार 5 सिंगल्स 5 गेंदों में वो प्रदान कर चुके इस ओवर में, और अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। यह गेंद को खेल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ बेहतर ओवर निसार का समाप्त हो चुका। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 21 रन, 21 for 1 after completion of 3 overs. And a fantastic comeback made by the bowlers of United Suratkar after being conceding 12 runs in the first over from Tausif. They come back very well in the next two overs. In fact, they conceded just 9 runs. Zabir and Nisar bowled very well in the 2 overs. Both of them conceded just 9 runs in these 2 overs. 3 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका, आधा सफर तय हो चुका, आधा सफर तय होना बाकी, और आधे सफर के बाद बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। प्लैनेट एयर ट्रैवल एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को ड्राइव किया, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। इनफैक्ट काफी दूर दूर तक अब फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और गेंदबाज जाबीर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट जुनैद के लिए अगली गेंद। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में, गेंद पहुंची मिस फील्ड, बैकअप होता हुआ लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा। हालांकि काफी दमदार स्ट्रोक नहीं था इस वक्त, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 22 रनों पर 22 for 1 इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और रशीद बाबा इस वक्त स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। जाबीर की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार, और जाबीर अगली गेंद। यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन पर, रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन यहाँ पर थ्रो इससे पहले कि पहुंचे बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रन सिंगल्स के रूप में जरूर बन रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है जमन बॉयज के लिए कि रन इस वक्त बन रहे हैं हर गेंद पर। और इस बीच गेंदबाज जाबीर अगली गेंद। यह गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। 22 का इशारा अंपायर का, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 24 रन, जबकि इस ओवर में 2 गेंदें इस वक्त बाकी हैं। तो रिव्यू इस वक्त लिया गया है, और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर जो हैं इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धारण देते हैं। जमन बॉयज जिन्होंने कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया था इस यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर, निस्संदेह अभूतपूर्व क्रिकेट श्रृंखला, और निश्चित रूप से उस बेहतरीन उस मशहूर क्रिकेट प्रतियोगिता में रिलायंस काटीपला जो कि विनर्स चैंपियन रही थी, यंग फ्रेंड्स उर्वा रनर्स अप का खिताब उन्होंने अर्जित किया था। और यहाँ पर इस मैच में वो मुकाबला करते हुए इस वक्त यूनाइटेड सूरतकल का, और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धारण यहाँ पर देते हैं। And just talking about the next match, one more fantastic match is now coming up right after this match between Friends Kuttar versus Red Wings, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Friends Kuttar ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
वाइड बॉल इज द कॉल फ्रॉम द थर्ड अंपायर और एक रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 25 ऑन द बोर्ड 24 in fact 24 on the board in the over number 4 in progress. 1 wicket down. Azim back to the pavilion for 12 including 3 boundaries. He scored 12 runs in the first over. 24 the score for the loss of 1 wicket. And this is the over number 4 of their innings is now progressing here. Zabir अगली गेंद लेकर तैयार. Rashid Baba जो कि सपना करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद इस बार नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली. राशिद बाबा हालांकि अभी भी कुछ हद तक संघर्ष करते हुए गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करने के लिए काफी देर से कोशिश जरूर कर रहे हैं आक्रामक स्ट्रोक लगाने के लिए, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है. एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 25 रनों पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और जबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है जुनैद का. गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे सीधे गेंद उनके हाथों में पहुंची स्ट्रेटर वर्जन पर और आखिरकार लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की तो जुनैद की सेंसिबल पारी पर पर्दा गिर चुका है और दूसरा विकेट इस वक्त हो चुका है जमन बॉयज 25 रनों के योग पर. इट्स 25 for 2 for जमन बॉयज एंड जुनैद नाउ डिपार्ट्स. 1 ball left in this over. Musta is the new batsman. He now comes out to the middle as a number 4 batsman for Zaman Boys का लड़का और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार जाबिर की ओवर की अंतिम गेंद का और जाबिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 25 on the board for losing 2 wickets. In fact, it's 26. 1 plus 1, wide plus 1. That means 26. और स्कोर 26 on the board. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज का जाबिर इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज काफी आगे निकला है इस वक्त राशिद बाबा. निश्चित रूप से खतरा उनको पैदा हो सकता था अगर वो रन लेने की कोशिश करते, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और बेहतर टेक विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे किया. अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया डाइविंग लगाते हुए अपनी बाईं और ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. 26 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद. Safwan starts the fresh proceedings from the commentator box and और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रशीद बाबा. हालांकि रशीद बाबा अब तक अपना सही रिदम लय प्राप्त नहीं कर पाए हैं. सिर्फ 4 रनों के ऊपर अब बल्लेबाजी करते हुए और 2 ओवर का खेल जो कि बाकी है और इन बचे हुए 2 ओवर में देखना है कि रशीद बाबा कुछ चौके या छक्के लगा पाते हैं या नहीं. परफेक्ट लेग कट. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी. चेस्ट में से साथ ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट. जिस तरीके से गेंद घुमाव ली काबिल तारीफ है. सफवान ने इस गेंद को फेंके थे. परफेक्ट लेग कटर और अगली गेंद लेकर गेंदबाज सफवान इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद एक बार फिर से लेग कटर, लेकिन अंतिम एक्शन में आई थिंक इज गोना लेग ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट. गेंद शायद उनका पैर पटक रही थी तो नो इट्स ऑफ द बैट. इनफैक्ट डिफ्लेक्शन हुआ था यहाँ पर और आखिरकार एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल.
दो बेहतर गेंदे इस ओवर में सफवान ने फेंक चुका है। 27 ऑन द बोर्ड और गेंदबाज सफवान अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज मुस्ता इस वक्त सामना करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त गेंदबाज सफवान दाहिने हाथ ओवर द विकेट। अगली गेंद फुल टॉस, धीमी गेंद ऑन साइड पर गेंद को पुल किया इस वक्त डीप मिड विकेट पर। फील्डर मौजूद, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। बेहतर थ्रो डीप मिड विकेट फील्डर का और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और सफवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। रशीद बाबा के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। फुल टॉस, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को इस वक्त उछाल दिया लंगोन पर, वाइड मिड विकेट पर कहना पड़ेगा। और जब तक गेंद को पर फील्ड किया जाता तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। वाइड लंगोन और मिड विकेट के बीच जो खाली क्षेत्र है वहां पर गेंद को इस वक्त पुल कर दिया था, उछाल दिया था। विकेटों के बीच 2 कदम विकेटों से क्रीज से आगे निकलने के बाद रशीद बाबा ने 2 रन बटोरने में सफल। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद लेग कटर, परफेक्ट लेग कटर, लेकिन शायद गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाते हुए 1 रन का इजाफा लेग पाई के रूप में। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर। एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर में और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज सफवान गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। ये गेंद गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर टॉप स्कूप करना चाहता शफल होते हुए लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का, तो इस वक्त रिव्यू यहां पर लिया गया है कि ये वाइड है या नहीं परखने के लिए। शायद गेंदबाज ने ये रिव्यू यहां पर लिया है और निर्धार इस वक्त सौंपा गया है तीसरे अंपायर के लिए। और तीसरे अंपायर प्रदीप कोठारी जो है, देखना है कि इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार वो देते हैं। मैच नंबर 4 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट Gaurav Trophy 2025, which is proudly organized by Jeppu friends, Jeppu Mangalore in loving memory of a late Gaurav Bolar. They are organizing this fantastic cricket tournament in the name of Gaurav Trophy 2025. So 20 prestigious cricket teams are participating in this tournament. और 8 प्रतिष्ठित बंगलुरु की टॉप टीमें और 12 लोकल टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है। वाइड का इशारा और 1 रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। सफवान गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए मुस्ता के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर, गेंद का मोड़ा मिड विकेट, मिसफील्ड इस वक्त और रन आउट का खतरा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। थोड़ी देरी से इस वक्त दौड़े थे यहाँ पर मुस्ता, शायद वो गेंद को खेलने के बाद ये सोचते रह गए कि वहां पर निश्चित रूप से रन आउट होगा क्योंकि वहां पर थोड़ी मिसफील्ड हुई और मिसफील्ड होते हुए देखकर बल्लेबाज ने दौड़ना शुरू किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था और मुस्ता रन आउट के रूप में आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके। तीसरा विकेट जो कि गिर चुका है। 5वां ओवर समाप्त हो चुका है। 32 रन बन चुके हैं। 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स स्कोर्ड बाय जमन बॉयज एंड नाउ जस्ट अ लास्ट ओवर रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। निसार नया ओवर शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ जमन बॉयज की पारी में और नए बल्लेबाज तौसीफ जो कि इस वक्त मौजूद, स्ट्राइकर तौसीफ इस वक्त सप्ला करने के लिए तैयार। पहली गेंद निसार, यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ टीम नॉट सक्सीडेड। शॉर्ट टर्न फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची लेकिन इस सब पहले की गेंद को वो फील्ड करे। बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक के हालात को देखकर यह कहना पड़ेगा कि टीम यूनाइटेड के गेंदबाजों ने एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर दिया है। अब तक वो जमन बॉयज के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफल रहे हैं और रशीद बाबा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 5 ओवर में कुछ खास
जोरदार स्ट्रोक्स नहीं लगा पाए रशीद बाबा। इस वक्त कोशिश करते हुए एक बार फिर से चूके, बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, वन मोर डॉट डिलीवरी और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 33 रनों पर। रशीद बाबा इस वक्त विकेटों के बीच काफी स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर और अंतिम ओवर में जो 4 गेंदें बचे हैं उन 4 गेंदों में देखना है कि क्या वो चौके और छक्के लगा पाते हैं या नहीं। और इस बीच नौशाद, माफ कीजिए, निसार अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर, कदमों का इस्तेमाल करते हुए 2 कदम आगे निकले थे लेकिन गेंद को कनेक्ट करने में सफल। It's got a batter to that at the last moment। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 3 बेहतर गेंद इस ओवर में गेंदबाज निसार यहां पर फेंक चुके हैं और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। यह गेंद फैंटास्टिक लेग कट डिलीवरी, इस वक्त बल्लेबाज को बार बार परेशानियों में ढकेलते हुए गेंदबाज और इस लेग कटर गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज निसार इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद उछालना चाह चुके, शॉर्ट दरमियान फील्डर के हाथों में गेंद, लेकिन 1 रन के साथ बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। बाई का इशारा और अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। अंतिम गेंद उनकी पारी का यहां पर बाकी। द स्कोर इज नाउ 35 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट और गेंदबाज निसार तैयार, बल्लेबाज रशीद बाबा उनकी पारी का अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। निसार, द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। निसार टू रशीद बाबा, lost it. This time I think he couldn't hold off that shot. Chance for the extra cover fielder and he took the catch successfully at deep extra cover. So a struggling innings from Rashid Baba came to an end in the final delivery of their innings. And wicket number 4 down for 7 boys ka ladka. And their innings is up. They stipulated 6 overs completed. They managed to score 36 runs for losing 3 wicket. 35 runs for losing 3 wicket. And now the target for United Suratkal is 36. 35 runs scored by Zaman boys in the stipulated 6 overs. That means in the stipulated 36 deliveries for losing 4 wicket. And Rashid Baba dismissed in the final delivery of their innings for 8. And now 36 the target for United Surat. Their innings starts now within just a short while. उनके पारी की शुरुआत होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर यूनाइटेड सूरत कल की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So the inning start for United Suratkal, 36 the target for them out of their 36 stipulated dealers with the help of 10 wickets. Exactly 6 runs per over, the required run rate. And the inning starts within just a short while. और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत हो
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर यूनाइटेड सूरतकल की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And good afternoon, cricket lovers. Welcome to the innings of Team United Suratkal. Zaman Boys Colored Cup. After they got a very good start in the first over, but a very good comeback by United Suratkal bowlers, restricting their opposition for just 35 runs and set a target of 36 to win the match in 6 overs. 6 runs per over, the required ended for United Suratkal. Opening batters Shailu and Harris are in the middle. Shailu will going to take the strike and Jnanish will going to start the proceedings. Here comes first ball. Starts with the warm-up delivery of the afternoon, which is gone far away outside the line of off-stump, and no hesitation there from umpire to call that wide. So with that extra, they started their journey and won without loss of any wicket. Jnanish with the short run up, taking his own time after pitching the ball several times to the ground. Oh, lovely delivery. This time he got that line, and last moment that ball has got a little bit extra bounce. Ball which just came along the carpet when the batter Shailu wanted to go for the drive, went for the drive. Ball has got a little bit extra bounce and beaten by the flight, and wicketkeeper behind the stump, back to bowler. Collects the ball and he back to bowler. Here comes next one. Reverse played it in the gap, down to deep third man boundary, and looks like the ball will going to win the race against the fielder. And fortunately, of course, ball hit the wall, but the fielder is not stopped. Ball which is stopped after hitting the wall, but the fielder is not stopped because he couldn't manage to control the run, the speed of the run. But fortunate for him is after that is climbing that 2 steps and he's just got a break in the right time. Otherwise, we need to find him out of the ground. So very need to be very careful sometime. So boundary comes up here for Shailu and for his team, very important boundary in the power play. 5 on the board. Nicely executed reverse sweep from the batter. This time again wanted to drag the ball from outside the line of off stump, and after that he played that reverse sweep. He just wanted to play the sweep shot, but it is against the line, which is gone very close to that line, the wide frame line, and well within the reach and inside the line. So that umpire rightly so unmoved. Even bat is also came very close to the line of the ball. And here comes next one. This time I think it's going to be a umpire definitely will not going to watch, because of the bowler came right in front of umpire, so that the batters will going to take the review here, because it's very difficult for umpire to see. It's a wide, no chance, looks like. Yes, they are calling wide. Wicketkeeper calling that. Now umpire will going to call for the review for that wide, even though sometimes very difficult for in cricket, especially in underarm cricket if you see, and most of the bowlers, I'm not saying that all the bowlers, but few bowlers, 1 or 2 bowlers in every team has got a problem to coming to that protected zone, that is what you call danger zone. So wide is confirmed, it's a wide. So that scoreboard now moves on to 6 on the board. 6 without loss of 1 wicket. Very good start from opening batters so far for the team United Suratkal.
6 already on the board, 6 without loss of any wicket. This time again, good comeback by the bowler. Excellent line again, just keeping that line and length so good enough to defeat the bat of Shailu. Once again, he wanted to go for the sweep shot, but he just fails to make a contact with the bat. Wicketkeeper behind the stump did rest. Back to bowler Janish. Away from us. Balls right arm over the wicket. This time, lovely shot. Just making room to play the shot. Played it in the gap, and before the fielder will going to run back and field that one. Ample time for the batter to complete a couple of runs with that. Couple of runs. Covered Namozan to 8 on the board without loss of any wicket. Last delivery remaining in this over, and so far United Suratkal has got a good start from these two opening batters, and especially Shailu is getting most all the strikes in all 6 balls he faced of this first over. Final time, Janish. Right arm over the wicket balls. This time reaching for the delivery, and he got that fine into the defined leg boundary for 4 runs. Not a good line to bowl. When you are bowling in the power play, little margin for error. Even that ball is definitely going to be a wide, but Shailu knows that he need to connect that one. He need to get the ball into his bat to get the boundary. He can get the ball very easily to the fine leg. And this is not a good start there from Zaman Boys Kalladka after their try to depend not a big total, it's just a 36 to win this match for the opposition, and already double figure 12 runs on the same start comparison. If you see comparison between these two, both the team has got a similar start, 12 without loss of any wicket. So first over is a very expensive over from the point of view of Zaman Boys Kalladka, and another 24 needed for the victory in remaining 5 overs, 30 balls. They have to get another remaining rounds. Second over, first ball, and again chip that one just over that of the fielder, and again there is enough time. He lost his bat, my goodness. Very lucky for Shailu there. Of course there is a couple of runs, easy couple of runs, but because of while trying to get the second run, he lost his bat from the hand, and it's take a little bit time to pick the bat again, and just a single. With that single scored Mozan to 13 on the board. Musta to Shailu wanted to swing every time. You can see that in the previous over also Shailu loves to play the ball in the onside region. Again he tried to drag the ball from outside the line of off stump, and missed it completely. No run scored, and score remains on 13. This time again he played it very fine, but fielder is there in the fine leg region, and before the throw coming from that fielder, enough time for the batter to complete the single. Again Shailu tried to reach to that delivery, which is down the leg side. Very lucky escape here for the bowler that he didn't got that much of placement enough to get the boundary, but good enough to rotate the strike. 14 without loss of any wicket. Oh, lovely shot, sweet sound came from the bat off the batter, and that will go to be a boundary. Now Harris joining the party again. Not a ideal delivery to ball to the left-hander, to the legs. Always the left-handers are very strong. Not I'm talking about the left-hander. Every batter's always very strong off their legs. Little margin for error when bowling that line in the power play. And what a shot there from Harris there. Absolutely perfectly struck. And scoreboard jumps into 18. Half of the job which is completed. Again appeal for leg before wicket. Umpire Roland Pinto is just watching the ball till the last moment, saying the ball might be going to miss the leg stump. After seeing the ball is a turn and a little bit need to travel, and definitely because of that incoming delivery for the left-handed batter, that ball going to miss the leg stump. A slight a bit of
and rightly so. Umpire Roland Pinto judged that very well. 19 on the board without loss of any wicket in the over. Number second is in progress. Musta. Oh, this time he lofted and ball is going and going, but not going into the fence, but into the hands of the fielder. Shiloh, even though he drags it from outside the line of half time, connected one properly. Again, that direction of the wind might be it's not good enough to get the ball into the fence, and enough time for the fielder to judge that one very well. Good running catch in the end from the fielder in the deep long on. The wicket number first is back in the pavilion of United Suratkal, and good innings which comes in and here from Shailu after scoring quick fire 11 runs in 9 deliveries is back in the pavilion. Just talking about the tournament which is ended here in UCG ground. Zaman Boys Kalladka organized ZBB Trophy 2025, one of the tournament which is on the heart of all cricket lovers as far as arrangement is concerned, and the team which is create the history in that tournament, Reliance Katipalla, winning that prestigious title with a beautiful trophy, and the team Young Friends Surwa becomes the runner-up in that tournament, and that tournament I have really witnessed some and the record number of spectators as well. So Zaman Boys Kalladka still they're searching for one or two good overs here for the team to back in the game. After that, one wicket is fallen. Will it going to be good enough? Wait and see. So 19 is already scored on the board. So over number 2 completed. The Imtiaz, the experienced campaigner, brought into attack to bowl the third over for Zaman Boys on behalf of Zaman Boys. Round the wicket. Right arm. Tried York straight to the answer fielder. Good catch taken in the mid-on. So both the opening batters are back in the pavilion now. Now right time for Zaman Boys to tighten up the screws here, because the fall of wickets always gives the opportunity for the fielding team to back in the game. So this has been the Yorker line delivery, what the bowler is trying for. Batsman got a bat onto that, but not really able to get past that mid-on fielder. The tall fielder out at mid-on region, making no mistake at all. Nazir, the fielder down at short mid-on, making no mistake at all. He's a tall man, tall enough to get that little bit jump he had to take to get the catch. Zunaid, the correction. Zunaid, the fielder down at short mid-on, taken the catch here, and wicket number 2 is back in the pavilion. And of course, as Zaman Boys wanted to back in the game, they need to get some wicket, need to get dot deliveries. They just try to put some pressure onto the batter, putting someone closing fielder, the left-hand batter replacing the left-hand batter. Salam is a non-striker, and striker with the left hand. The batter came into middle to replace the wicket of Aris. So vital breakthrough from Imtiaz in the first delivery. Now it's just try to attack the batter. What is they needed situation like this. Here comes again. The fielder is not there. The cow point, I'm thought it is the orthodox cow point is there in the circle, but the fielder is in the deep cow point region, so that only a single there. Just what I'm talking about. Some the fielding side is very important. When it's not too many runs required for the position, I have to pick some fielders inside the ring. But a good looking stroke anyhow from Bashir to give a lot of confidence for him to get first run from his bat in facing a first delivery. So 20 on the board, another 16 needed for the victory. Imtiaz to Salam. Again top edge, and the fielder will go into collision. Looks like they got some contact with their hands, maybe try to get the ball. They're not really watching each other, they're only watching the ball, how to collect, so that it might be a little bit hurts. It will hurt the hand of right hand of the fielder who is charging from the mid-wicket region, and one fielder is charging from the deep square leg. And fortunately, maybe looks like he's in a little bit in trouble
And 22. Looks like is fine enough to continue. (22) is the total score. Another 14 needed for the victory, and they got 21 deliveries remaining. This time, bowler's back drive, and looks like the opportunity is missed out by the bowler, and driven that one powerfully back to the bowler. Not powerfully, but half-hearted. But it's very difficult sometime when the bowler has got a run-off and in the run-off, I think it's not so easy to get the ball on his follow-through. But he's got a hand onto that, and one more single. With that single scored, was on to 23 on the board. That will going to be a wide, and again that line is far away outside the line of off stump. One more single with that single score, but moves on to 24 on the board. Another 12 more runs required for the victory, and deliveries, of course, they're not really bothered about the deliveries remaining after this. 3 overs remaining. One more. This time that beat everyone, and that ball went towards the defined boundary for 4 runs. So this is really a disappointment and disaster from the bowler's point of view. After he got the wicket, then bowling such a line, no excuse for that. And scoreboard jumps into 29. Just 7 needed for the victory. Flum, absolutely flum, no doubt at all. And the batter is in hurry of finishing the match with the big 6, but misses the line completely, and ball hitting him right in front of stumps. Wicket number 2 is back in the pavilion. 3 is back in the pavilion. New batter in, replacing left-hand batter Bashir. Now right arm over the wicket, Imtiaz. This time delicately played. Not really tried to hit it too hard, but it's a clever cricket there from a young man. Just getting that full toss into his bat, closing the face of the bat, getting the direction down to find leg for 4. And with that boundary, scoreboard now moves on to 33, and 3 more runs required for the victory. Just 3 runs, 3 needed for the victory for the United Suratkal. Excellent performance, especially the bowler, the way that bounced back. Outside the line of off stump. One more delivery, which is the fire delivery. Far outside the line of off stump and going to be a wide. One more extra. With that extra score, but moves on to 35 on the board. Just scores are level. Just one ball remaining to complete the formalities of the victory for the team. Zaman boys for the teams United Suratkal. The new batter has got opportunity to finish the match.
again played it nicely down to cover point region, and that's it. The victory for the team, and congratulations for the Zaman boys. Congratulations for United Suratkal for the comprehensive victory. Hard luck, Zaman boys, Kaladka. We are going to the next match, and we'll take a short break in commentary box as well. So the man of the match of this match award goes to Jabir, who bowled fantastically. 2 overs, no beaten, 6 runs and 2 wickets he claimed. And because of that fantastic bowling performance, he edged the man of the match. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಬೀರ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಧನುಷ್ ಬಪ್ಪಾಲ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಾಬೀರ್ ಎಡ್ಜೆಡ್ man of the match. I request Zabir please go to the stage and receive the man of the match award from Mr. Dhanush Bappal. I request Mr. Dhanush Bappal to please distribute the man of the match award for Zabir for his fantastic bowling performance of 2 overs, no maiden, 6 runs and 2 wickets. Zabir adjudged man of the match. So comprehensive victory for United Suratkal against Zaman boys. By 6 wickets they registered their victory, and with that victory they are through to the next round of this competition. Next match, Friends Kuttar will take over Red Wings, and that match starts within just a short while. Match number 5 of this prestigious cricket tournament, Gaurav Trophy 2025, is now coming up live and exclusively right in front of you. And this tournament is proudly presented by Jeppu Friends in loving memory of late Gaurav Bolar. Jeppu Friends presents Gaurav Trophy 2025, and now the match number 5 is going to start between Friends Kuttar versus Red Wings, and that match starts within just a short while.
Right, the match number 5 is now going to start, and the one more good match is now going to start between Red Wings कुंजत बैल versus Friends कुतार. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त Red Wings पहले बल्लेबाजी करता हो तो अंपायर ने इशारा किया कि मैच की शुरुआत हो और पहली गेंद लेकर गेंदबाज महेश इस वक्त तैयार रहा, जबकि सामना करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज जलाल, जबकि प्रीतम नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद. पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ. प्लैनेट एयर ट्रैवल एंड की ओर से गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा. ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद थी इस वक्त, और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है. और गेंदबाज महेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, एक्स्ट्रा बाउंस द लास्ट मोमेंट, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का. और वाइड के रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 1 रन पर कैसे नुकसान किया और महेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा. यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, मिड ऑन की दिशा में गेंद पहुंची और गेंद इस वक्त फील्ड की जा चुकी है. मिड ऑन फील्डर द्वारा रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन पर बिना किसी नुकसान के. तो जलाल इस वक्त एक बार फिर से सामना करते हुए महेश की गेंद तो दाहिने हाथ राउंड द विकेट. महेश फुल टॉस गेटिंग इनसाइड एज, जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड. और गेंद को इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड कर लिया गया, रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. और महेश अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद जलाल के लिए उछाला जरूर, लेकिन नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट शॉट एंड गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड दे गॉट गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट. स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे, ऐसा कुछ नियंत्रण भरा स्ट्रोक नहीं था, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और इस बीच महेश अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. प्रीतम सामना करते हुए इस वक्त और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए. 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत. और गेंदबाज महेश, यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रन बिना किसी नुकसान के. प्रीतम एक बार फिर से महेश की गेंदों का सामना करते हुए और महेश की अगली गेंद. ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, अपील और इसी के साथ प्लम्ब इन फ्रंट घोषित कर लिए गए हैं प्रीतम. हालांकि प्रीतम ने अपना बल्ला यानी बैट जरूर दिखाया, लेकिन आखिरकार यहाँ पर आउट घोषित किए गए हैं, तो जश्न इस वक्त बनाया जा रहा है. तो इस वक्त प्रीतम वहां पर खड़े हुए हैं और जहां तक सवाल है कुछ बातचीत अंपायर से करते हुए. और जहां तक सवाल है विकेट का, तो इस वक्त प्रीतम पेविलियन की ओर प्रस्थान करते हुए और पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है रेड विंग्स का. तो पहला विकेट 3 रनों के ऊपर गिर चुका है. प्रीतम इज बैकिंग टू पेविलियन एंड तो 3 रन पर पहला विकेट गिर चुका है. और जहां तक सवाल है इस वक्त प्रीतम आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हैं. नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और इस वक्त महेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. नए बल्लेबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद बेहतर गेंद थी, फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. ओवर की समाप्ति. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर 3 रन्स ऑन द बोर्ड. मिक्स स्टार्ट फॉर रेड विंग्स against Friends Kutar in the match number 5 of this prestigious cricket tournament Gaurav Trophy 2025 के अंतर्गत. तो 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी. और जहां तक अगले मैच का सवाल है, प्लैनेट एयर STC will takes over Team Rising in the next match, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage to make a sign in the official chart. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, आदि
इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए। और जहाँ तक आदि का सवाल है, काफ़ी प्रतिभाशाली गेंदबाज इन दिनों में एक गेंदबाजी में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन हो देते हुए। और यहाँ पर फ्रेंड्स को तार के लिए इस वक्त नया ओवर शुरू करते हुए। ओवर की पहली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर उछाला है, डीप मिड विकेट पर, और गेंद लंगोन कहना पड़ेगा, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है, ऐसा कहना पड़ेगा। आदि ने इस वक्त बल्लेबाज को ललचाया था कि स्ट्रोक्स खेले बल्लेबाज, और इस लालच में आ गए। गेंद मिड लेग स्टंप पर फेंकी थी, आखिरकार बल्लेबाज ने गेंद को उछाला तो जरूर, लेकिन अगेंस्ट द विंड और डीप मिड विकेट पर इस कैच को लपक लिया गया सीमा रेखा के अंदर। आदि के खाते में विकेट इस वक्त गिर चुका है, और 3 रनों पर पहला विकेट इस वक्त हो चुका है, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। अपनी पहली गेंद पर आदि इस वक्त विकेट प्राप्त करने में सफल। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है रेड विंग्स का, तो इस वक्त उनको चाहिए एक साझेदारी। 2 इस वक्त विकेट 2 गिर चुके हैं, 2 विकेट इस वक्त गिर चुके हैं, और 2 विकेट गिर जाने के बाद सहज रूप से इस वक्त दबाव उनके बल्लेबाजों के ऊपर, और इस दबाव को हटाना है तो निश्चित रूप से एक बेहतर साझेदारी उन्हें यहाँ पर निभानी होगी। और नए बल्लेबाज सफान इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और आदि इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, और बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद इस वक्त आई थी आदि की, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद जितनी तेज रफ्तार के साथ उछाल ली, इस उछाल को समझ नहीं पाए और गेंद की तेजी को भी समझ नहीं पाए, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त आदि अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए, लेकिन गेंद शायद लाइन के बाहर टिप्पा खाते हुए, और इस बीच अंपायर ने इस अपील को सही तरीके से नकार दिया। लेग बाई के रूप में एक विकेट, एक रन यहाँ पर जुड़ चुका है, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर। 4 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और आदि इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को मोड़ना चाहा, लेकिन गेंद बल्लेबाज के पहुंच से काफी बाहर, वाइड का इशारा, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड इन द लास्ट मोमेंट, और एक रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। 5 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और आदि एक बार फिर से अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। रिवर्स शॉट, टॉप एज, मौका नहीं, जस्ट क्लियरिंग द गली फील्डर, और गेंद को इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में पीछे की ओर दौड़कर जाकर फील्डर फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, हालांकि गेंद टॉप एज पर टकराई थी अंतिम क्षण में, लेकिन गली फील्डर जो खड़े हुए थे उनकी बाईं ओर से गेंद इस वक्त निकलते हुए, और बैकवर्ड थर्ड मैन पर खुद वही फील्डर पीछे की ओर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड, और आदि अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, स्टंप्स को कवर करने के बाद, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। और इस बीच आदि अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। Bowled out, just gone for a reverse shot, not succeeded. This is a fantastic delivery from the bowler. It kept low at the last moment, और रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए इस वक्त, और गेंद उनके बल्ले ने बैट को चीरती हुई सीधे जा टकराई ऑफ स्टंप पर। गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 गिर चुका है। नाउ आई मस्ट से रेड विंग्स लुकिंग इन डीप ट्रबल। In fact, it's 6 for the loss of 3 wicket, and over number 2 has been game strewn. 2 gone, 6 on the board, 3 wickets lost. निश्चित रूप से कहना पड़ेगा रेड विंग्स के बल्लेबाज अपनी सही राह को तराशते हुए, just searching for the right track. And now just 4 overs remaining in the overall calculation in their innings. Planet Air STC will take over a team rising in the next match, and because of that I once again request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately. We'll make a sign in the official chart. और
इस बीच तो इस वक्त जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, और गेंदबाजी शुरू करते हुए विकेट कीपर संतोष। और जहां तक सवाल है, कुछ दिन पहले दिरलाकट्टे में जो यूसीए के अंतर्गत मैच खेला गया तो उस मैच में निश्चित रूप से एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इस वक्त विकेट कीपर संतोष ने दिखाई थी। हालांकि पकबादा लेग बिफोर विकेट घोषित करने के बावजूद वहां पर संतोष ने खिलाड़ी को वापस बुलवा कर खिलवाया था। निश्चित रूप से क्रीड़ा स्फूर्ति, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने दिखाई थी, और ऐसी क्रीड़ा स्फूर्ति की जरूरत है अगर अंडरआर्म क्रिकेट को जीवंत रखना है आने वाले दिनों में। और यहाँ पर जैसा कि संतोष इस वक्त विकेट कीपिंग करते हुए गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए महेश ऑफ स्टंप पर आते हुए ऑफ कटर गेंद को इस वक्त खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 7 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। नए बल्लेबाज वैशाख का आगमन इस वक्त हो चुका है, और इस बीच महेश लेग कटर गेंद को हल्के से खेल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। रन सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और निश्चित रूप से रेड विंग्स कुंजत बल के बल्लेबाज ऐसा कहना पड़ेगा रनों के लिए इस वक्त काफी हद तक संघर्ष करते हुए, और महेश एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर लॉन्ग ऑन से दौड़कर आए, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। पहला रन पूर्ण करने के बाद बल्लेबाज दूसरे रन के लिए मुड़े स्ट्राइकर एंड पर, और इसे देखते हुए नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज ने भी 2-3 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जब तक उन्होंने घूम कर देखा थ्रो पहुंच चुका था गेंदबाज के हाथ में। थ्रो को रिसीव करने के बाद गेंदबाज ने विकेट तेजी के साथ चटका दी है। मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत विकेट गिर चुका है, एक विकेट और गिर चुका है। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर द बैट्समैन ऑफ रेड विंग्स कुंजत बहल। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ, इन फैक्ट इट्स 9 for 4. Really the problems are continuing here for the batsmen of Red Wings at this situation. They badly required a partnership at this stage to get back into this match. इस वक्त तख्ता फ्रेंड्स कुत्तार का भारी लगता हुआ, और उनके गेंदबाज इस वक्त एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, नंबर 6 बल्लेबाज का इस वक्त आगमन हो चुका है। शॉर्टमैन छोटे कद के खिलाड़ी नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और इस वक्त महेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर रन्स नहीं मिलेंगे, फील्डर मौजूद वहां पर, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 9 for the loss of 4 विकेट। महेश एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया, मिड विकेट पर गेंद को रोका गया, बेहतर फील्डिंग वहां पर, और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। 1 more run added to the total, and the side total is now moving up to double figures. So that means 10 on the board for losing 4 wicket in the over number 3 in progress. Still a ball left in this over, और महेश इस ओवर में अंतिम बार नए बल्लेबाज मितेश is now comes out to the middle, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। मिड ऑन बिल्कुल सर्कल के अंदर इस वक्त कोई लॉन्ग ऑन नहीं, मिड विकेट पर एक फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर, जबकि डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद, और गेंदबाज महेश फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ राउंड द विकेट अपनी ओर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए, स्वयं गेंदबाज गेंद तक पहुंचे, बैकहैंड थ्रो, लेकिन थ्रो काफी ऊंचा, काफी वाइडर, 1 रन का इजाफा लेग बाई के रूप में, और लेग बाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 11 रनों पर 11 for 3, and third over has been came to an end. So half the way mark, still half have to go. आधा सफर तय हो चुका, आधा सफर तय होना बाकी, और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त रेड विंग्स के अभी भी अपनी सही राह को तलाशते हुए, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट एट दिस सिचुएशन, राइट ट्रैक इज एट दिस सिचुएशन फैक्ट। और 3 ओवर का खेल जो कि बाकी है, देखना है कि इन बचे हुए 3 ओवर में रेड विंग्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं।
और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज वैशाख और मितेश के बीच में एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, ऐसा कहना पड़ेगा, वैशाख और मितेश के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आन पड़ी है, एक साझेदारी ने पार्टनरशिप निभाने की। और इस वक्त 3 ओवर का जो खेल बचा है, इन 3 ओवर में उन्हें एक बेहतर बल्लेबाज एक साझेदारी के जरिए निभानी है, अपनी टीम के एक बेहतर स्कोर तक पहुंचाना है, और देखना है कि अपनी इस सफलता में वो किस हद तक यश प्राप्त कर पाते हैं। तो इस बीच पहली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस आउटसाइड एज, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा। प्लैनेट एसटीसी ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರೈಸಿಂಗ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और पहली गेंद पर रन इस वक्त मिल चुका है, 12 रन। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने बाएं हाथ राउंड द विकेट। Again lost it. This time I think it could be a chance. No, in fact the ball fell in the wicket area and it's brilliantly stopped by the fielder at deep back on a square leg. विश्वास द फील्डर, विश्वास शायद फील्डर थे, गेंद को इस वक्त अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए 10 से 12 कदम गेंद को उन्होंने रोका पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस। और इस बेहतरीन फील्डिंग के बदौलत सिर्फ 2 मात्र रन बल्लेबाज यहाँ पर प्राप्त करते हुए, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस बीच प्रीतम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को टैप कर दिया इस वक्त, धीमी गेंद थी पिछले गेंद के मुकाबले, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिए अभी भी संघर्ष करते हुए बल्लेबाज रेड विंग्स के, और इस बीच प्रीतम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार रिवर्स शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर खड़े हुए महेश थोड़े से स्क्वायर, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पुट करने में सफल। गैप चुनते हुए गेंद को रिवर्स शॉट खेला था इस वक्त बल्लेबाज मितेश ने, और 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर, 17 ऑन द बोर्ड। और प्रीतम फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर, और वाइड का इशारा, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट। 1+1 2 runs added to the total in the face of extras। रन्स इस वक्त चाहिए रेड विंग्स के बल्लेबाजों को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और इस बीच गेंदबाज प्रीतम अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद शॉट फाइन लेग पर, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चुका वाइड का इशारा। 1+1 once again added to the total। तो वाइड इशारा कर चुके हैं इस वक्त, और तीसरे अंपायर के लिए यहां पर मांग की गई है रन आउट के लिए। तो देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर जो हैं उसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। और देखिए यहां पर किस तरीके से गेंद शॉट फाइन लेग पर गई थी, थ्रो पहुंचा इस वक्त, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचे विकेट बिखेर रहे, तब तक देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, प्लैनेट एयर एसटीसी और टीम राइजिंग्स के बीच अगला मैच खेला जाएगा, तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट दरख्वास्त निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और तीसरे अंपायर जो कि इसका परिशीलन यहां पर करते हुए खेले, जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 3.4 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, और रेड विंग्स इस वक्त तो तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट गौरव ट्रॉफी 2025, our some official donors are prime sponsor Planet Air Travel Dubai, the main sponsors are Elite Cafe Krishnapur,
Laundry Wala, the Karawali Credit Cooperative Society Limited, Rakhi's Chai Station, Gujar Kere, Mulihitlu Friend Circle registered Mulihitlu, Gorakshanatha Tigers, Jeppu, Sri Devi Engineering Works, Mulihitlu, City Friends, Mulihitlu, 10 F3 Sports, Melkar sponsored for all Man of the Match award for this tournament. So thankful to all the sponsors of this tournament, and now we are just waiting for the third umpire decision. और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, प्लैनेट एसटीसी और टीम राइजिंग के सर्व सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें अगले मैच के हस्ताक्षर के लिए ऑफिशियल चार्ट पर, और टॉस प्रक्रिया भी पूर्ण करें कृपया इस मैच के अंत से पहले। Not out is the call, and the batsman survived in this delivery. 21 the score for losing 4 wicket, और जहां तक सवाल है इस गेंद पर बल्लेबाज बच चुके हैं, और इस बीच अगली गेंद के लिए गेंदबाज तैयार रहा। तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज, ये गेंद स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन का इजाफा, और एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 नाउ द स्कोर इन द ओवर, नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट दिस ओवर। प्रीतम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद निकली इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, एक रन का इजाफा, और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 4 overs completed. They are recovering a little bit after being a shackling start. 23 for 4 after completion of 4 overs for Red Wings कुंजत बैल। और मैं जानना चाहूंगा इस ओवर में कितने रन बने? 12 रन इस ओवर में बने। प्रीतेश के इस ओवर में 12 रन बने, और इस ओवर की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा रेड विंग्स काफी हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। और 2 ओवर का खेल बाकी, अगर इन बचे हुए 2 ओवर में कम से कम 15 से 20 रन रेड विंग्स के बल्लेबाज अगर बटोर पाते हैं बचे हुए 6 विकेटों की मदद से, तो शायद एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा कर सकते हैं। तो प्लैनेट एयर ट्रैवल इनकी ओर से गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए सनील ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, और सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज वैशाख। 5वां ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ। इस बीच सनील गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पहली गेंद बेहतर गेंद थी, डॉट गेंद। Planeter STC after won the toss they elected to field first against team rising in the next match, और सनील अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ऑप्शन से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद रन के लिए दौड़ पड़े, और इस बीच एक रन प्राप्त करने में सफल। वाइड का इशारा, एंड नाउ धीरे धीरे अपना नियंत्रण यहां पर खोते हुए गेंदबाज फ्रेंड्स को उतार के, पहले 3 ओवर में उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की थी काबिल तारीफ, लेकिन उसके बाद चौथे ओवर में प्रीतम ने 12 रन प्रदान किया। अब सनील अतिरिक्त तोहफे के रूप में रन प्रदान करते हुए यहां पर, और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट, टॉप एज, मौका, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं। एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़ कर आए फील्ड को, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। रन्स एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर
27 रनों पर 27 on the board for losing 4 wicket at the start of the 5th over in fact. और सनिल इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, लॉन्ग ऑन मिड ऑन थोड़ा सा वाइडर, स्क्वायर लेग एक्स्ट्रा कवर शॉट, थर्ड मैन मौजूद और सनिल इस बीच दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा, लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। सनिल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे, वैशाख सामना करने के लिए तैयार। Lost it this time. I think hit that one pretty hard, but I don't think it's gone all the way and taken comfortably just inside the fence by the fielder. गेंद को उछाला था लेकिन स्ट्रोक्स में तो दम नहीं था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और वडी लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने इस कैच को लपका। देखिए किस तरीके से होता है, बल्कि दिस इज द रीप्ले एंड ही सेड दैट वन hard and high and it taken comfortably just inside the fence by the fielder at Wadi's long on and one more wicket fallen and after after a good partnership, this partnership has been broken and the man Vaishak departs and the 5th wicket down. It's 28 for 5. So Newman, one more experienced campaigner of their side. Ashwin is now comes out to the middle for Red Wings. और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार सनिल की गेंदों का और सनिल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 28 रन बन चुके। अगर 40 का आंकड़ा यहाँ पर रेड विंग्स पार करता है तो निश्चित रूप से इन हालातों में एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर कहलाएगा। इस बार पैरों पर गेंद टकराई लेकिन अंतिम क्षण में एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। शायद गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के आड़े इस वक्त आ गए थे तो इस वजह से अंपायर को इस वक्त कुछ दिखाई नहीं दिया और अंपायर प्रदीप कोठारी इस वक्त कुछ कहते हुए और यहाँ पर रन तो जरूर पूरा हो चुका है और दोनों अंपायर इस वक्त आपस में बातचीत करने के लिए बढ़ते हुए और आपस में बातचीत इस वक्त जारी है। तो थोड़े से शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त मोड़ना चाहता, पैरों पर गेंद टकराई और अब लेग बाय का इशारा इस वक्त करते हुए अंपायर तो 1 रन एक्स्ट्रा सतरिप के रूप में उनके खाते में जोड़ा जाएगा। 29 now for the loss, 29 now for the loss of 4 wicket, 29 for the loss of 4 wicket और गेंदबाज सनिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अंतिम बार इस ओवर में बाएं हाथ के बल्लेबाज मितेश सामना करते हुए इस वक्त। Reverse shot, not connected that one properly. In fact, it's got a single. Mitesh keeps the strike. 5 overs completed, and after 5 overs, they are now 30 on the board for losing 4 wicket with just last one to go in their innings. आदि स्टार्ट्स ऑफ फ्रेश प्रोसीडिंग्स और जहां तक आदि का सवाल, अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन उन्होंने फेंका था और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ रेड विंग्स की पारी में और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त आदि तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज मितेश इस वक्त सामना करते हुए आदि की गेंदों का। द फर्स्ट बॉल कम्स, इस बार छोड़ दिया गेंद को, शॉट थर्ड मैन पर थ्रो, इस बार गेंद बेल्स को क्लिप करके चली गई इस बार, लेकिन शायद इस बार तीसरे अंपायर के लिए स्क्वायर लेग अंपायर द्वारा इस वक्त
इशारा किया है तीसरे अंपायर के लिए। गेंद हालांकि बेल्स को छूकर निकल गई थी, वाइड का भी इशारा हो चुका है। तो तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त सौंपा गया है रनआउट का परिशीलन, और यहाँ पर देखना है कि इस का परिशीलन करने के बाद अंपायर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। देखिए किस तरीके से हुआ था यहाँ पर थ्रो, जस्ट बिल्स को क्लिप कर गई थी, सिर्फ बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, जो मिडल ऑफ स्टंप का बिल्स है वो सिर्फ डिस्टर्ब हुआ था। और तब देखने वाली बात है कि जब बिल्स डिस्टर्ब हुए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। तो अंपायर इस वक्त तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करते हुए, काफी नजदीकी मामला और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। He's gone in fact। और जब बिल्स फ्लिक हुए थे तब बल्लेबाज का बल्ला यानी बैट क्रीज से बाहर था, तो रन आउट के रूप में विकेट गिर चुका है। वन मोर विकेट फॉलन, नाउ 30 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 31 in fact, 31 for the loss of 5 wicket, wide declared by umpire। तो 6 गेंदें अभी भी उनकी पारी में बाकी और नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और आदि इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, आउटस्टैंडिंग वन, लो फुल टॉस के तौर पर गेंद आई थी। इस वक्त गेंद को रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और गेंद को विकेट कीपर भी ठीक तरह से विकेटों के पीछे गैदर नहीं कर पाए। 1 रन का इजाफा हो चुका है, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 5 wickets in the over number last started just short while ago in their innings। आदि मितेश के लिए लेफ्टी बॉलर टू लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हियर ही बाउंस। ये गेंद को मोड़ना चाहा, शॉर्ट थर्ड पर गेंद पहुंची थोड़ी सी मिसफील्ड, इस बीच 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 wickets, 6 wickets in fact। और गेंदबाज आदि अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अशफाक इस वक्त सामना करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, इस बार टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात है, शायद विश्वास वहां पर फील्डर थे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। तो पहली वार्निंग, फर्स्ट चेतावनी, first warning given to the bowler Adi to entering into the danger zone after bowling after delivering delivery। और इस बीच 3 गेंदें फेंके जा चुके हैं, चौथी गेंद फेंकने के लिए इस वक्त आदि तैयार। मितेश के लिए बाएं हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद, टॉप एज मौका, कॉटन बाउल्ड एंड टेकन कंफर्टेबली ऑन हिज फॉलो थ्रू, just gone for a wide swing, not succeeded, the ball gets some extra balls, got his stoppage और फॉलो थ्रू में खुद आदि ने आसान सा कैच इस वक्त लपका कॉटन बॉल के रूप में और इसी के साथ मितेश की एक बेहतर सपोर्टिंग पारी पर पर्दा गिर चुका है और 34 रनों पर 7वां विकेट हो चुका है यहाँ पर रेड विंग्स को जद बेल। इट्स 34 for 7 with 2 to go in their innings। तो रिप्ले पर देखिए किस तरीके से दिखाया जा रहा है, टॉप एज पर गेंद टकराई, फॉलो थ्रू में इस कैच को लपक लिया गया आसानी के साथ गेंदबाज आदि द्वारा। Number 9 batsman is now comes out to the middle और मुबीर नंबर 9 बल्लेबाज इस वक्त 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में और बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त आदि गेंदबाजी करेंगे, जबकि लंबे कद के खिलाड़ी मुबीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। आदि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद बॉल्ड आउट, फैंटास्टिक ऑफ कटर डिलीवरी दिस टाइम और रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके he was absolutely not in the line और इस बार गेंद इतनी तेजी के साथ घुमावली, एक तेज रफ्तार के साथ की, इस रफ्तार को इस वक्त बल्लेबाज समझ नहीं पाया। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, have a look at this in the replay, this is an outstanding delivery and his mid stump has been uprooted and 1 more wicket fallen, terrific from Adi and he just got the lead of the batsman। 8th wicket down, it's 34 for 8 and now just 1 ball remaining in the innings। एक गेंद अभी भी बाकी उनकी पारी में और नंबर 10
बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ। यज्ञेश नंबर 10 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहा। और जहां तक गेंदबाज आदि का सवाल है, अब तक 4 विकेटें वो प्राप्त कर चुके हैं। हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। ही ऑलरेडी पिक्ड अप 4 विकेट्स आदि, नाउ ही इज ऑन अ हैट्रिक। और द लास्ट बॉल ऑफ रेड विंग्स इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। यज्ञेश सामना करने के लिए तैयार रहा और देखना है कि गेंदबाज आदि अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। और इस बीच बाएं हाथ ओवर द विकेट आदि इस वक्त तैयार रहा। यज्ञेश बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। ड्रिवन इनटू द गैप एज वेल। और 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर रन पूर्ण कर चुके हैं या नहीं देखना पड़ेगा। शायद अंपायर अब इशारा करते हुए तीसरे अंपायर की ओर। तो स्टंप्स एक्सपोज करते हैं। गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछाला था एक्स्ट्रा कवर फील्डर की दाईं ओर से, और जब तक गेंद को थोड़ा सा दौड़ लगाते हुए 3-4 कदम एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे। और देखना है कि यहाँ पर देखिए पहला रन पूर्ण कर चुके हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और यहाँ पर थ्रो पहुंचता हुआ। और थ्रो को इस वक्त विकेट कीपर रिसीव करते हुए और यहाँ पर विकेट इस वक्त चटकाते हुए। और यहाँ पर ऐसा देखना यह है कि गेंद से विकेट यहाँ पर चटकाए गए थे या नहीं। शायद बल्लेबाज खतरे पर पड़ सकते हैं और खतरे में पड़ चुके हैं, उनका विकेट गिर चुका है। इज आउट, रन आउट, एंड रन आउट हैपेंड इन द फाइनल डिलीवरी ऑफ देयर इनिंग्स। 35 runs scored by Red Wings. They come back very well in the last 3 overs. In the first 3 overs, they managed to score only 11 runs, and after that, next 3 overs, they come back very well with added 34 runs, 24 runs in the last 3 overs, and they finished respectively with 35 in the stipulated 6 overs for Red Wings. Kunjat Bell, and they set a victory target of 36 for Friends Kotar. So the target is Friends Kotar is 36 in 36 stipulated below. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाजी से 36 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं उनके निर्धारित 6 स्टिपुलेटेड 6 ओवर्स में। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हा बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर फ्रेंड्स कुत्तार की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है कि ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So thank you very much, Gopi. Welcome to this match. The one more big match is in progress, and two well-balanced teams are battling here for the victory. And the target which is set by team Red Wings Kunjat Bail at exactly 36 they needed to get to win this match. The same target which is we've seen in the previous match, and 36 which is required for the victory. So coming back to these two teams' performance, of course. Team Friends Kuttar and in the season first match which is played here in UCG Cricket Ground, Nutan Trophy, they become the champion. And coming back, the Red Wings performance, of course, in this particular season, and the just start of the beginning of this season. But in the last season, they are becomes the winners in the Real Estate Trophy 2025 in this same venue. So that it's going to be a great battle for the victory between these two teams. Now starts with the delivery, outgoing delivery from Yadnesh, left-hand bowler, always a difficult bowler for the right-hand batsman. Very difficult to pick their turn in the ball and line and length in the ball. And the first ball is a dot ball. Pritham missed it. This time, pick that one right from the middle of the bat, down to the square, like a ball will going to not travel to the fence. And Mitesh did a great job to stop the boundary, and there's enough time for the batter to come back for the three valuable runs. Pritham already just made his mind that he's got a promotion up in the order to take the advantage of the power play, and this is rightly taken the advantage by playing that little bit across the line, but very confidently played. You know exactly it's a safe stroke to play in the book in the power play. No one there in the deep square leg inside the ring, long on and long off. So quite intentionally he played that slog sweep shot and got three valuable runs for his team and for his credit as well. Three without loss of any wicket. Yadnesh coming over the wicket, nicely swept that one down to square leg region, and Sunil is knowing for that, and he is the one is really contributed for his team in that winning moment for team Friends Kuttar after a long wait. They are becomes the champion here in UCG Cricket Ground, and Sunil is a man who's got got a lot of contribution from the bat and the ball. Again, one more single. Just wanted to go for the drive. Pritham doesn't get that much of timing in the shot, and he got outside edge of the bat. One more addition to total with the addition of that single score, but moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Yadnesh searching for dot ball and for the wicket as well. Oh, very close to the wicket keeper in the negation. Just try to get the ball into the third man region. Sunil, lucky for him that ball is just passing the trying hands of wicket keeper Jalal, and short third man fielder fields the ball, and there is no chance at all for any run. The battle is on here for each and every run for the first over of the power play between these two teams. Very good balanced teams battling in the middle. This time, this is a sensible, absolutely sensible there from Sunil. The way that is played that soft hand with the gap, and with that push, he called his partner for a run. And the first over, which is comes in of Yadnesh, not a bad over for both the teams. The kind of run required for the team Friends Kuttar, which is 6 runs per over, and they got 6 in the first. And Yadnesh might be happy with their 6 runs because exactly is bowling in the power play. And considering that, I think this one is also a good one for team Friends Kuttar. Ball to ball run required for the victory. Now 30 ball and 30 runs required. The match is evenly poised. Team Friends Kuttar and team Red Wings Kunjat Bail. We are talking about that tournament which is held in the season first. Friends Kuttar become the champion after defeating some top teams in that second round, quarter-final, even in the semi-final. They defeated Young Friends Surva, one of the best semi-final, with witnessing 2 tie matches, and which is with the super 5 deliveries and 3 deliveries. They are reached to the final and defeated Goryang Boys in the mega final to lift the prestigious Norton Trophy 2025. Meantime, from the Planet Air Travel end, bowler brought into attack Dharma, man of the match in the previous first match with this bowling, but it's not a good start here from Dharma. And afternoon, I think he's not need to get some
warm-up and warm-up delivery from him, and a wide call by umpire Pradeep Kothari. With that, extra scoreboard moves on to 7 on the board without loss of any wicket. 4 wickets in the previous match for Dharma. Swept it nicely in the gap between square leg and the fine leg. Fumble from the fielder, grabbing the opportunity, coming back for the second. Appeal for run out. Umpire will go for referral, and he goes upstairs because you know exactly it might be a little bit close one, and wait and see whether the batter is safe or not. Throw which is coming from the fielder after one bounce. It take a little bit time for the batsman to drag his bat, and he is safe, and not out with a call from third umpire. Is safe, so no damage done. This is what happening sometime. If the ball which is not hard in the nature, after ball is pitching into the ground, and then it's take a little bit time for the wicket keeper to collect the throw. If the ball is a little bit hard, then definitely ball will come to your hands. Even after bounce, the ball will come to you very quickly. So that should give a little bit time for the batter to reach his home. And it's not so easy for the fielder as well to get the throw, pull into the hands of wicket keeper, because of enough power is required to get the throw in the hands of wicket keeper. All are technical points sometime, it's very important. But overcast condition continues here in the afternoon as well. But players and umpires and spectators will going to enjoy this weather condition, which is not hot, but weather which is a cloudy weather condition. Here comes Dharma. Bowls better delivery. This is the one Dharma will going to test the temperament of the batter with his unique action and unique line and length variation in his bowling. Looks like it's going to be a very easy delivery to face. And here comes Dharma from the far end. Right arm around the wicket. Went for receiver sweep. Ball not too far away from Sanil. Back to back to dot ball. Will going to put some pressure onto the bowler. Batter in fact, and Sanil is the one is just try to rotate the strike and but fails to make a contact with the bat. Dharma much required dot delivery after that, couple of runs and a wide. Here comes. This time we will certainly going to get the single. Yajnesh charging from that gully point region, but couldn't manage to stop the single from these two batter. With that single scoreboard moves on to double figure 10 on the board. And in the over number second and last over of the power play is in progress. Short third man back at point, short cover point, short extra cover, and short fine leg, short square leg behind the square, one fielder at short mid wicket. And now that is square leg fielder is going back to deep square leg. The deep fielder from long off coming inside the ring, and different field set here for Pritham, because after seeing his slog sweep shot, they wanted to keep the fielder in the mid wicket, between mid wicket and deep square leg. Dharma changing his angle over the wicket, right arm. Drives powerfully, one for a quick single with that drive, and opportunity for the run out in the strike, non-striker's end. But fielder is trying for the run out in the striker's end, so that both the batters completed single quite easily. With that single score moves on to 11 on the board. The very good live telecast which is in progress here from Mangalore Media. So far, wonderful telecast is in progress of this prestigious Gaurav Trophy 2025 in the memory of, sweet memory of, loving memory of Gaurav Bolar. This time reverse sweep, but fails to defeat the fielder of this short third man region. Sanil picked up a single, will going to retain the strike. One more over, which is consist of 6 runs in this over. So after completion of over number 2, and team Friends Kuttar are there going along nicely with that required run at what they really wanted. It's 12 on the board after completion of over number 2. 4 overs remaining, 24 runs required for the victory. Ball to ball required here. And but you can see that when chasing team has got a great idea which run they are going to chase. So that means I think it will benefit for the chasing team. But unless and until if the fielding team will not going to break this partnership, I think it's so easy for the chasing team to get into the victory. But you can't say anything in cricket. Very, very funny and unpredictable game the cricket is all about. You can't say anything. You can't give the judgment too early. One fall of wickets will change the game.
But so far, I think these two batters did a great job to not to lose the wickets, getting the runs which is what required in each and every over. And Mitesh, the bowler, brought into attack from the commentary box and searching for the breakthrough. After that power play, we can see that so many bodies out there in the deep, one at mid wicket, one long on, long off, and deep cover point, and one fielder down at deep third man. Whitish long off, in fact, the fielder, deep square leg, in fact, and deep fine leg. It's going to be a big one. And misspelled the fielder. The ball will not going to travel to the fence, but they're coming back for the second as well. This is going to be a disaster. 3 valuable runs will going to release the pressure straight away from the batter in this particular over. Mitesh starts with the big wide, and it's not a good start from the point of view of team for point of view of team Red Wings Kunjat Bail. Mitesh, 15 without loss of any wicket. The pressure is off straight away. Round the wicket, right thumb tied to get the ball on the onside edge, and Jalal, the behind the stump, is not good enough to get the ball from his hand. Maybe he's got a bat onto that, Sunil. So wide is umpire is asking for a review for that wide. Wait and see. Well, Mitesh bowls that ball almost around the legs of the batter. It might be confusion there for the umpires that he's got a bat onto that or not. And definitely that ball travelled well within the reach of the batter, but when the bat is coming to that line of the ball, they're very close to that ball, and wait and see whether any reflection from the bat of the batter or not. Wait and see. And cameraman is absolutely doing a great job here. It's a fair delivery. Nothing has happened there, and a fair delivery. I think umpire, this is by, I think so. Is bat okay? He's saying that he's got a bat onto that. Yes, our batter is telling that I got a bat onto that, but umpire is saying nothing has happened, but it's by. So, of course, yes, because one run will going to be a very good enough for some bowl batter will going to get a bonus run if it is a bat what batsman wanted to get. Anyhow, in more next ball outside the line of off stump, looks like it's going to be one more wide. This is not a good bowling there from little master Mitesh. When you need to get some good over, so far he bowls wide deliveries so far. 2-3 wide deliveries and 2-3 extras behind the stumps. Nicely driven in the gap. Pritham make the placement and asking his partner to come back for the second, and they made it quite easily in the end. Good placement there from Pritham. So Pritham is a very quality player. Sometimes what needed for him is to need to spend time a little bit. And once you get your eye in, the batter like Pritham has got a potential of playing a long innings. Again, the ball is missing by the wicketkeeper behind the stump. Again, there is extra run as well. Well, lovely running between the wicket between these two. Warning number 1 has been given for the bowler. And in between both the batters completed valuable 2 runs. Well, umpire decision which is pending is a wide call by umpire, rightly so. Warning number 1 has been given for bowler. 3 valuable runs and 3 valuable runs has covered moves on to 22 on the board. 22 for without any loss. The very, very good going here for Team Friends Kutta. They got all wickets in hand, and only 14 required for the victory. Some tries that one didn't quite time it properly, Pritham, but good enough for him to rotate the strike. This is turning out to be a good over from the point of view of Friends Kutta. We are 3 balls, 11 runs already conceded.
This is going to be a disaster for the team Friends Kutta. A single-handed pick and picked it into the fence for a maximum. Unbelievable. The batter like Sunil, who is only knowing for the rotation of strike, and he hitting the ball like that, it's absolutely unbelievable. Just have a look at the stroke. He's lost his grip over the bat. The left hand, of course, he's lost the grip, and one hand in the right hand. And this is what you call the Rishabh Pant cricketing stroke. And I can play it down to short mid-wicket region for a single. Of course, in international level, we can see that wicket-keeper batter of India, especially in test matches, the way that Rishabh Pant using the technique of hitting the ball in a single hand. And this time, good work done by wicket-keeper, but not good enough to get the result. This is turning out to be a good over from the point of view of team Friends Kutta. They're cruising towards a victory. It's 30 on the board without loss of any wicket. Just 6 needed for the victory. "18 runs came from this over, and how can you save this match? Because half of the runs which is scored in 1 over, 36 which is the target, and a bowler given that 18 runs in 1 hour, then no way any chance here left. I don't think there is any chances left for the team Friends Kutta to back in the game. Just 6 needed for the victory. Yadnesh brought into attack from the Planet Air Travel end. One who bowled the first over for 6 runs. Sunil and Pritham, left and right combination, so far dominating. And 30-run partnership for the first wicket, unbeaten. This time chipped it away, and that's end up the batter Sunil. Half-hearted, checking the stroke in last moment. Once he wanted to go for the big shot, but changing his mind in last moment, tried to push the ball, got a leading edge of the bat, and ball went straight to the hands of mid-wicket. At last a breakthrough for the Red Wings Kunjat Bail, the partnership which is comes to an end. But Sunil absolutely played a very good innings before he's back in the pavilion. He scored a valuable 14 runs to his credit. We are talking about so many big matches to be commenced in this month of December. A new batter in is Santosh, and one more senior most and experienced campaigner. Again played it very nicely by deliberately edging the ball down the third man. They wanted to come back for the second, and they made it comfortable in the end. Of course, he's a perfect example for the youngsters, the way that he is giving everything for his team, and when he was in the ground, and good to see. The age is just a number, and even he was showing his true spirit of the game in every time, and when he was in the field. Again played it gently down to point, and quick single taken, and wicketkeeper misses the ball. One more single taken, the total score into 33 for 1. The gentleman game, why he was saying, and of course I still remember we are the high witness in that UCA trophy, Ulhala Cricket Association organized cricket tournament at Der Lakatte. Again wanted to go for the reverse sweep, and at one stage when they are in a winning moment at one stage, and one decision which is came from umpire and for the LBW, and Bashit is the batter. This time he played it exquisite sweep shot in the timing. Pritham finished the match in a style for his team, and Friends Kutta won this match quite comprehensively. Yes, we are talking about that sportsman spirit shown there by not only Santosh but even all the member players of team Friends Kutta in that UCA trophy, when the Bashit is given out for the leg before wicket, but Bashit saying that I got a bat onto that, but no one has got a clue of having a bat onto that, but only the wicketkeeper and closing fielder has got some chances to hear the bat which is involved, the bat and ball, and they're calling that batter back into
again back into strike, and the Bashid is a man is changing the game afterwards. But everyone appreciated the true spirit shown by SRGT in this in that tournament, UCA Champions Trophy. Even they lost the match, but they won the heart of cricket lovers. Now time to call upon the man of the match award for this match. I think low scoring game is always the bowler's big contribution, and we need to appreciate the effort of the young man once again with the ball, with a magnificent bowling spell of 2 overs, no maiden, 5 runs, and picked up 4 wickets. And once again, Adi of Friends Kuttar will going to receive the man of the match award for his fantastic bowling performance. He will going to receive the man of the match award from our chief guest in our main stage. Will going to present the man of the match award. I request Nazir of Sri Devi Cricketers, please present this man of the match award for Adi of Friends Kuttar for his match-winning bowling performance. We'll take a short break here, and after a short break, it's a time to change in voice, and it's time for Satvik, the one more young, talented great commentator in English, will going to receive the mic for the next match, which is between Planet Air SDC versus Team Rising. Thank you. Yes, thank you, Satish. And good afternoon, everyone, cricket lovers as well as spectators out here at the UCG Cricket Ground, Gaurav Trophy 2025. Now the match is going to be between Planet Air STC Jeppu as well as Team Rising. The 6th match of Gaurav Trophy 2025. It's a day 1 schedule going on of Gaurav Trophy 2025. There's this most prestigious UCG Cricket Ground. Now it's the 6th match going to be held between Planet Air STC as well as Team Rising. The fielders are getting set in the field. Now the batsmen need to enter the field to start the first innings. Request the batsmen of Team Rising, please enter the field. Yes, the 6th match of Gaurav Trophy 2025, the day 1 schedule of local pool is going on. Now the 6th match is between Planet Air SDC as well as Team Rising. The two batsmen have entered the field for the batting attack. Now Shanawaz is to start the proceedings of the first over for Planet Air SDC, coming from the commentary box and passing Pradeep Kothari. For the first time, what a delivery that was, having an extra pace in that delivery. Batsman Jameer just flicked that ball towards the mid-out region, but the fielder Santu could not get hold of that ball. Because of that, the batsman had a meantime to take up that single. But now the scoreboard has started for Team Rising with a single in the first ball. 1 ball completed, second ball in progress. To Javed on the striker's hand. What a delivery that was. The ball was completely rolling down the carpet, but this time batsman at the last moment got a bat with that ball.
Because of that, just a single coming in. This delivery ball did not sail many miles. 2 balls, 2 runs on the scoreboard for Team Rising. Third ball in progress. To Zamir. He tries to flick that towards the mid-wicket region there, but fielder they're given a protection. That's an issue. Just a single coming in this delivery. 3 balls he has bowled. 3 runs has been taken from the batsmen of Team Rising. So the scoreboard is only 3 on the board. Still 3 more balls remaining on the first over of the first innings. 4th ball in progress. And he balls it. What a delivery that was. There was no connection between the bat as well as the ball. The ball was completely went like a razor blade there. Because of that, the ball was not connected with the bat. The scoreboard is freezing. 3 on the scoreboard. 5th ball on progress. And the stamp flicks it into the deep extra cover. The batsmen are running for the second one. And they have got that. 2 runs in this ball. The ball just flicked towards head up over the extra cover region fielder there. Because of that, the batsman could easily take up the second run. After this 5th delivery, the scoreboard is moved on to 5 on the board. Last ball remaining of the power play, first over in the first innings. It's final delivery of the first over. And he ball said, what a delivery that was. Slightly missing the leg stump. I thought the ball was slightly moving towards the left stump, but the last moment turn came that because of that the ball was completely beaten at the last ball of the first over. Nevertheless, a good over coming to an end for Planet 8 SGC. 5 runs on the board, no loss of the wicket for Team Rising. Good start for the team. It's the second over start, and through the proceedings, it's Hanif. He's also named as Achapanur. He's coming from a Planet 8 and passing umpire Sriraj for the first time in the second over for Planet 8 SDC. Was consecutively freezing the scoreboard now. 5 runs on the scoreboard after completion of first over and 2 balls of the second over. No one has come in the previous 2 deliveries. Let's see, 4 more deliveries are remaining of the second over. 3rd ball in progress to Javed. Pardon, it's Amir. 3rd ball and hits it towards the mid-wicket region. Santosh running back towards the ball, but the moment Nawaz Belal picked up the ball and returned the ball towards the bowler. In the meantime, a batsman took up 2 runs. So after this 2 run, the scoreboard moves on to 7 on the board. Completion of So 7 on the scorecard after 3 balls completion. 4th ball in progress to Zamir. And he balls it, special try. What a delivery that was. Absolutely cleaned him up. The first wicket departure for Team Rising. It's Zamir who is going back into the pavilion. What a delivery that was, I say, from Anif, from Banur. Taken up, get rid of the batsman of Team Rising. That's Zamir is walking back into the pavilion. Just 7 runs on the board, and they have got the breakthrough of the first wicket for the team. 4 balls completed, last 2 more to go. It's the 5th ball in progress. It's Imran, the new man, coming into number 3 batsman for Team Rising. 5th ball to Imran, and he balls it. What a delivery that was. Ball was slightly coming inside the wide line from the off stump, but because of that, the ball was completely beaten from the bowler as well. So the scoreboard is still frozen on 7 on the board. Last ball remaining of this second over. And he balls it, flicks that away, chance for catch, and it's safely taken from the feeder there at the extra cover region from Vinod Palad. So the second departure, second breakthrough coming in the second over from the same ball, Hanif.
He has got 2 wickets in the second over for the team. The scoreboard is completely frozen after this completion of 2 overs. In the first over, the scoreboard was 5 on the board. In the second over, Hanif just conceded 2 runs, taking up 2 valuable wickets. What an over he has bowled in the power play second over for Team Planet 8 SDC. Now Shanawaz has brought back into the attack to bowl the third over. After conceding 5 runs in the very first over, he has brought back into the deck. Let's see what his bowling miracles can bring up for the Team Planet 8 in this third over. Coming from commentary box and passing umpire Pradeep Kothari for the first time in the third over to Javed. On the striker's end, tries for the reverse pitch. Appeal for like before. A long appeal and is given. One more departure in the very first ball of the third over. What a ball that was. The bowlers of Planet 8 STC are strictly dominating the team rising, taking up valuable wickets in the preliminary overs. In the second over, Hanif has took 2 wickets. And in the very first ball of the third over, Shanawaz got a breakthrough from the end of the batsman named Zamir. Zaved. So 3 wickets has been departed, 3 tumble down wickets has been gone back into the pavilion for Team Rising. I think they are in a pretty great pressure, I would say, because the batsmen are finding a way to make up the runs in the bowling attack of Planet 8, I'd say. This one ball has been completed, 3 wickets has been fallen down for Team Rising there. Second ball in progress, a new man coming into the batting attack. It's Azhar. For Samad. It's Samad who has brought into the attack for Team Rising. And it's it. Ball is in the air. There's a chance of a catch. And one more wicket has been fallen down. I don't know what the batsmen are doing in the field. They are not getting the way to hit the ball, or they are finding it difficult to get a gap, or I don't know what. The batsmen are looking in pressure for Team Rising. Shanawaz is on a hat-trick in this third over. Is getting, and the wickets of Team Rising are tumbling down like numbers. 4 wicket has been fallen down. The scoreboard is just 7 on the board after completion of 2 balls of the third over. Shanawaz is on a hat-trick now. Planet 8 STC has been having a great bowling attack, I'd say. Hat-trick ball for Shanawaz. Coming for the third time from the commentary box end. It's Azhar Senior, but I think the hat-trick ball has been missed. But nevertheless, no run in this ball as well. 3 consecutive balls he has bowled. 2 wickets has taken. No run considered in the start of the third over. It's a 4th ball in progress. Azhar Senior is on the striker side to face his second delivery of the third over. And he balls it. Tries to play over the covers, but I think the ball was completely down the carpet. Because of that, there was no connection between the bat as well as the ball. So the scoreboard is still freezing on 7 on the board. 4 balls completed. Last 2 balls remaining. 5th ball in progress. 2 on the striker's end. He balls it. Full to delivery. Switch it try. He got an improvisation. Now was lefty running back towards the ball, but I think the batsman was able to take just a single in this delivery. Nevertheless, 5 balls Shanawaz has bowled. Just conceded 1 run in these last 5 deliveries. Now the final ball of the third over is going to ball to the batsman Imran Azhar Jr. I pardon, there are 2 Azhar batting on for Team Rising there on the field. Yes, final ball of the third over. Completion of 3 overs. Score moves on to 9 on the board. He has bowled 2 overs. Shanawaz just conceded 7 runs. What an over from the bowlers of Planet 8 STC. Still 3 more overs are remaining for Team Rising. They could buck up and they could catch up the score. In the meantime, in the last remaining 3 overs. Yes, the new bowler brought into the attack, jersey number 08. It's Vinod Pollard. Coming from the Planet 8 end, passing umpire Sriraj. To the start, the 4th over proceedings.
It's Azhar Junior on the strikers end and Azhar Senior on the non-strikers end. Vinod coming for the first time. And the ball said, what a delivery that was. The batsman tried to play it towards the gully point region, but the fielder there given a pressure there. Just a single coming in this delivery. First ball completed of the fourth over. With this first ball, single run added to the scoreboard. The score moves on to 10 on the board. Now the double digit is coming into action. And it's it straight down to the ground. I think the fielder running towards the ball. Nishan, the big man, giving a great backup for that ball. So the batsman was able to take just a single run in this delivery. So 2 balls completed, 2 runs added, 11 runs on the scoreboard. Third ball in progress to Azhar Junior on the striker's end. What a delivery that was, an absolute incoming delivery. A sharp turn at the last moment. The batsman was misjudged with this delivery, so no connection was shown within the bat as well as the ball. This ball was completely beaten by the batsman. 3 balls completed, 2 runs has been added, 11 on the scoreboard. Last 3 balls remaining up the fourth over. Fourth ball in progress. He was set, tries to play the switch again to the gully point, but missed it completely. Yet again, the bowlers are building a pressure on the batsman, not making them to take any runs with their ball. Strictly dominating the batsmen of team Rising now. 4 balls completed. 5th ball in progress. What a slower incoming delivery, and it's gone. It was a slower turn coming at the last moment. It was a lacquered delivery. Because of that, the batsman completely missed that delivery. And there was no connection between the bat. The ball was completely right on the mid stump. Because of that, like before, wicket was given from the umpire. One more departure back into the pavilion for Team Rising. 5 balls completed of the fourth over. Last ball remaining. Score is just 11 on the board. Now the scoreboard is completely frozen now. In the previous 3 deliveries, Vinod Bolar has ball now. So final delivery remaining of the fourth over. The new man coming in to the batting attack. It's Hafiz for Team Rising. Final delivery. What a ball that was. Tried to play the switch hit, but I think not a good shot. He has conceded. Single coming in the final delivery of the fourth over. 4 overs completed. Score is just 12 on the board. Yes, the new man brought into the attack, jersey number 44, lefty Nawaz from the Planet Air STC to ball the 5th over, coming from the committee box end for the first time. He ball said, the batsman got a hit and he's gone. The shot was a really good one, but the shot was not having so much power in that. Because of that, ball did not sail many miles, just sailed it towards the hand of the fielder in the mid-wicket region there. Because of that, the batsman got a wicket for the team. Nevertheless, the bowlers of Team Planet Air XTC are strictly dominating the batsmen of Team Rising, not making them to take up any easy run with their ball. The score is just 12 on the board. And this is the 5th over starting. 2nd ball in progress. Team Rising are looking in very deep trouble now. They need to buck up. They need to hit some big shots to bring back their game. And this time at the wicket, I think. But fielder there, Hanif, has dropped that catch now. It was a chance of a catch for the man. As well as Nawaz lefty would have an hat-trick chance if Hanif would have took that catch. But I think Hanif missed that completely. Nevertheless, the batsman now got ample of time to take up a 2 easy run. With this 2 run scoreboard moves on to 14 on the board. What an incoming delivery that was. A good shot chosen by the batsman. Just flicked it away towards the covers region. Protection given. Just a single coming in this delivery. 3 balls completed. 15 on the scorecard. Last 3 balls remaining of the 5th over. 4th ball in progress. And it was having an extra pace, but ball just drifted out the ball outside the offside line. Umpire stretches his arm, given a wide. 1 more addition to the scorecard. Scoreboard moves on to 16 on the board. Still 4th ball in progress. And what an incoming delivery. At the last moment, turn coming
I think umpire stretches his arm, given up the wide. And it's one wide. Third umpire given. Let's see what the third umpire calls it as. Either it would be a fair or it would be unfair delivery. Let's see. It's a wide. It's a wide given from the third umpire. One more addition to the scorecard. Two consecutive wide ball by lefty Nawaz now. Two gifted runs given to our team Rising, where they were in deep trouble. Now the runs are given in the form of wide there. So 17 on the scorecard. Yet again, Nawaz is bowling in a great pace there, but the batsman was not made any connection in this delivery. 4 balls completed, 17 on the scorecard. 5th ball in progress. So what a delivery that was. No connection between the bat as well as the ball. By signal by the umpire. Single one taken in this delivery. 5 balls completed. Score has now increased up to 18 runs on the board. It's the final delivery of the 5th over of the first innings. Lefty Nawaz coming from the commentary box end. Sharp incoming delivery. There was a chance of a run out on the non-striker's end, but nevertheless they left the batsman to take up the single one. Left by signal by the umpire. Completion of 5 overs. Score is just 19 on the board. Strictly dominance shown by the team Planet 8 STC in the bowling department. So the final over is remaining of the first innings. I request the players of Reliance Katipalla as well as Durga Kunchari to please come to the commentary box to sign the official chart for the next match to be played. It's Vinod Pollard who is brought back into the deck. One more strictly dominant player in the bowling side as well as on the batting side. He's a complete all-rounder for the team. With this delivery and just a single coming in this ball. Batsman just flicked that ball towards the mid-off region. And now the scoreboard has reached up the mark of 20 for Team Rising after completion of first delivery and the final over. Second ball in progress. Tries to hit into a massive one, but missed it completely. It's beaten. Second ball has been beaten from the batsman. Third ball in progress. Jersey number 17. And he balls it. Sharp turn at the last moment. Leg by signal by the umpire. The runs are coming in just in singles and doubles, not a big shot. In this first innings, I'd say this is the final 3 balls remaining of the first innings. Now the scoreboard has moved on to 21. This time, hits it, but straight to the hands of the feeder on the mid region. That's Nishan, who has taken that catch. Safe for hands on the long arm region for Planet 8 STC. One more departure back into the pavilion for Team Rising. 4 balls has been completed. Last 2 balls remaining. Score is just 21 runs on the board for the team. In the 6 over format, I'd say this is a average score from the team. Last 2 balls remaining of the first innings. 5th ball in progress. The new man coming into the batting attack, it's Mohammad Afif, having an interesting jersey number as 99 on his back. 5th ball in progress. Left-handed batsman brought into the attack for Team Rising at the last moment. 5th ball of the final over. We know coming from the Planet 8 end, passing umpire Shuraj, coming right arm over to the man. And what a delivery that was. The scoreboard is yet freezing now. Last ball remaining of the first innings. Just 21 runs on the scoreboard. They have lost a number of wickets in the preliminary overs they have bowled. And it tries to slog sweep that towards the backward point region, but missed it completely. Nevertheless, a single run taken in the final delivery. Scoreboard is 22 on the board. So the target kept for Planet 8 STC to chase up in 6 overs are 23 runs.
Team Rising have lost the 7 wickets in the first innings, setting up a target for the team Planet Air STC as 23 to take up in 6 overs. And now it's time to change the boys in the commentary box and handing over the mic to our experienced Hindi commentator, Mr. Gopi. Over to you, sir. धन्यवाद सात्विक। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगले मैच का रिलायंस काटीपड़ला का मुकाबला यहां पर होगा दुर्गा कुंचाड़ी के साथ। और इसलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। तो सात्विक को एक बार फिर से धन्यवाद अर्पित करते हुए एक बार फिर से हम इस मैच के आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 रनों का लक्ष्य इस वक्त प्लैनेट एयर एसटीसी के सामने इस वक्त रखा है। टीम राइसिंग ने, और इस वक्त उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई एज यूजुअल दोनों आरंभिक बल्लेबाज नवाज लेफ्टी और अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त मौजूद। अंडरआर्म क्रिकेट के विध्वंसक बल्लेबाजों में से ये दोनों बल्लेबाज जाने जाते हैं। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए टीम राइजिंग की ओर से जकरिया, और निश्चित रूप से 23 रनों के लक्ष्य के अंदर प्लैनेट एयर एसटीसी के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप को अगर रोक कर रखना है तो यहाँ पर एक चमत्कारी गेंदबाजी करने की टीम राइजिंग के गेंदबाजों का। और उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त गेंदबाज जकरिया गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नवाज लेफ्टी जो कि सामना करने के लिए तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। फर्स्ट बॉल लेग स्टंप से बाहर, और इस बीच वाइड का इशारा। स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट। और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। और जकरिया अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। नवाज लेफ्टी इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर, इस बार भी वाइड का इशारा। तो लगातार 2 वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं जकरिया अपनी सही लेंथ और लाइन को यहां पर तलाशते हुए। He just searching for his right length and line, bowled 2 consecutive wides by the bowler जकरिया। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ अराउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया नवाज ने। गेंद पहुंचे इस वक्त डीप मिड विकेट पर, काफी लंबा दौड़ लगाते हैं वाइडिश लगॉन के फील्डर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता सिर्फ एक मात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। ऐसा कहना पड़ेगा, ऑन साइड पर उछालना चाहता नवाज ने, ठीक तरह से उछाल नहीं पाए, लेकिन एक रन जरूर मिला। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर। अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त सामना करते हुए जकरिया की गेंदों का। और जकरिया इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद, अल्ताफ ने गेंद को हल्के से ढकेला, ठीक तरह से ढकेल नहीं पाई। इसको इनसाइड एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। रन लेना चाहा लेकिन नवाज लेफ्टी ने उन्हें वापस भेजा और फॉलो थ्रू में तेजी के साथ गेंद पर लपकते हुए फील्डर गेंद को फील्ड करने में सफल। शॉट मिड विकेट पर स्वयं गेंदबाज, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। जकरिया फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। अगली गेंद, यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड। एक्स्ट्रा क्विकर फ्रॉम द बॉलर, परफेक्ट इनकट डिलीवरी।
और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड कर लिया गया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 3 रन बिना किसी नुकसान के। और जकरिया अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। अल्ताफ वॉलपाड़ी जो कि इस वक्त सामना करते हुए जकरिया की गेंदों का। धीमी गेंद, धीमी लेग कटर गेंद, हल्के से गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए गेंद को टैप कर दिया। इस वक्त पॉइंट पर 1 रन के साथ अपना छोड़ बदलते हुए इस बीच अल्ताफ वॉलपाड़ी और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 4 रनों पर। 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इस बीच जकरिया अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। नवाज लेफ्टी सामना करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, मत स्ट्रेट लाइन और गेंद को उछालना चाहे। और पहले 2 लगातार वाइड फेंकने के बाद अपने सही लय रिदम को प्राप्त कर चुके इस वक्त जकरिया। उसके बाद 5 बेहतरीन गेंद इस वक्त फेंकने में सफल। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज जकरिया इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, लेग स्टंप से बाहर। और इस बीच वाइड का इशारा। एक बार फिर से दिशा से भटकती हुई गेंद दोनों ने फेंकी। जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड द लास्ट मोमेंट। और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज जकरिया गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त तैयार नवाज लेफ्टी के लिए। यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ा, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और 5 रन इस ओवर में सिर्फ जकरिया ने प्रदान किया। सिर्फ 3 रन हालांकि वाइड के रूप में इस ओवर में उन्होंने प्रदान किया, लेकिन इसके अलावा बल्ले से यानी बैट से सिर्फ 2 रन प्रदान किए 6 गेंदों में। और एक बेहतर ओवर कहना पड़ेगा जकरिया का यहाँ पर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बन चुके इस वक्त। प्लेनेट एयर एसटीसी जप्पू इस वक्त जोड़ चुका है। अगर 23 से 5 घटा दिया जाए तो 18 रन और बनाने हैं बचे हुए 5 ओवर में, यानी 30 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट एक्जैक्टली 3.60 रन पर ओवर। And just talking about the good next match, one more good match is now coming up right after this match between Reliance Kadipala versus Durga Kunchadi. And because of that, I request once again all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो गेंदबाज प्लैनेट एयर ट्रैवल इनकी ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए अजहर सीनियर। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ अल्ताफ वॉलपाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और अजहर सीनियर फर्स्ट बॉल कम्स। ये गेंद अल्ताफ ने गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। पहली चेतावनी, फर्स्ट वार्निंग गिवन टू बॉलर बाय द अंपायर श्रीरज to entering into the danger zone after bowling a delivery. और स्कोर इस वक्त 5 रनों पर रुक चुका है। और इस बीच अजहर सीनियर अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अल्ताफ वॉलपाड़ी के लिए अगली गेंद। यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, सर्टेनली पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। बेहतर गेंद थी और गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए अल्ताफ। और गेंद को गेंदबाज ने अपने आगे की ओर आते हुए फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया। रन सब बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हैं टीम राइजिंग के गेंदबाज। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज अजहर सीनियर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद। यह गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया, शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड, टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच अजहर सीनियर अब गेंदबाजी करके बल्लेबाज नवाज लेफ्टी को, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और अगली गेंद अजहर की नवाज के लिए। रिवर्स शॉट खेलना चाहा इस वक्त, बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन। And the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. तो इस बीच एक सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अजहर सीनियर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद हल्के से गेंद को खेलना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में आफ्टर फर्स्ट पॉइंट गेंद को खेल दिया। रन इस बीच नहीं मिला। तो ऐसा कहना पड़ेगा अब तक अल्ताफ वॉलपाड़ी और नवाज लेफ्टी ये दोनों आक्रामक बल्लेबाजों को बांध कर रखने में 100% अब तक यश प्राप्त कर चुके हैं टीम राइजिंग के
गेंदबाज जिन्होंने अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की है। और इस बीच अगली गेंद, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर चुके, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर 22 के रूप में, 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों के। सो वन मोर फैंटास्टिक ओवर इन Team Rising's point of view came to an end. 2 overs completed, and after 2 overs, just 7 runs they managed to score. Yet to the wicket for Planet Air STC. और नवाज लेफ्टी और अल्ताफ वालपाड़ी जैसे आक्रामक बल्लेबाज को 2 पावर प्ले ओवर में रोक कर रखना कुछ मामूली बात नहीं। और यहाँ पर जिस तरीके से गेंदबाजी पहले 2 पावर प्ले ओवर में गेंदबाज जकरिया और अजहर सीनियर ने की है, काबिल तारीफ है। हालांकि 7 रनों में 4 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त पे वो प्रदान कर चुके हैं। इसके अलावा सिर्फ 3 रन बल्ला यानी बैट से वो प्रदान करने में सफल पहले 2 पावर प्ले ओवर में। और निश्चित रूप से ये एक बेहतरीन गेंदबाजी कही जाएगी इन 2 पावर प्ले ओवर्स में जो गेंदबाज जकरिया और अजहर सीनियर ने की है। तो तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, अजहर जूनियर इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए और 16 रन और चाहिए और गेंदें बाकी हैं 24। 24 balls left, 16 runs to get required run rate exactly 4 runs per over। और इस बीच अजहर जूनियर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, नवाज लेफ्टी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और इस बीच अजहर जूनियर ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज नवाज लेफ्टी इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में इस वक्त मौका जरूर था। दैट वाज अ शार्प चांस इन द लास्ट मोमेंट, ही गॉट अ हैंड आउट टू दैट बट द बॉल वाज फ्लिक्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स। और निश्चित रूप से मुश्किल सा मौका जरूर और कॉट एंड बोल्ड। जब आप गेंदबाजी करने के बाद तुरंत गेंद को लपकने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ऐसा प्रयत्न करना उतना आसान नहीं है फॉलो थ्रू में, लेकिन यहाँ पर जीतोड़ कोशिश जरूर की थी और लेकिन अंतिम कार गेंद को लपक नहीं पाए फॉलो थ्रू में और 1 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। 8 ऑन द बोर्ड एंड थर्ड ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो इन देयर इनिंग्स। और अजहर जूनियर इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त सामना करते हुए, अजहर जूनियर की गेंदों का बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद धीमी गेंद, हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद और नो बॉल का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर श्रीरज द्वारा। तो शायद एक खिलाड़ी ज्यादा इस वक्त मौजूद और सल्के के बाहर। तो जहां तक सवाल है इस वक्त नो बॉल और फ्री हिट इस वक्त घोषित किया गया है और 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे एक्स्ट्राज यानी अतिरिक्त के रूप में। फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए और देखना है कि बल्लेबाज नवाज लेफ्टी जो है इस फ्री हिट गेंद का किस तरह फायदा उठाते हैं। अजहर जूनियर जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, नॉट सक्सीडेड, फ्लाइटेड डिलीवरी और गेंद को स्ट्रोक्स खेलने में चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। तो इस बीच अजहर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है नवाज ने, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर शायद फील्डर मौजूद है वहां पर और शायद वहां पर मौका था लेकिन इस मौके को गंवा चुके हैं। तो जिस तरीके से रिएक्शन इस वक्त देखा गया गेंदबाज का, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर मौका था और आसान सा मौका। देखिए यहां पर किस तरीके से इस कैच को गंवाया था लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं, 11 रन बन चुके हैं और अजहर जूनियर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अल्ताफ वालपाड़ी के लिए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट। अगली गेंद धीमी गेंद, हल्के से गेंद को इस वक्त पुश करना चाहा, ऑफ साइड पर गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा इनसाइड एज लगने के बाद गेंद गई ऑन साइड पर मिड ऑन पर 1 रन का इजाफा। Durga Kunchari, after won the toss, they elected to field first against Reliance Katipalla in the next match. And I request the both teams players to please get ready for the next match. और
अजहर जूनियर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट नवाज के लिए। इस बार नवाज ने गेंद को कनेक्ट किया है और गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। सो एट लास्ट ही जस्ट ब्रेक द शैकल्स। बंधनों को तोड़ने में इस वक्त सफल। काफी देर से कोशिश कर रहे थे नवाज लेफ्टी करारा प्रहार लगाने का और यहां पर देखिए किस तरीके से स्ट्रोक लगाया था रिवर्स शॉट के जरिए। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लेफ्ट दैट वन इन अ स्टाइल ओवर डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फेंस फॉर अ मैक्सिमम 18 ऑन द बोर्ड। नाउ 5 टू गेट फॉर विक्ट्री। और अजहर अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप पर आते हुए गेंद शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा। वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स और सिर्फ 4 रन और चाहिए विजय के लिए। यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद। ओवर की समाप्ति। So 3 overs completed and after completion of 3 overs they are looking in a commanding situation. Planet Air STC Jeppu managed to score 19 runs on the board yet to lose any wicket after completion of 3 overs. Now just 4 to get in remaining 18 overs. That means in remaining 3 overs. और 4 रन और चाहिए बचे हुए 18 गेंदे यानी 3 ओवर में। और इस बीच देखते हैं चौथा ओवर कौन से गेंदबाज यहाँ पर शुरू करने जाते हैं। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट गौरव ट्रॉफी 2025-2025 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है प्लैनेट एयर जप्पू फ्रेंड्स मैंगलोर ने। गौरव बोलार इनके मधुर याद में इन लविंग मेमोरी ऑफ लेट गौरव बोलार। और इस बीच चौथा ओवर शुरू होता हुआ पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद थी। इस वक्त गेंद को छोड़ दिया अंतिम क्षण में अल्ताफ ने लेकिन अंपायर से कोई भी इशारा नहीं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड। और फिर से एक बार गेंदबाज शरीफ गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार उछालना चाह नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 विदाउट लॉस 3 टू गेट फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 16 डिलीवरीज। और ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकता ही इस मैच में बाकी रह गई है अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे इन बचे हुए 17 गेंदों में, इन बचे हुए 16 गेंदों में कहना पड़ेगा। और शरीफ इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार नवाज के लिए। यह गेंद नवाज ने गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि इस वक्त लेग स्टंप पर आती हुई गेंद स्टोक्स खेल नहीं पाए और गेंद सीधा पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और अगली गेंद लेकर शरीफ गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। Just missing outside the leg stump at the last moment. Just wanted to work it away on the onside after covering the stumps, not succeeded. और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और अगली गेंद लेकर गेंदबाज शरीफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया कलाइयों के सहारे डीप मिड विकेट पर। लेकिन बल्लेबाज कुछ खास दिलचस्पी इस वक्त नहीं दिखाते हुए दूसरे रन के लिए सिर्फ एकमात्र रन पूर्ण करते हुए और 1 रन के साथ प्लैनेट एयर एसटीसी जयपुर विजय के और निकट होता हुआ। It's 21 without loss. Now just 1 ball left in this over. 4th over in progress in their innings. Just gone for a mighty heave, not succeeded. Dot ball to end the over. 4 overs completed. And after 4 overs, still 2 runs to get for Planet Air STC Jeppu for victory. In remaining 2 overs, that means in remaining 12 deliveries. अजहर सीनियर जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किए थे और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। नवाज लेफ्टी इस वक्त सामना करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज नवाज लेफ्टी के लिए। इस बार फैंटास्टिक डिलीवरी, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग वन। और जितनी तेजी के साथ गेंद को उछालना चाहा उतनी तेजी के साथ गेंद उनके बल्ले को वंचित करते उनके पैरों के बीच से निकल गए विकेट कीपर के हाथों में और रन इस बीच गेंदबाज को नहीं मिला।
एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी इस वक्त अजहर सीनियर की। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार अजहर सीनियर, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, डिफ्लेक्ट होती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची। एक रन का इजाफा और इस एक रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल, जस्ट अ सिंगल रन दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 10 बॉल्स। और अल्ताफ वालपाड़ी जो कि स्ट्राइक पर आ चुके हैं, और शरीफ माफ कीजिए अजहर सीनियर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। लगभग सारे खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त मौजूद। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल चुकी है और गेंद सीमा रेखा को टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस बाई के रूप में चौके के साथ यह मैच प्लैनेट एयर एसटीसी जयपुर जीत चुका है 10 विकेटों से 9 गेंदें बाकी रखते हुए। और इस विजय के साथ इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है टीम राइजिंग के खिलाफ विजय दर्ज करने के बाद। अब मैच नंबर 5 समाप्त हो चुका है। मैच नंबर 6 यहां पर खेला जाएगा रिलायंस का टिपल्ला और श्री दुर्गा कुंचाड़ी के बीच, और मैच यहां पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद। So man of the match of this match award goes to the bowler who bowled brilliantly, conceded just 7 runs in his 2 overs squad and got 2 wickets. 2 overs no maiden, 7 runs and 2 wickets. And because of this fantastic spell, Shah Nawaz of Planet Air STC Jeppu adjudged man of the match. I request Shah Nawaz please go to the stage and receive the man of the match award from Mr. Ratan Jeppu. I request Mr. Ratan Jeppu to please distribute the man of the match award for Shah Nawaz for his fantastic bowling performance. 2 overs no maiden, 7 runs and 2 wickets. So that's all for the match number 5, and match number 6 is now going to start between Reliance Tirupalla versus Durga Kunchadi. One more good match is now coming up. और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर मैच नंबर 6 शुरू होगा। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। धन्यवाद, थैंक यू।
So thank you very much, Gopi. Welcome to the one more big match will going to commence between team Reliance Katipalla versus team Durga Konchadi. So winning the toss, selected to field first, team Durga Konchadi, now playing against the champions of ZBB Trophy, and which is recently finished here in UCG Cricket Ground after the 40 years wait, which is ended for Reliance Katipalla, as they lifted the prestigious ZBB Trophy and is really written the new history in UCG Cricket Ground. And signal came from umpire Sriraj, and wait and see how well Reliance Katipalla will going to start their journey in this Gaurav Trophy 2025, which is proudly presented by team Jeppu friends and in the sweet and loving memory of Gaurav Bolar. All set now for the first over of the power play. The successful opening pair for Reliance Katipalla, Arif and Azhar, left and right combination straight away. The team which is Arif and Azhar, who did a great job in the previous tournament, are now came into bat. First ball driven, Arafat, correction, it's not Arif, it's Arafat. Is the batter, he's got his first run from the bat, he's up the mark, and first run and one without loss of any wicket. Arafat is off the strike, that brings Azhar into strike now. The man is got a man of the series in that ZBB Trophy with this excellent batting performance in throughout the tournament as a left-hand batter, and still the picture is in front of all cricket lovers, the way they battled, especially in the mega final, defeated young friends Surwa. This time chipped it away. Ah, what a catch! Magnificently taken there by the big man. Sumit is a tall man down at extra cover, but the way that is the maintaining his body balance been outstanding. And just have a look at the replay. Azhar chipped it away in the air, and have a look at the fielder there. Absolutely good one, good take, isn't it? And this is the perfect way to maintain your body balance after you are diving to his right, means you are almost need to light your body, not hit the ground pretty hard. This is a perfect technique from the fielder as far as the diving is concerned, not hit the ground pretty hard. And this almost we can say that the gymnastic work from the fielder. So Azhar departs in the golden duck. The man who got a man of the series in this particular match is out for duck. The hero of the previous tournament is out for zero in this the match. So new batter in is successful captain of the side, and Zunaid will going to face his first delivery. Wanted to go for the drive outside the line of off-time. Kevin has been outstanding in the previous match as well when he bowled excellent over for team Durga Konchadi against Jaguar Kudrodi in their opening match. He just continues that confidence here as well. Again, lovely delivery. Last moment, the ball is got a bounce, uneven bounce outside the line of off time till the ball is coming into the bat, going out of the reach of the batter. It's all on the carpet when the batter is trying for the stroke. Ball misses the bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Again, far outside the line of off time. Kevin just again wanted to get that same line which is outside the line of off time, but this time he fails to get that right line, and wide call by umpire. 2 for 1. Zunaid loved it. Eye up in there. Opportunity, I think, is taken. What a catch. Looks like after seeing the celebration, the same man who taken a wonderful catch by diving to his right hand, the same Sunit is taken one more very good catch in the deep. Just have a look at it. Everyone thought it might be a 6. The way that Zunaid lofted that one almost straight down the ground, and have a look at the fielder there. Oh, this has been outstanding. The fantastic catch has been taken, and maybe some question raised by the batter about the catch, so that umpire definitely will go for the third umpire to see. Just have a look at that, the fielder there, almost taken a very good jump, and he just
holding that the body balance has been outstanding. Just wanted to see that one more time where is the back foot which is landed, and I think it's just inside the boundary line, and it's a fair catch. The batsman is gone, and the out call from third umpire. So one more, the wicket is back in the pavilion. What an outstanding start here for Durga Konchadi. The straight away the champions of the SZBB trophy are looking in trouble. It's 2 for 2 now. The captain departs and without contributing from the bat. And 2 ducks straight away in the innings of the team. Reliance Katipalla are looking in more trouble. The new batter in with the red cap. And the red cap is always a sign of danger. And he is a danger man. Wait and see how well these two batters will going to rebuild the innings here for the team. The very important for these two batters to take a time to get some partnership, and the batter Arif, I think, is the one who's got a fantastic tournament from the bat in the previous match as an impact player for the side. Here comes the next ball outside the line of off stump, and yes, they went for a single and over number 2, which is first is comes in, and it's 3 for 2. Three for 2 after completion of first over. Over number second will going to start from the Planet Air Travel end. It looks like Daivik, the man who got very good performance in the previous match with the ball, is in action now. Again, played it nicely into the mid wicket, little correction long on, which is a wide-ish, and the busy customer in the deep, and Sumit once again is in the picture.
and fields the ball. Ample time for the batter to complete the single with the single score, but moves on to 4 for 2. And team Reliance Katipala trying to get that partnership what they badly required from the early damage in the first over picked up, but this time a lovely stop there from Daivik on his follow through, using his feet to stop the speed of the stroke, which is powerfully driven back by the batter Arafat in that occasion. And these two batters have to need to play sensibly now. The big A's in the pack, Arif and Arafat. Two big A's in the pack for team Reliance Katipala. Daivik bowls, reverse sweep comes into play, played it in the gap, the chase here for one of the fielder. But a very good movement there from the fielder, quickly moving to his right. And the fielder from the short fine leg region, almost moving towards the third man region for the single. With that single score, moves on to 6 on the board for the loss of 2 wickets in the over number second in progress. Daivik Prabhu. This time again, the ball deflected from the legs and both the batters got opportunity to go for a single leg by call by umpire. Again, the overcuts condition which is continuous here in UCG cricket ground. Even though I think the condition is not good enough. And again the bowler will going to continue from the far end. Right arm over the wicket balls. Oh, what an delivery, beautifully bowled. Daivik, what he did in the previous match is the same that delivery. We can see that very simple bowling action, but you see that he's been really tested the temperament of the batters in the previous match also with this unique that bowling action. It's a slower one, very slower one ball, but it's coming along the carpet. At the moment of the batter going for the drive, the ball is getting extra movement, extra deviation in the delivery. That was really made the batsman very much confused. Excellent one there from Daivik. It's 7 for 3, and the team Reliance Katipala are looking in deep trouble now. So new batter in, coming to the middle for team Reliance Katipala. And Durga Konjadi so far the very good toss to win, exploiting that overcast condition by both the opening bowlers for the side. And jersey number 45, it's not Rohit Sharma, is jersey number, very popular jersey number. Balled him, cleaned him up, and wicket number 4 is back in the pavilion. Daivik once again producing a ripper. What an delivery there from Daivik. Excellent one. The batter has got no clue whatsoever. Iqbal, just have a look at the delivery. Deflected from the leg and ball hits a stump. Deflected to his boot, in fact, the back foot. And then ball is hitting the off stump of the batter. For the bowled out, they wanted to go for the third umpire to watch what's really happened, because the batter is absolutely surprised with that bowled out. He thought the ball misses the stump, but just have a look at the delivery from Daivik Prabhu. And once again Daivik producing, and this is a ball is coming after 2-3 top. Then it looks like umpire Pradeep Kothari, it's a bowled out, no way the batter to survive. That's a third umpire decision, and maybe there has got a question about whether wicketkeeper has got hit the stumps, but of course there's a huge gap between wicketkeeper and the stumps, so that the ball hits the stump. Wicket number 4 gone. It's 7 for 4. Reliance Katipala are looks like they are in deep trouble now. One partnership which is badly required after that disappointment beginning from top order batters of Reliance Katipala. 7 for 4 after completion of over number 2. This is the what we are talking about, the beauty of the cricket, all about
every day is not a Sunday, the famous slogan of cricket. And even though if one Sunday belongs to you, it's not like that that Sunday is same for you. But taking your level of confidence, what you got in the previous tournament, you have to take that level of confidence when you're going for the next tournaments. The confidence and overconfidence, a big difference in these two words. Of course, you are a champion in the previous tournament, and that's not like that. You have to be a very confident. Overconfidence, it's different, and confidence is absolutely a different word. And team is struggling in the middle. 8 for 3, full toss, low full toss, and opportunity. Almost wicket number 5 in the form of run out if Smith managed to collect the ball on his follow through. So 9 for 4. The match which is just begins. I'm not saying the match is over. Still Reliance Katipala has got opportunity to bounce back here. Oh, that was a ripper. Again, there from Sumit there. One of the most turned delivery of the day, I want to tell you. The leg cutter. Pitching in the leg stump and almost leaving the 4th or 5th stump of the batter in the offside. Unplayable leg cutter from Sumit. If we're going to produce that replay of this delivery, after this delivery, I just want to see that because beautifully bowled. This time switch it comes into play. Played it in the gap, but the fielder is there in the deep. They wanted to come back for the second, and they made it quite easily in the end. Sometimes we have to take such kind of risk. Just I want to see that the delivery which is bowled by Sumit, the leg cutter, it's been outstanding delivery. Unplayable, just like in international level, the master class leg spinner, late Shane Warne, has got a potential of doing such kind of deliveries in international standard. Here comes Sumit. Oh, experiment too much. Looking for the quicker delivery, faster delivery, Sumit, but he misses the line completely. Far outside the line of off stump. He just wanted to surprise the batter with a faster delivery, but he just misses the line completely. 13 very important runs coming in this over so far for the Reliance Katipala. Oh, pick that one right from the middle of the bat. And taken, what a catch! What a call! He drops it. My goodness. I don't know why he's released the ball. He's almost complete control that catch. If you see that, he's almost in the control. But I don't know why he's released the ball. Maybe he's avoid the boundary, but he's absolutely in control. He can continue this running with this holding the ball in his hand. Have a look at that one. Of course, he's very close to the wall. So he released the ball, but his partner couldn't manage to complete the catch. The combination catch. It's become a popular in present cricket. Oh, lovely delivery. Equally well played. Equally well batted there by the batter Taufik in the dedication, showing the full face of the bat. Technically, the good one. The good over from the point of Reliance Katipala. They got the runs what they really wanted to back in the game. It's 15 for 4. 16 for 4, lip correction, after completion of over number 3. Reliance Katipala, they're also got some very good bowling department in the side. It's not like that if Dirga Goganjadi will going to restrict them for less than 30, it cannot be an easy game for them as well. But seeing that their bowling department of what Reliance Katipala has got, just remember that final against when they played against Young Friends who won a ZBB trophy, when the target which is set, I think 30 plus runs. And out of 30 runs, 19 runs which is extras. And one Young Friends who only managed to score 12 to 15 runs from the bat. And therefore 45 runs, 44 which is a target set by Young Friends Surua. And after that remains which is the history. And way that they chase those runs has been outstanding. Here comes the first ball.
Played it straight to the answer field. A chance of run out, and looks like is not safe or safe. Let's wait and see. Umpire goes upstairs, and umpire Roland Pinto, and wait and see. Just have a look at it. Just place the ball straight to the answer fielder. In comes the throw from the fielder, and the bowler absolutely did a great job to make that run out very quickly. And I have to see that at that time. It's a good trick to see that the batter Arif is dragging his bat. Tawfiq, correction. Tawfiq is the one is dragging his bat. And so important for each and every cricketer that the dragging the bat is very, very important. But here it is absolutely close one. Touch and go. And some different angle. Afghan is absolutely giving you the perfect. And as for the rules and regulation of the cricket is concerned, if the batsman on the line, I think it's not good enough for the batter to save from the run out. You need to have some part of your bat need to cross. His short of his crease is gone. His short of his inches, still have to reach inches, not on the line as well. Is a short of the crease. That's what I just told, that good work done by the quick work done by the bowler. Which sometimes the bowlers are not really able to make the quick work. But here is some quick work, that was quick moving of the hands after collecting the ball. Quick work is so important. So that's what the bowler did here. If it's a little bit, a fraction of second is good enough for the batter to save from that run out. These all of the technical points which comes into play when seeing such kind of run outs. Throw coming from the fielder, quick work by the bowlers and wicket keepers. The very crucial is 16 for 5 now. Reliance Katipalla. Guru Raj, one more very good bowler. Guru Raj. Lofted and neat connection. Unbelievable. One of the biggest stroke of the day, number 1 of the Gaurav Trophy 2025. This is what the muscle power I want to tell you from this man. If you see anything else here in this cricket stroke, is just a muscle power. Just have a look at it. He's just transferring his weight onto the back foot. And this is what you call a stand and delivered. Unbelievable. So 22 for 5. When the under pressure situation of batters playing such a kind of cricketing stroke. Again, bowler's back drive wide outside the line of off time. Batter just try to reach that one, but fails to make any placement right, and back to bowler, not for run. Guru Raj. Again from the Planet Air Travel end. Swings and miss, wicket keeper gathers the ball well, but he cannot stop the wide decision from umpire Roland Pinto. This is all we can see, the pressure for the batter after that. 6:23 on the board. Again wanted to go for the big shot, just some chance of run out in the non-cycles, and Guru Raj's diving attempt to collect the throw from the wicket keeper Jayant, but it's not good enough for him. He just misses the ball. One more addition. And just have a look at the throw from the fielder. It's not so easy for the bowler to collect the throw. One more addition. 24. One more good over for the point of Reliance Katipalla is in progress. This time appeal for leg before wicket. Umpire not interested and is called it's a leg by. And too much turn in the ball. So because of that big off cutter, that ball certainly going to miss the leg stump of the batter. Even the batter is thought it might be all over, because you don't know what really happened after that. The ball is doing too much. And here comes next one. Full toss, lofted, and swings it hard, and he got the distance as well. Catch has been taken, but not from the fielder. Unfortunately, one of the spectator is taken the catch. Oh, look at that man. Absolutely. Is removing his cap as well. Yes, he's exactly the cameraman covering him. And what a great movement in that occasion. 2 sixes in this over.
and brought Reliance Katipala strongly into this game. Just have a look at the stroke here. Full toss, and the batter lofted that one. Arafat, and have a look at the catch. How easily taken there, but definitely he is a former cricketer. One who taken the catch. And certainly is a cricketer because the way that I easily taken the catch in that spectators gallery. It's a 31 on the board for the loss of a 5 wicket. What an outstanding comeback. Afnan, Arafat are looking in. This time, flum, absolutely flum. This time he cannot survive. This is a beautiful Yorker line delivery coming from the hands of Sumit. The batter who is standing, Afnan, well across the line. Just have a look at his back leg is right in front of me. Now, initial movement of the batter shuffled a little bit before the delivers, and his front foot is right in front of midland leg stump. Great camera work as well from the cameraman and even the technicians out here in our commentary box is getting that fantastic replay and a great idea of why the batter is flum in front of wicket. 31 for loss of 6 wicket. The new batter in is one more big ace in the pack. Anish walks towards the middle. Lot of ace in the packs in that Reliance cut. Oh, beautiful off cutter, but in fact a little bit, I think it's outside the line of off stump, slight a bit, and that's why this time again that ball is coming into the batter. Beautiful off cutter, but when you're having an extra turn in the ball, it's very difficult for umpire to judge. And good change of line, good change of line. And outside the line of leg stump, quite deliberately ball, leg by call by umpire, seeing the batter is committed himself for the switch it. This time reverse sweep, played it, and he got a bat onto that in the last moment. No bat, leg by call by umpire again. The impact which is outside the line of off stump, and one more addition with the addition of that single scoreboard numbers on to 34 on the board. Arafat is on strike. Again beaten by the leg cutter, big leg cutter there from Sumit again, leg by call by umpire, one more addition. This is the over number 5 in progress, 35, with good score altogether on the board for the loss of 6 wickets. He's searching for the delivery. This has been a fantastic leg cutter again there from Sumit, beautifully bowled. Again the unplayable, that the spot ball, the ball is pitches for the right-hander. It's not easy whether the batsman is going for the back foot or front foot. He no idea whatsoever. He just wanted to get that one in the front foot, but he's a short fellow, cannot stretch his front foot too much to the line of the ball. But the way that ball is having a deviation, leg cutter, absolutely beauty to watch. One more wicket gone. It's 35 for 7 after completion of over number 5. Last over remaining. This is what the loving faces we can see here in our screen. Those are one of the big fan followers of under-arm cricket, and yes, each and every moment is going to be very, very important here. And just have a look at the delivery, the leg cutter. That was absolutely beauty. He's searching for the ball, isn't it, Anish? He's just searching for the ball, lost his balance, and this is the one the spectators in good numbers today. They came here to witness this first day of prestigious cricket tournament in the name of Gaurav Trophy 2025, in the memory of loving memory of late Gaurav Bolar, the one of the active member of team Jeppu friends. Again, reverse sweep which is attempted, played it down to deep cow point region, not more than a single. Oh, good throw came from the fielder, and the new batsman is searching for
searching for a right track and searching for meanwhile correction, one more single added to total. And this, we are talking about that second attempt from the fielder by batter, but it's not good enough for them to come back for the second. One more single. Arafat is the day it belongs to him. What a shot! This is the god of many a miles out of the park. Wonderful, wonderfully struck. Just how easy for this man. What we are talking about, hitting this soft tennis ball out of the park for a long way. It's not so easy job. Just have a look at the bat lift, high bat lift, sings it away, and ball is going and going and gone out of the park a many a miles. Beautiful camera work done by the cameraman as well to catch the ball. Absolutely fantastic here. The 43, this is what the champion team can do here. It's not a one-man army, even though they lost all half of top order batsmen back in the pavilion. This man is standing tall. Outside run of off stump again, missed it completely by wicketkeeper, by call by umpire. At one stage, the team is struggling in the middle. But this man single-handedly, Arafat, takes his team into a very good position. This time, who is going to join the party? I don't think David will going to get that one in the mid-wicket. At one stage, it looks like when the batsman is hoisting it over, Bashit, it looks like it's going to be one more maximum. But the ball which is traveling into the one of the longest distance of the ground in the mid-wicket. As the dimension of this cricket ground is concerned, that ball is almost traveling, and have a look at David. Excellent, excellent catch taken there by David in the deep. And Arafat, one who is batting on 25. What a batting display from Arafat. Umpire is saying that the fielding team exceeds time limits. So one fielder inside the ring, Rahul, one more key player and a good bowler for the side of Lance Katipalla, came into bat here. 45. So this is what the score. Reliance Katipalla, even they are not really dreamed about when their 5 wickets are back in the pavilion. Too early. For 16 they lost 5. Then this man absolutely changing the game, Arafat. And what innings he played here, remains unbeaten. And just remember that jersey number 18, always the special, isn't it? The run machine, Virat Kohli. Always remember this jersey number 18. The inspiration, always the youngsters will going to get after wearing that jersey number 18. And this is what the result you have watched in the middle. When very hard to combine the runs against the disciplined bowling performance by the bowlers of team Durga Konchadi. The one man stands tall in the middle and produced the innings which is much required for his team. So 45 for 8 and 46 which is a target for the team. And in the meantime, change in voice, not change in language. In fact, our one more young talented commentator will going to join here in our commentary box, but more than anything else in the middle it's one more excited spectator which is coming to the middle here. And I request yes Satvik to please come to the commentary box for the further explanation of the match. Thank you. Yes, thank you, Satish. After a great first innings shown by Arafat of team Lance Katipalla, he has brought back strongly the team back into the game. Now the target set up for team Durga Konchadi. It's 46 run to take up in 36 deliveries. Let's see what the bowlers of team Lance Katipalla can hold up in these 6 overs after having a great batting performance shown from
The one and only Arafat of Reliance Katipalla. 46 is the target. Chase up in 36 delivery for the batsmen of team Sri Durga Konchadi. As we have openers for the team, it's Daivik as well as Vinith. Two sensible plays for the team, as well as on the destructive part there was also destructive as well. It's the start of the second innings. We have two deadly batsmen for the team Sri Durga Konchadi. It's Vinith as well as Daivik on the batting attack, and it's Rahul to start the proceedings from the Planet 8 in passing umpire Roland Pinto coming for the first time in the second innings. 46 is the target. Chase up in 36 delivery. First ball to Vinith, the left-handed batsman. The ball coming right arm over the wicket. Great incoming delivery as well, and the ball just tipped out. The fielder just threw out that ball without having knowing the backup was behind, but nevertheless scoreboard has been started for Sri Durga Konchadi. Single run on the board after completion of first delivery of the first over in this power play. It's because of a right hand left combination. The fielders need to set up the field yet again and again for the combination brought by the Sri Durga Konchadi there. So the second ball in progress for the Popley first over. It's Daivik who is facing the second delivery of the first over, and what an incoming delivery there. Absolutely attacking the stumps in this ball. It was completely beaten. Two balls completed, just a single run considered in the previous two deliveries. Third ball in progress. Rahul to ball the third ball. Coming right arm over to Daivik, and it's it. It's going but straight to the hands of the feeder in the mid-wicket region there. What a first departure coming for team Sri Durga Konchadi, as well as good dominance shown from the bowler Rahul. In the first over, third ball, he has backed that wicket of Daivik, the most attractive batsman of team Sri Durga Konchadi. I'd say 3 balls completed, just 1 run conceded, 1 wicket departed. Last 3 more to go. Let's wait and see. It's a new man brought into the tag as a number 3 batsman. It's Giant for Sri Durga Konchadi there. It's jersey number 99. Right-handed batsman into the tag. 4th ball in progress. Rahul coming for the 4th time. Passing umpire Roland Pinto coming from the Planet 8 end to Giant. And he balls it. The ball was coming straight down the carpet. What a feeling shown from the bowler, but I think there was a misthrow. Because of that, the wicket was not fallen there. There was a run-out chance for the bowling team, but the bowler just came in the follow-through towards the hands of the bowler, but the misthrow leaded the batsman to take a single run in this delivery. Nevertheless, 4 balls completed. Score is 2 on the board with a loss of 1 wicket down. Last 2 balls remaining of the very first power play over. After Reliance Katipalla, 5th ball in progress. Vinith on the striker side, jersey number 33. To face the 5th delivery from Rahul. And the ball said, this was a juicy full toss delivery. He would have picked that. It would have sailed miles away, but I think the bowler just missed out his line as well as length. Slowly deviated as well as
released the ball very soon. Because of that, wide was given from the umpire. One more addition to the total. Score moves on to 3 on the board. Fifth ball, and this time he picks it away. I think the ball is sailing, but the fielder there given a prediction. In the meantime, a batsman had ample of time to take up 2 easy runs there. What a shot that was picked up wide from the middle of the bat from batsman like Vinith, but the ball did not sail many miles, just quite inside the boundary line at the square-like region there. Nevertheless, 2 runs has been added to the scorecard. Score moves on to 5 on the board. Last ball remaining of the first power play over. And the ball said tries to play the same shot in the square-like region, but I think a batsman missed it completely. Nevertheless, by signal by the umpire. Good over coming to an end. 1 wicket down. 6 runs conceded from the bowler Rahul. The next match is going to be between United Suratkal as well as United Patur. The number 8 match of Gaurav Trophy 2025. Presented by Planet Air as well as Jeppu friends in loving memory of late Gaurav Bolar. Is coming back to this match. The match is going between Reliance Katipalla as well as the team Sri Durga Kanchari. After completion of first over, score is 6 on the board with a loss of 1 wicket down. Now remaining 30 balls are remaining. That is, we can say 5 overs are remaining. Just 40 more runs required. I'd say a huge run mark to chase up in the last 30 deliveries. 40 runs need to be chased. Some big shots need to be seen in the last remaining 5 overs. New man coming into the bowling attack. It's Iqbal coming for the first time from the commentary box and passing by Sriraj to win it. He balls it, swings it, and I think he's got the gap. He's got the gap in the final region. The ball is just running towards the rope for the boundary 4 runs. Start of the second over. Vinith just picked that ball towards the final region. A very good gap, I would say, and a very good shot he has chosen. Now the equation goes and the score goes 10 on the board after completion of first ball of the second over. Second ball in progress. Vinith on the strikers end. After hitting 1 boundary in the very first ball of the second over. Let's see what his batting tactics bring up. The last remaining 5 deliveries of the second over. Second ball in progress. What a delivery that was. Hits it. Hit through the middle region. Fielder running for the ball. But I think given a prediction there, the batsman had ample of time to take up 2 easy runs. With a couple of runs, the score has been added up to 12 on the board. Completion of 2 balls of the second over. A good shot, I'd say, in a no fielder region there. 2 fielders running back behind the ball to get hold on the ball. But in the meantime, batsman had ample of time to take up 2 easy runs. 12 on the board after completion of 1.2 overs. Third ball in progress. Vinith to face the third delivery. He balls it. Sensibly played, but straight to the hands of the feeder. Given a prediction, just a single coming in this delivery. With this addition of 1 run, score moves on to 13 on the board. Completion of 3 balls of the second over. Still 3 more to go. Fourth ball, Giant to face the fourth delivery. A baller coming Iqbal for the 4th time from the committee box end. Passing umpire Sriraj to Giant in the second over. And the ball said it was quite away from the leg stump. He picks it away, but I think the ball just not sail many miles, just coming inside the outfield. The fielder there, Shreyas, given a prediction at the square leg region. Well in advance, batsman had ample of time to take up the 2 easy runs. With this 2 runs, the scoreboard has moved on to 15 runs on the board. Last 2 balls remaining of the second over. 5th ball in progress. 5th ball, Giant to face the 5th delivery of the second over. Iqbal is slightly making up some changes in the field setup. Shot third man region feeder has brought inside the 30th circle as well as the mid-on feeder has kept on the whitish long on region there. 5th ball in progress. Giant to face the 5th delivery of the second over.
And the ball said to switch it try. I think there was not a good connection there, not a good shot chosen by Giant, but nevertheless they have got a single run with this addition of 1 run. And now the scoreboard has moved on to 16 on the board. Completion of 5 balls of the second over. Well, sensible batting shown from the 2 batsmen of Sri Durga Konchadi. And they are going on. Last ball remaining of the second over. It's a final delivery of the power play over in the second innings. And the ball said, he picks it right from the middle of the bat. Let's see where is going. Ball has been saved from the fielder on the middle longer region there. What a save that was from Rahul. Saved of many runs for the team. Just 2 runs coming at the final delivery of the second over. It's a good save we can see in the replay. Good save with the single-handed save from Rahul, running towards that region and saving that ball was not easy, but this man showed it as very incredible shown from Rahul there. Saved of many runs, 2 runs in the last delivery. After completion of 2 overs, score has moved on to 18 on the board. Now the equation goes umpire call it for the third umpire. It's gone upstates. Let's wait and see what's the call coming from the third umpire for this save. It's saved. Just 2 runs coming in the final delivery of the second over. The score is 18 on the board. Completion of 2 overs. Still 4 more overs remaining. So 24 more balls remaining. 28 more to get for Team Sri Durga Konchadi. As Rahul is a man brought back into the tag for the bowling department of Lance Katipala to bowl the third over proceedings coming from the Planet Air in passing umpire Roland Pinto for the first time to Giant. The young man has shown some very good bowling skills in the first over. Let's see what in the third over brings up. First ball, and he picks up. This was not a good shot, just a slight of mid-edge coming at the last moment because of that. Another departure walking back into the pavilion. It's Giant, the experienced campaigner for Team Sri Durga Konchadi is going back into the pavilion. He thought of hitting that shot towards the slog sweep as well as the square leg region there, but missed out completely at the last moment. A slight bit of top edge coming at the moment. Because of that, the wicket has been fallen for the team. Second wicket departure, walking back into the pavilion. New man coming into the batting attack. It's Santosh. One more experienced campaigner for the team Sri Durga Konchadi. The first ball was a complete breakthrough for the team Sri Durga. A second ball in progress. 2 wickets has been fallen down now. 23 more balls remaining. 28 more to get for the team Sri Durga Konchadi. Second ball in progress. Santosh to face his first ball of his innings. Second ball in progress. Rahul to Santosh. And he balls it. Tries to play that shot towards the final region, but I think the wicketkeeper even missed it. So by signal by the umpire. With this by, single run added to the scorecard. Now the scoreboard has been moved on to 19 runs on the board after completion of 2 balls of the third over. Third ball in progress. It's Vineet yet again. One more sensible batter of the team. Third ball in progress. Vineet, the left-handed batsman on the striker's end. We have for Sri Durga Konchadi. 28 more to get. 27 more to get. Third ball in progress. Vineet to face the third delivery of the third over. Rahul coming for the third time. Right arm over the wicket and picks it well towards the covers. A long run, long chase for the fielder there.
In the meantime, a batsman had ample of time to take up a couple of runs. With this couple of run addition coming to the scorecard, the score moves on to 21 runs on the board. 3 balls has been completed. Last 3 balls remaining of the third over. Vinith is playing very sensibly for the team. He's bringing up runs in singles, doubles, as well as boundaries coming from his bat. One of the most sensible play for the team, Sri Durga Konchade, I'd say. 4th ball completed, single run coming in this delivery. Now the scoreboard has moved on to 22 on the board. Last 2 balls remaining of the third over. 5th ball is in progress. It's the last 2 balls remaining for the completion of 3 overs. 5th ball in progress. Right-handed batsman Santosh on the strikers end. We have Rahul to ball. Coming right arm around the wicket to Santosh. It was a juicy full toss away. But Santosh was looking for the sweep shot. The bowler was slightly above from the reach of the bat. Because of that, there was no connection shown between the bat as well as the ball. It was completely beaten from the batsman. 5 balls has been completed. No runs coming in the previous delivery. Last ball. And tries to hit that towards mid-on vision. But I think it was not a good hit. Slight a bit of bat coming at the last moment. And this good over is coming to an end. 3 overs has been completed. Score is 23 on the board. Now the equation is looking very sensible. I'd say 24 more to get. 23 more to get in the remaining 18 deliveries. Is coming back into the match. 23 more to get in the remaining 18 deliveries. And now we can see there jersey number 10, Shreyas, a young cutter bowler, has brought into the tag in the bowling department for Reliance Katipalla, having a bowling action just like Ashwin Thaman of Torpedoes Khana. Shreyas of Hoigi Bazaar is bowling the 4th over proceedings, coming from the commentary box, and for the first time, it's Santosh on the striker's end. Vinith on the non-striker's end. Setting up the feed for both the batsmen there. Right and left combination for the team. Sri Durga Konchadi. 23 more to get in the remaining 18 deliveries. Shreyas for the first time. Passing umpire Sri Raj to Santosh. He balls it. What a ball that was. Missed out completely from the batsman. By signal by the umpire. With this by signal, one more addition to the scorecard. Score moves on to 24 on the board at the start of the first ball of the 4th over. A good ball, I'd say. Slight a bit of dart change there. For the left-handed batsman, the bowler is coming right arm around the wicket. To Vinith for the second time in the 4th over. 22 more to get in the remaining 17 deliveries. Shreyas coming for the second time. He balls it was a lower full toss delivery, but the batsman thought of just playing the stroke towards the cover point region. I feel that they're given a protection with a single. Scoreboard has now moved on to 25 on the board after completion of 2 balls of the 4th over. 3rd ball in progress. It's Santosh. It was a full toss delivery and he picks it well, but I think there was a fielder present in the mid-on region there. Given a protection, just a single coming in this delivery with a single, and now the score moved on to 26 on the board after completion of 3 balls of the 4th over. 4th ball in progress. Vinith. And the ball said, what a delivery! What an absolute cutter coming at the last moment. The batsman was misjudged with this turn. Because of that, the ball was cleaned him up. The batsman is walking back into the pavilion. The turn at the last moment. Leg cut up, the perfect leg cut, I would say, from Shreyas. In the 4th over, his bowling taking up a sensible wicket for team Sri Durga Konchadi. That's Vinith, who has been departed from the ball of Shreyas. Now I think slight a bit of pressure is increasing in the batting side after his wicket, because the man was batting well in the department of Sri Durga Konchadi. Now let's see the remaining batters, what they can do for the team.
20 more runs required. In the remaining 14 deliveries, 4 balls completed. Last 2 balls remaining of the fourth over. The new man coming in is Guru Raj Jr. Okay, Muji Gadi Lalpa Ajana Katadu Ditina, Onji Barik the Orpan Kenandula, KA19 MP5353, KA19 MN0312, Makuranji KA19 MQ7985, E Muji Gadi Alpa Ajana Katitin Alpa the Edu the Orpan Kenandula. Ajana Katir the Alpa Barit the Orpan Kenandula. Mujigadi KA19 MP5353, KA19 MN0312, KA19 MQ7985. Yes, completion of 4 overs. Score moves on to 27 on the board. In the final delivery, there was a run out and one more departure was departed from in the bowling performance shown by Shreyas there. Now 4 overs has been completed, 27 runs on the scorecard. Now the equation goes 19 more runs required in the remaining 12 deliveries for team Sri Durga Kunchadi. Seeing up the performance of Reliance Katipala in the batting order in the first innings, Arafat was very strictly dominating the bowlers of Sri Durga Kunchadi. Looking at the performance in the second innings, in the bowling performance, they are strictly dominating the batsmen of Sri Durga Kunchadi. They are completely showing the all-rounding performance in this tournament, that is Gaurav Trophy 2025, held in this most prestigious UCC cricket ground there. The new man brought into the tag for the bowling attack, it's Anish to bowl the 5th over for team Reliance Katipala, coming from the band 8 end. For the first time, passing umpire Roland Pinto there. The new batsman is Ritu, who is brought into the tag of the batting department of Sri Durga Kunchadi. This is the first ball, and the ball was quite away, and it's no ball called from the umpire. I think the bowler strictly missed his line as well as the bowling the ball outside the feet, outside the crease. Strictly getting no ball, as well as it is advantage for the batsman. He is getting a free hit chance. Let's see what he can take the advantage, or the bowler wins it. Let's wait and see. Free hit ball for Santosh. The equation getting closer and closer. 17 runs required in the remaining 12 deliveries. Free delivery, missed it completely. There was no connection shown between the bat as well as the ball. A bowler wins this battle between the no ball as well as the batsman. He beats the ball, but I think by signal by the umpire. With this single run added to the scorecard. 30 runs on board. First ball completed, second ball in progress. Ritu tries to play the sweet spot in the square leg region, but I think fumble from the keeper. Because of that, a single run has been taken. This delivery, 2 balls completed. Score moves on to 31 runs on the board. 15 more to get in the remaining 10 deliveries for team Sri Durga Kunchadi. Third ball to Santosh. He balls it. Incoming delivery. Chips it towards the gully point region. Feeder there, given a protection. Just a single coming in this delivery. 3 balls completed. 3 runs have been taken. 32 on the board. Equation goes 14 runs required in the remaining 9 deliveries. Fourth ball. A sharp incoming delivery. Chance for an out, but I think it was not a good throw. Like by signal by the umpire. 4 balls completed. Last 2 more balls remaining. Now the score moves on to 33 on the board. 5th ball in progress. Santosh to face the 5th delivery. Thought of hitting that towards a massive one, but stepped out completely. Missed out with the bat. No connection shown by signal by the umpire. Single coming in this delivery. 5 balls completed. There was a chance for the keeper to stump out, to uproot the stumps, but
Missed it completely. Nevertheless, single run has been taken in the previous delivery. Final ball remaining of the 5th over. Score is 34. Tries to hit, but I think he's cleaned him up. Anish is the man taken up the wicket in the final delivery of his over. Ritu is walking back into the pavilion now. Sri Durga Konchari is looking in big trouble now. Now the equation goes 6 ball, 12 runs required for team Sri Durga Konchari to win this match and to head over towards the next round of Gaurav Trophy 2025. The next match is going to be between United Suratkal as well as United Patur. Request the players to please be ready as soon as this match commences to please enter the field. And we can see now Shreyas is brought back into the attack after showing his very good bowling economy in the previous over. What he has bowled. Let's see what his bowling skills can bring up in this final over. The death over of the second innings between Reliance Katipalla as well as Sri Durga Konchari. 6 ball, 12 runs required for the team Sri Durga Konchari to win this match. Shreyas coming for the first time from the committee box and passing by Sri Raj to Santosh. He was it, full toss, picks it. There's a chance of a catch and it's safely taken at the spare leg region. It was a juicy delivery. Santosh could have taken that advantage and he could have sailed that ball many miles outside the boundary line, but I think he could not got that elevation there. Because of that, ball did not sail many miles, just inside the outfield, getting caught by the fielder on the square leg region there. Nevertheless, after playing a sensible lock, he's walking back into the pavilion. I think there is a third umpire call for no ball. Sorry. No, it's a fair one. His first ball, first departure, walking back into the pavilion for Sri Durga Konchari. It was a slight, a juicy ball delivered from the bowler Shreyas. Santosh is walking back into the pavilion for the team. 5 balls now remaining. 12 runs they required to win this match and to head over for the next round of Gaurav Trophy 2025. The new man coming into the batting attack, it's Sumit. One more experienced campaigner for the team. He has shown very well in the bowling performance. Let's see what he brings up in the batting attack. So second ball in progress, 5 ball, 12 required. Second ball to Sumit.
hits it, but I think a ball is just bumping in the ground, going towards the longer region there. Fielder they given a prediction, but batsman could take 2 easy run in the second delivery, and 10 runs required in the remaining 4 deliveries. Third ball in progress to Sumit. Trail balls it. It was a great turn, but I think there is an obstacle there. Dog has been an obstacle by saving that many runs from going back towards the short third man region there. Single run coming in this delivery. 3 balls completed. 3 more to go. 9 runs required. Fourth ball. Hits it, but I think this was not a good shot. Into the covers. Batsmen are running for the second one, and they have got that. 4 balls completed. 2 runs has been taken. 7 more to get. 1 6 is mandatory in this last 2 balls of this second innings. Let's wait and see. 5th ball in progress. He balls it, and he scored without the batsman. What an over. What a ball. Umpire showing the time has been exceeded in the second innings. What a delivery that was. The batsman was completely misjudged with that delivery. The last moment turn coming was completely attacking the stumps, and he has got the rid of that batsman. As a final delivery remaining, 7 more runs to get until and unless the bowler balls an illegal delivery, and the batsman could make connection with the massive one. Till then, the match is safely in hands of Reliance Katipalla. Final ball remaining. New man is Money. Jersey number 01. Can he hit 1 maximum and make this match a tie? Let's wait and see. Final delivery of this innings. He balls it, and he got it. He has got. Ball is going high up in the air, but straight to the hands of the fielder. At a mean moment, there was a slight bit of smile in the batsman face, but I think a ball just sailed high up in the air and gone into the hand of the fielder there on the long on region. With this catch, congratulations team Reliance Katipalla, showing strict dominance in the all-round performance in the batting as well as bowling there. Arafat, what a performance he has shown in the batting, I'd say, in the first innings, as well as the bowlers of team Reliance Katipalla, very well in stopping the batsmen of Sridurga Konchadi. As the man of the match awardee, it's Arafat of team Reliance Katipalla. I request Karthik Shetty MFC to please hand over the man of the match award for Arafat of Reliance Katipalla there. Now it's time to change a voice in the commentary box and hand over the mic to our most experienced and most popular Hindi commentator, Mr. Gopi. Over to you, sir. Yes, I request Arafat of Reliance Katipalla to get a man of the match awardee for your brilliant performance shown for the team. Congratulations, man, on the man of the match awardee of the 7th match of Gaurav Trophy 2025.
धन्यवाद सात्विक आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए। और जहां तक सवाल है इस वक्त मैच नंबर 8 का, तो यूनाइटेड वर्सेस यूनाइटेड सूरतगल का मुकाबला इस वक्त होने जा रहा है यूनाइटेड पातूर के साथ। और यूनाइटेड सूरतगल ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है, और उनके सारे खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। दोनों अरबिक बल्लेबाज यूनाइटेड पातूर के इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, तो गेंदबाजी 81 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए। मैच नंबर 8 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत गौरव ट्रॉफी 2025 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है प्लैनेट एयर जप्पू फ्रेंड्स मैंगलोर ने, और इस वक्त शुरू होता हुआ। और पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार रिजवान और शाफी आरंभिक बल्लेबाज। अंपायर रोलैंड पिंटो ने इशारा किया कि मैच की शुरुआत, और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार रिजवान सामना करते हुए। First ball comes. Yeah, get bowled. This time, this is an absolutely a dream start for the bowler. Much straighter line. He just get the rid of the batsman at the last moment. और इस बार धीमी गेंद थी, इस धीमेपन को समझ नहीं पाए और गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके पैर और बल्ले को चीरती हुई सीधे जा टकराई इस वक्त बिटर ऑफ स्टंप पर। बिल्स डिस्टर्ब होते हुए पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में रिजवान का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। यूनाइटेड पातूर अपना पहला विकेट खो चुका है 0 पर। इट्स नॉट फॉर 1 एंड रिजवान डिपार्ट्स फॉर गोल्डन डक। और जहां तक सवाल है, गेंदबाज जो है जाबिर, जिन्होंने बेहतरीन गेंद के जरिए यहाँ पर यह विकेट यहाँ पर प्राप्त किया पहली गेंद पर, और निश्चित रूप से एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में वो कर चुके हैं। तो अब इंतजार है नंबर 3 बल्लेबाज का, और नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पधारते हुए, और वो इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए। शाम का वक्त 4:30 यहाँ पर बज चुके हैं। आज सुबह से बदले भरा वातावरण मैदान पर रहा है, सूरज बादलों की आड़ में छिप चुका है, और कुछ हद तक गर्मी की तीव्रता आज कम दिखाई देती हुई। और कुल मिलाकर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट गौरव ट्रॉफी 2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए इस वक्त दोनों यूनाइटेड टीमों का मुकाबला यहाँ पर होता हुआ यूनाइटेड सूरतगल और यूनाइटेड पातूर के बीच। और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद राकेश सामना करते हुए। यह गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड, और लेग बाई का इशारा और लेग बाई की इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है यूनाइटेड पातूर द्वारा। एक रन एक विकेट के नुकसान पर, और जाफर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर जाबिर माफ कीजिए गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। शाफी पहली बार यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार, और पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त उनकी पारी का प्रगति पर। और यह गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकरा, इस बार एक बार फिर से परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद फेंकी थी लगभग जमीन के सहारे आते हुए, और गेंद को इस वक्त मोड़ने के प्रयास में चूंकि गेंद उनके पैर पर टकराने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पर निकली, जहां पर गेंद को फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 2 रन 2 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द फर्स्ट ओवर। और जाबिर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, फॉलो थ्रू में पैरों के जरिए गेंद को रोकना चाहा लेकिन नाकामयाब, जब तक गेंद को बैकअप किया जाता मिड ऑफ पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनके पारी का प्रगति पर। और जाबिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था, इन्हें हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। और इस गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहते थे चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जाबिर फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार एक बार फिर से बेहतर गेंद थी, स्ट्रोक्स खेलने में चूके विकेट कीपर चूके, लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया। और इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है जाबिर की, जिसमें 3 रन सिर्फ उन्होंने प्रदान किए और विकेट प्राप्त किया रिजवान का। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद यूनाइटेड पातूर एक धीमा शुरुआत यहां पर कर चुका है, 3 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 3 for the loss of 1 wicket after completion of first over scored by United Patur after being losing the toss and put it to bat by United Suratkal in the match number 8 of this prestigious cricket tournament Gaurav Trophy 2025, which is proudly organized by Planet Air Jeppu Friends Mangalore। और हमसे दूर वाली छोर से प्लैनेट एयर ट्रैवल एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज, और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ यूनाइटेड पातूर की पारी में। निस्संदेह
पहला विकेट गिर जाने के बाद पहले ही ओवर में इस वक्त यूनाइटेड पातुर के बल्लेबाजों के ऊपर कुछ हद तक दबाव दिखाई देता है और अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक साझेदारी निभानी होगी और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज शाफी और राकेश उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश में। और गेंदबाज सहद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज राकेश के लिए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और वाइड का इशारा इस बीच और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। सहद अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। यह गेंद इस बार उछाला जरूर है लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। मिड ऑफ फील्डर अपने आगे की ओर आकर जब तक इनको फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और सहद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। शाफी इस वक्त सामना करते हुए सहद की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाफी के लिए यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा बल्ले का भीतरी किनारा शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची लेकिन इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा हो चुका है स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 6 रनों पर 6 फॉर 1 इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और सहद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राकेश इस वक्त सामना करते हुए और ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 7 रनों पर 7 ऑन द बोर्ड। रन सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए चाहिए कुछ चौके और छक्के यहाँ पर यूनाइटेड पातुर के बल्लेबाजों को अपने टीम की रन की गति पर एक्सेलरेशन लाने के लिए। और सहद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार फैंटास्टिक डिलीवरी मत स्ट्रेट लाइन गेंद पर उछालने के प्रयास में चूके और रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज यूनाइटेड सूरत कल के बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ इस वक्त प्रदान नहीं कर रहे हैं कि बल्लेबाज खोलकर स्ट्रोक्स खेल सके। और इस बीच सहद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर शाफी के लिए और यह गेंद इस बार गेंद को उछाला लेकिन मैंने समझता गेंद सीमा रेखा को पार करेगी। सीमा रेखा के अंदर जी तोड़ कोशिश जरूर की थी इस वक्त गेंद पर लपकने के फील्डर ने लेकिन आखिरकार गेंद को लपक नहीं पाए। थोड़ा सा मुश्किल सा मौका लेकिन मौका गवाते हुए यहाँ पर और 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट। और 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। 1 गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी। और जहां तक सवाल है इस वक्त 1 गेंद इस ओवर में अभी भी बाकी। और इस बीच सामना करने के लिए तैयार शाफी एक बार फिर से सहद की गेंदों का। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका यूनाइटेड पातुर को इस वक्त चाहिए एक लंबी साझेदारी यानी पार्टनरशिप अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ना है तो। और इस ओवर में अंतिम बार सहद गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए शाफी जो कि सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस ओवर में अंतिम बार ये गेंद plumb in front. He's gone plumb in front. No strokes offered. और गेंद उनके पैरों पर सीधे टकराई और आखिरकार उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर प्रदीप कोटवारी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो इस वक्त देखिए यहाँ पर देखना चाहूंगा कि किस तरीके से हुआ था। गेंद लगभग स्टंप्स को केंद्रीकृत कर आती हुई कोई स्ट्रोक्स ऑफर नहीं किया था कि गेंद को अपने पैरों पर टकराने दिया था। और यहाँ पर अपील हो रही है देखिए और किस तरीके से अंपायर इस वक्त जहां तक का सवाल है अब ठीक तरीके से यहाँ पर देखा जाएगा कि असल में क्या हुआ था वहां पर विकेटों के बीच। और जहां तक का सवाल है विकेट तो इस वक्त गिर चुका है लेग बिफोर विकेट के रूप में। और दूसरा विकेट इस वक्त गिरने के बाद स्कोर है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट 2 ओवर्स कंप्लीटेड फॉर यूनाइटेड पातुर एंड नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल इन फैक्ट। और
इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद इस्माइल इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, जबकि सामना करने के लिए तैयार राकेश और गेंदबाज निसार जो कि इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए। 2 विकेट सिर्फ 9 रन पर गिर चुके हैं यहां पर यूनाइटेड पातूर के। और ये क्रॉस एंगल पर जो कि दिखाया गया किस तरीके से गेंद को पैर पर लिया था, अंतिम अक्षर में कोई स्ट्रोक्स ऑफर नहीं किया था और आखिरकार यहां पर ये विकेट गिर चुका है लेग बिफोर विकेट यानी पगबाधा के रूप में। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ निसार गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार राकेश सामना करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। तो अंपायर कुछ कहते हुए इस वक्त खिलाड़ी से और इस बीच निसार ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार राकेश के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बीच पहली गेंद, ये गेंद फैंटास्टिक, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन, एक्स्ट्रा क्विक वन और गेंद तक पहुंचने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। और इस बीच निसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार राकेश के लिए। 3 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर राकेश इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंद का अब तक उन्होंने सामना किया है। और इस बीच गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार एक बार फिर से बेहतरीन गेंद विकेट कीपर के हाथों तक गेंद चूकी, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो इस वक्त टकरा चुका है नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज के पैर पर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है बाई के रूप में और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर। 10 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज यूनाइटेड सूरतकल के और इस बीच निसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पहली बार इस ओवर में इस्माइल जो कि सामना करने के लिए तैयार और निसार 5 से 6 कदम उनका रन अप दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी कर। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग लेग कटर डिलीवरी, गेंद को इस वक्त बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे लेकिन अंतिम अक्षर में गेंद को खेलना चाहा स्क्वायर ऑफ द विकेट लेकिन कुछ कर नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। तो यहां पर शायद रिव्यू लिया जा रहा है कि गेंद स्टंप्सों पर टकराई है या नहीं। बिल्स वहां पर डिस्टर्ब जरूर हो चुके हैं लेकिन देखने वाली बात यह है कि गेंद स्टंप्सों को छूकर निकली थी या फिर विकेट कीपर का हाथ वगैरह यहां पर टकराया था। तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त निर्धार सौंपा गया है और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्णय यहां पर देते हैं। तो लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन लेग कटर गेंद, एब्सोल्युटली परफेक्ट लेग कटर बॉल बाय दी बॉलर और गेंद को रक्षात्मक तरीके से यहाँ पर देखिए दबाना चाहता लेकिन गेंद को दबा नहीं पाया और गेंद इस वक्त जहाँ तक सवाल है स्टंप्स पर लग चुकी है या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो मैच नंबर 8 इस वक्त खेला जाता हुआ। इस मैच के बाद एक और बेहतर मैच इस मैच के बाद खेला जाएगा। फ्रेंड्स कुत्तार का मुकाबला होगा प्लैनेट एयर एसटीसी के साथ। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರ್ STC ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. No doubt is the call and the batsman survived. The ball went just wide of the stumps at the last moment. Just wide of the off stump at the last moment. And the batsman survived in this delivery. Score. तो इस वक्त विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूटने के बाद सीधे स्टंप्सों पर टकराई थी और इस बीच बल्लेबाज बच चुके हैं और सब कुछ सुरक्षित उनके लिए. और निसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस्माइल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया. शॉट फाइन लेग पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. कोई बैकअप नहीं इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर.
और वाइड का इशारा इस बीच। जैसे ही बल्लेबाज महापा की गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयत्न को उन्होंने छोड़ दिया और गेंद को सीधे जाने दिया विकेटों के पीछे। और 2 रन इस बीच, 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास इन द फेस ऑफ वाइड। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर, 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और निसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार राकेश के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, कट किया खूबसूरती के साथ, पॉइंट पर गेंद जाती हुई डीप कम बैक और थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर आए। जब तक काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और निसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राकेश के लिए। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंदबाजी शॉट फाइन लेग पर, थ्रो पहुंचा इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अगर थ्रो स्ट्राइकर एंड पर फेंकते तो शायद वहां पर कुछ बात बन सकती थी, लेकिन थ्रो इस वक्त पहुंचा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और जब तक थ्रो पहुंचे, बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन चुरा चुके थे। 22 का इशारा, 15 रन बन चुके हैं, 15 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और निसार इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर राकेश, माफ कीजिए, इस्माइल के लिए। यह गेंद इस बार हल्के से इस्माइल ने गेंद को टैप कर दिया, एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर पीछे से थोड़े से पीछे तैनात था, लेकिन एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 3 ओवर की समाप्ति, 3 gone, 16 for the loss of 2 wickets. Still the batsmen of United Patur searching for the right track with 3 to go in their innings. जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, अगला मैच एक और बेहतर मैच फ्रेंड्स कुत्तार और प्लैनेट एयर एसटीसी के बीच खेला जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। फिलहाल इस श्रृंखला के, इस टूर्नामेंट के बारे में अगर कहा जाए तो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट गौरव ट्रॉफी 2025, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया प्लैनेट एयर जप्पू फ्रेंड्स मैंगलोर ने इन लविंग मेमोरी ऑफ लेट गौरव बोलार, जिनका कुछ समय पहले स्वर्गवास हो चुका है। उनकी मधुर याद में इस मेगा श्रृंखला का यहाँ पर आयोजन किया गया है, गौरव ट्रॉफी 2025 के नाम पर। और प्लैनेट एयर ट्रैवल की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज जाबीर, जो कि अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हैं। पहले ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की थी, सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया था। और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात इस टूर्नामेंट, इस श्रृंखला के नियमानुसार। और पहली गेंद लेकर जाबिर इस वक्त तैयार, इस्माइल सामना करते हुए। यह गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया था इस वक्त, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंच चुकी है। 1 रन मिलेगा या नहीं देखना पड़ेगा। अंपायर प्रदीप इस वक्त स्क्वायर लेग अंपायर रोलैंड पिंटो की ओर बढ़ते हुए। और देखने वाली बात यह है कि गेंद बल्लेबाज के पैर पर टकराई थी या फिर विकेट कीपर के हाथों से छूट कर निकली थी शॉर्ट फाइन लेग पर। बातचीत इस वक्त जारी है दोनों अंपायर्स के बीच, और जहां तक का सवाल है इस वक्त दिखते हैं वो क्या निर्धार यहाँ पर लेते हैं। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दर्शकों की तादाद कुछ ज्यादा इस वक्त दिखाई नहीं देती हुई, लेकिन सुबह जितने दर्शक थे उससे कुछ ज्यादा दर्शक यहाँ पर दिखाई देते हुए। और जहां तक सवाल है रन का, तो यहाँ पर इस रन को रद्द कर दिया गया है डिलिबरेटली। इस वक्त गेंद को अपने पैर पर लिया था, कोई स्ट्रोक्स ऑफर नहीं किया था, तो इस वजह से इस गेंद को रद्द इस वक्त कर दिया गया है, इस रन को रद्द कर दिया गया है। गेंद इस वक्त सही है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है। जाबीर अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार इस्माइल के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद, यह गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। इससे पहले कि गेंदबाज अपनी बाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 17 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस।
निश्चित रूप से इस वक्त बंधनों को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए यूनाइटेड पातूर के बल्लेबाज दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेकिंग द शैकल्स नाउ। और अगली गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, गेंद जाती है एक्स्ट्रा कवर पर, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थ्रो, दोनों फील्डर इस वक्त टकरा चुके हैं और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था आसानी के साथ दूसरा रन पूरा करने का और आखिरकार 2 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद उछाला लंगोल पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। इस बीच एकमात्र रन मिलेगा आफ्टर फर्स्ट बाउंस, पहले टिप्पे के बाद गेंद को फील्डर फील्ड करते हुए और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। और इस बीच जाबिर अपनी ओवर की अगली गेंद, यह गेंद इस बार उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट, 1 रन का इजाफा। और जहां तक सवाल है, रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए बीच बीच में एक कपल बन रहा है और स्कोर इस वक्त इस सिंगल के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अगली गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए गेंद को और शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 22 ऑन द बोर्ड, 4 overs completed and still I must say the batsmen of United Patur just searching for the right track now. 12 balls left, 2 overs remaining और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में यूनाइटेड पातूर के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। 8 विकेटें इस वक्त सुरक्षित हैं, लेकिन 8 विकेटें सुरक्षित रखने के बावजूद यहाँ पर ज्यादा रन बटोरने में अब तक सफलता प्राप्त नहीं किया है बल्लेबाजों ने यूनाइटेड पातूर के। और जहां तक सवाल है इस वक्त 5वें ओवर का, तो कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई और गेंदबाज सफान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, बल्लेबाज राकेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और राकेश का जहां तक सवाल है, 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए अब तक उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया है। राकेश स्कोर्ड 8 रन्स ऑफ 11 डिलीवरीज और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार सफान की गेंदों का। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाज सफान गेंदबाजी शुरू करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज राकेश के लिए पहली गेंद, ये अंदर की ओर आते हुए गेंद इस वक्त रन का खतरा, निशाना टकरा चुका है यहाँ पर और स्क्वायर लेग अंपायर की उंगली यहाँ पर उठ चुकी है। इस्माइल कीपर यहाँ पर समाप्त, जोखिम भरा रन चुराना चाहा था और इससे पहले की गेंद बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे, विकेट कीपर ने तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए गेंद को फील्ड करते हुए तुरंत विकेटों पर निशाना दागा और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और बल्लेबाज अपने क्रीज से कुछ इंच यहाँ पर बाहर रह गए और आखिरकार ये विकेट इस्माइल का गिर चुका है, तीसरा विकेट गिर चुका है। 22 for 3 नाउ, यूनाइटेड पातूर वंस अगेन लुकिंग इन ट्रबल। तो यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, दैट वाज अ क्लीन, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट, ही इज आउट ऑफ द क्रीज। और नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त स्ट्राइकर पर मौजूद और सफान जो कि इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौशाद का आगमन इस वक्त हो चुका है और सफान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, परफेक्ट लेग कटर, फ्लाइटेड वन, स्लोअर लेग कटर फ्रॉम द बॉलर और गेंद टिप्पा खाने के बाद इतनी ज्यादा टर्न लेके गेंद के घुमाव को समझ नहीं पाए, गेंद के फ्लाइट को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतरीन गेंद थी गेंदबाज सफान की और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस, रिवर्स शॉट एंड ही गॉट दैट वन एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। दिस इज एन फैंटास्टिक स्ट्राइक और ऐसा कहना पड़ेगा, इस फुल टॉस गेंद की गति को पहले ही भांप लिया था, विद रिवर्स शॉट गेंद को कनेक्ट किया, गली फील्डर की बाईं ओर से गेंद को निकालने में सफल और गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के सीढ़ियों पर स्टेप्स पर टकराती हुई और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को उछाला था। अब लुक एट दिस इज द रिप्ले, फाइंड्स द गैप एज वेल एंड इज जस्ट गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट स्ट्रोक। 26 ऑन द बोर्ड, बेहतर चौका इस वक्त नौशाद के बल्ले से लगता हुआ और सफान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ
ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग कटर गेंद लेकिन शायद इट माइट बी पिच्ड आउटसाइड द लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और गेंद उनके पैरों पर टकराई थी। आखिरकार कुछ हद तक गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी, तो इस वजह से अंपायर ने इस अपील को नकार दिया और इस बीच गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद धीमी लेग कटर गेंद पैरों पर टकराई, इस बीच बाउल्ड आउट, इन फैक्ट लेग स्टंप uprooted, flighted one, he bowled around his legs, in fact leg stump uprooted and one more wicket fallen. What a fantastic bowling performance continuing here from the bowler Safwan। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को मोड़ना चाहता, चूंकि लेग स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ, और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। वन मोर विकेट लॉस्ट, no shot departs, now it's 26 for 4। Still, the problems are continuing here for the batsmen of United Patur. Still one ball left in this over. In overall calculation, it's going to be 7 balls remaining there. इन 7 गेंदें कुल मिलाकर अब उनकी पारी में बाकी, और इस वक्त नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और निश्चित रूप से एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज सफवान इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। और जहां तक का सवाल है इस वक्त इस ओवर की अंतिम गेंद का, तो गेंदबाज सफवान इस वक्त तैयार। अब तक उनका एक सफल ओवर साबित हो चुका है। नए बल्लेबाज तोइफ जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सफवान ये गेंद, this time once again bowled off his legs. This is an absolutely terrific. Again, he bowled a perfect leg cutter, pitching on the block hole and stuck to his leg stump. This is an outstanding delivery and a fantastic piece of bowling performance continuing here from Safwan. So just have a look at this in the replay. That wasn't a flighted one, just pitched just outside the line and nipped back a lot at the last moment and stuck to his leg stump, uprooted. This is the celebrations is going on from the bowler Safwan. And a fantastic over came to an end from him. 5 overs completed. Now 26 on the board, 5 wickets lost. अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा द फर्स्ट 5 overs game belongs to the bowlers of United सूरतकल। अंतिम ओवर में 5 विकेट सुरक्षित, और देखना है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में यूनाइटेड पातुर के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। गेंदबाज प्लैनेट एयर ट्रैवल उनकी ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए निसार, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 5 रन प्रदान किए थे। दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए राकेश। और जहां तक राकेश का सवाल है, सेंसिबल पारी अब तक उन्होंने खेली है, और इस बीच निसार की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद, ये गेंद इस बार उछाला लंगोल पर, फील्डर थोड़े से स्क्वायर तैनात, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो काफी वाइडर और बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट हिट दैट वन इनटू द गैप एज वेल बिटवीन लॉन्ग ऑन एंड मिड विकेट, एंड ही गॉट अ कपल रन फॉर दैट, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 28 रनों पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट, तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, और निसार इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राकेश 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सामना करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला, लेकिन गेंद सीधे लंगोन फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ राकेश की सेंसिबल पारी पर पर्दा गिर चुका है। It's curtain for the innings of Rakesh. Sensible innings came to an end of 10 runs, including 3 couples and 4 singles. And he's backing to pavilion. तो रिप्ले पर देखिए किस तरीके से उछाला था, दमदार स्ट्रोक था, लेकिन प्लेसमेंट गलत, और लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे 1-2 कदम उन्हें पीछे जरूर जाना पड़ा, लेकिन एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल। 1 more wicket fall on 28 for the loss of 6 wicket. और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंदों का, तो 4 गेंदें इस वक्त बाकी, और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन हो चुका, नंबर 12 की जर्सी पहने हुए अजीज, और वो इस वक्त निसार की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। निसार दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, इस बार रन आउट का खतरा, एक और विकेट गिर चुका है। 1 more wicket fallen because of misunderstanding। और यहां पर देखने वाली बात है कि कौन से बल्लेबाज यहां पर आउट हो चुके हैं। तो इस वक्त
तीसरे अंपायर के लिए वाइड के लिए रिव्यू इस वक्त सौंपा गया है और देखते हैं यहाँ पर यह गेंद वाइड थी या नहीं, इसे इस वक्त परखेंगे तीसरे अंपायर। तो विकेट जरूर यहाँ पर रनआउट के रूप में गिर चुका है और इस वक्त वाइड के लिए रिव्यू जो कि लिया गया है, देखते हैं यहाँ पर गेंद वाइड है या नहीं। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकली थी, इस वक्त वाइड का इशारा। सो वाइड डिक्लेरेड बाय द थर्ड अंपायर। तो एक रन उनके खाते में जुड़ेंगे, एक विकेट भी गिरेगा और एक यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हिट लगता हुआ और बल्लेबाज की पारी पर पर्दा गिरता हुआ। 29 for the loss of 7 wickets. Now still 4 balls left in their innings. और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन होता हुआ। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, नंबर 9 बैट्समैन फॉर यूनाइटेड पातूर और वो इस वक्त सामना करेंगे निसार की गेंदों का। निसार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इजाज नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए निसार की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर उछलना चाहा, बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, परफेक्ट लेग कटर फ्रॉम द बॉलर और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बल्ले को वंचित करने के बाद। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 29 रनों पर और निसार फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर, फैंटास्टिक अगेन बोल्ड, फैंटास्टिक बट विकेट कीपर से चांस ऑफ रन आउट, लेकिन यहाँ पर निशाना चूका और ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन यहाँ पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। तो निशाना इस वक्त विकेट कीपर ने दागा था लेकिन वहां पर ठीक तरह से बैकअप नहीं हो पाया और इस बीच बाई के रूप में 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, थ्रो पहुंचा, थ्रो को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाया गेंदबाज और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। 31 ऑन द बोर्ड। नाउ जस्ट 2 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए निसार। धीमी गेंद, इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके, विकेट कीपर भी चूके, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 32 एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज निसार इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी करते हुए और कुल मिलाकर अब सिर्फ एकमात्र गेंद शेष यूनाइटेड पातूर की पारी में और अंतिम गेंद लेकर निसार इस वक्त तैयार, जबकि बल्लेबाज अजीज जो कि इस वक्त सामना करते हुए। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। निसार टू अजीज, राइट आर्म ओवर द विकेट, हियर ही बाउल्स। अंतिम गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, गेंद पहुंचे लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले थे, 2 रन पूर्ण करने में सफल और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर यूनाइटेड पातूर। दे स्टार्टेड स्लोली बट फिनिश्ड respectively with 34 on the board in the stipulated 6 overs, and now the target set for United Suratkal is 35. They have to score for victory in the stipulated 6 overs. They have to score for victory. ಅಲ್ಲಿ K19 MN 0312 ನಂಬರಿನ ಕಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. K19 MN 0312 ನಂಬರ್ನ ಕಾರು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರನ್ನಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. K19 MN 0312 ನಂಬರ್ನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಯ ಎದುರಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So the target is 35 for United Suratkal और देखते हैं यहाँ पर यूनाइटेड सूरतगल के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं. फिलहाल जहां तक अगले मैच का सवाल है, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, फ्रेंड्स कुत्ताल will takes over Planet Air STC in the next match. One more good match is now coming up, and because of that I request all the players of these two teams, once again I request please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So 35 the target for United Suratkal और उनकी पारी की शुरुआत होगी. चंद लम्हों बाद 35 रन निर्धारित 36 गेंद यानी 6 ओवर 6 ओवर्स में उन्हें बनाने 10 विकेटों की मदद से और उनकी पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ, जब यहाँ पर यूनाइटेड सूरतगल की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद.
So thank you very much, Gopi, and welcome back. And after that, the very good start from the batters of team Patur, United Patur, but in the middle order, in the end of the innings, a little bit disappointment performance, and good comeback by the bowlers of United Suratkal, so that they restricted their opposition for just 34 runs and 35 runs, which is the target for the team United Suratkal. Opening batters, Shailu and Aris, successful opening pair, came into bat. The wicketkeeper batsman Shailu will go into face Nizam. First ball just wanted to go for the reverse sweep, but misses the line complete. Then wicketkeeper behind the stump did the rest and back to bowler. And day number 1 is absolutely very successful cricket matches which is played in this excellent weather condition, and this time lovely work done by the wicketkeeper behind the stump. In a fraction of second, he completed the job. Taif is one more very talented the player, brother of Bashit, is behind the stump and did a wonderful walk behind the stump, and but no damage done. So did it such kind of start here for the team United Patur if they wanted to win this match, because they're not depending big total. So Nizam just wanted to get a good start here for his team, just like the team United Suratkal has got in the first over. They got some wicket. This time again, they wanted to go for the reverse sweep. Again, the wicketkeeper has got a habit of flying the stumps once he got the ball in his hand. And similarity, what Mansoor is doing such kind of work. It becomes a habit sometime. And have a look at that from wicketkeeper Taif. Is just flying the stumps in a fraction of second, but no damage done. So good start. 3 dot ball. Little correction. Yes, it is a 3 dot ball to start with the bowler Nizam. So United Patur knows that the very good condition they are bowling here, and they have to get some good start to restrict their opposition. Now 4th time in this over, Nizam. Shailu drives it. I think something wrong with this bat, because he's maybe very lucky that bat is very safe after hearing the big sound, and he hit the ball and the ground pretty hard. But thank God his bat is very safe, and they got his first run as well. So first run of the innings of United Suratkal. The 2 United teams are clashing here, Patur and Suratkal, and they have to be very united if they wanted to win the match. And here comes 5th delivery of this over. Round the wicket, right up. This time chipped it away, just over that of the extra cover fielder. Chase off for the fielder, and before the throw will going to come to the hands of a bowler. Ample time for the batter to complete a couple of runs. A very useful left-hand batter, Harish, loves to play over the head of the bowlers, over the head of the fielders, especially in the power play. Taking some initiative of taking the risk of getting the ball over the infield. Sometimes it's needed to be when you're playing in the power play. Oh my goodness, that very close to the off stump. In fact, that ball is just missed the stump by Visco. And what a great over from the bowler Nizam. Good start, just 3 runs came from this over. The completion of first over, the equal battle in the first over. And a very good start given by Nizam. Wonderful cricket tournament is in progress. We are just talking about the cricket, and the good news here for all the cricket lovers is that along with the cricket, they got opportunity, the first time in history of Tulu movie, the Gajanana Cricketers, the movie which is based on undrawn cricket, already released in Gulf countries. The premiere show is on today and tomorrow, and one of most thriller movie which has got a lot of excitement with some comedies and emotional touch, what undrawn cricket has got. So it's a great moment for all the undrawn cricket lovers to watch Gajanana Cricketers in a big screen, and some the players who are represented for some reputed teams has got opportunity to act, and the real players from undrawn cricket will definitely we can find in the big screen. And here comes the next one.
First ball of the over, number second. Chance of run out. And the wide throw came from the field. And the hats off to the producer, Prajwal Shetty. He's got a concept and because love and affection towards underarm cricket made producer Prajwal Shetty to attempt for that movie. And need to appreciate him. And lovely direction there from a very young, talented writer. And Kirtan Bandari written and directed that movie. Outside and off stump, just try to get the ball on the onside in. Lucky that ball is just missing the stump. And more than anything else, we have art director Dheeraj Sanil. So one more, the Kannada commentator is a multi-talented. Dheeraj Sanil is did a great job as an art director in that Gajanana cricketers. Jantottu, the Tule movie, outside the line of off stump, drags it. Chance of run out, and again the missed the stumps. This time in the non-striker's end, and all happening here in the mid. The United Pathur fails to grab the opportunity of run out. Both the batters are lucky. Just have a look at that replay. On the follow through, try to hit the stump by turning back quickly, but not really getting the stumps. 5 without loss of any wicket. Here in over number second is in progress. Here comes next ball from the planet air and outside the line of off stump, and it's well within the reach of the batter. And Shailu once again struggling. And now umpire Pradeep Kottari. It might be the call from umpire because the bowler came right in front of umpire, so that it's going to be umpire's call, and this is umpire's call because the bowler came right in front of umpire, so that umpire had to clarify. So wait and see what could be the decision from the umpire, third umpire. Just wanted to see it in the replay, that line of the ball, and so umpires need to watch it in 2 angles, because so wanted to do that very close to the line. Whether it is good enough to call the wide or it is inside the line, it's always going to be a key for. And of course the technicians absolutely done a great job here to get the result. It's a fair delivery. So it's a very important. Sometimes we have to see it in the 2-3 angles, and in front angle it looks like the ball is a fair delivery. The back angles it looks like the wide, but it's always going to be challenging for the third umpire as well as the technicians to get the best result. It's a fair delivery, and here comes Izaz, right arm over the wicket balls. This time played it nicely down to square leg region, and going for a quick single. With the addition of that single, scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. So very good start from the opening bowler, and they're really justifying so far. Bowling that power play overs very effectively, not given any opportunity for these opening batters to do anything, and it's been outstanding performance so far from the opening bowler. But job is not yet over. This time lofted, but no power whatsoever, and straight to the hands of deep long on. This is a stroke of the frustrated batter Harris, saying that very hard to combine the runs. So many dot deliveries so far, not from him but from the partner as well. Just have a look at that one is delivery, which is coming into the batter. Little bit short pitch, lofted, but you can see there's no power in that stroke. Timing is missing as well, and played it straight to the hands of deep long on fielder. Safely held that catch. The wicket number first is back in the pavilion.
We are talking about more cricketing action coming up in the month of December as well. Padav Friends Club registered. They are celebrating their golden jubilee, and on behalf of that golden jubilee, they are organizing PFC Trophy 2025 10 hours game. It's very good to see that 10 hours game under cricket tournament organized, and 8 Mangalore ranking teams and of course the 8 local teams participated in this 3 Sunday in the sense 7th, 14th and 7th and 14th and 21st 3 Sunday tournament, which is organized in government school Shakti Nagar. This time charging down the track, shyly using his feet, driven that one, but lack of placement. He can't finds a gap in derogation. Just a single. With a single score, but moves on to 7 on the board. The next match is one more big match which is coming up. Team Friends Kutar takes on Planet Air SDC. A toss which is won by Planet Air SDC, and they are elected to field first. Thank you very much, Santosh Bantwal, and so far is doing a great job as match referee in this tournament. And thank you. Again, coming into the batter, one more good incoming delivery and leg by call by umpire, hitting the batter outside the line of off stump, and scoreboard 8 for 1 in the over number 3 in progress. Here comes next delivery. This time chipped it away. Shiloh finds the fielder. Good catch taken in the deep long on. Looks like his smile may be the fielder. Not Ismail, is just number 63 or 62. I don't know. Let's wait and see in the replay, because we are not having any view in our commentary box. And just have a look at that stroke from the batter. It played it down to deep long on. Just I want to see, there is a fielder at mid wicket, but a long on fielder, of course, just number 63 is a fielder who taken the catch, Shafi Punacha, the one more big name as far as the hard hitting is concerned. Down at long on, completes the catch. 2 very good overs bowled by the opening bowlers for the team United Pathur, and the equal battle is on here. It's 8 for 2 of completion of over number 2. Washim is a batter. Again, swept the ball down to square leg region for an easy single. With the addition of that single score, but moves on to 9 on the board. Over number 3 is in progress. Last delivery of the over number 3. The battle is on here for each and every run, and disciplined bowling performance continues here from team United Pathur. This time hitting him outside the line of off stump. Went for the reverse sweep. Leg by call by umpire. One more tidy over which just comes to an end. Tidy over in the sense, of course, we can call it a tidy over. And 4 runs came from this over, excluding the extras. And after completion of over number 3, searching for the right track, United Suratkal are 10 for 2. Still long way to go. .35 is the target. That means a 25 needed from 3 overs. 18 ball 25. 8.33 runs per over. The required run rate for the team United Suratkal to win this match. And the battle is on. And the match will going to continue. Please note for the next match between Sridevi Cricketers Jeppu versus Friends Kutar, that match definitely will going to continue at any condition as per decision taken by the organizing committee. Time is exactly 5:23. One more appeal for leg before wicket. Every time ball is hitting outside the line of off stump, and again leg by call by umpire Pradeep Kothari. A lot of exercises here for both umpires in the last 5 deliveries. They have to lift their legs several times to signal leg by.
So 11 for 2 now, and in the over number 4 is in progress. Izaz, who bowled very well in the previous over with just 3 runs, is in action. And from the Planet Air Travel end, bowling right arm over the wicket. Oh, fantastic work, man, by wicket keeper behind the stump. Taif just waiting for the batter to leave the crease, and then he's just fly the stumps. The wicket number 3 back in the pavilion of Team United Suratkal are absolutely now in serious trouble. Just have a look at that one in replay. Just wanted to sub the ball. Just have a look at the wicket keeper here. Absolutely, it's a little bit fumbled. In fact, I thought he's just waiting for the batter, but maybe the ball is not collected in the first attempt, but in a second attempt, he's seeing that batter is out of the crease and is completed the formalities of stump out. So United Suratkal, after that, great work done by the bowlers to restrict the runs of their opposition, but the batters so far very much disappointed to perform. No one tried to spend the time in the middle. Struggled against the disciplined line and length ball by the bowlers. All the opening bowlers, they're finishing their 2 overs quota, the opening bowler. No bowling change so far. Opening bowler Nizam and Izaz, they're sharing that 2 overs of their quota very well with some good line and length. Izaz changing his angle, down coming round the wicket for the left-hand batter Bashir. This time again, this time a question raised, an umpire also raising his hands and just drawing that box, saying that it's all up to the third umpire, not for me. And wait and see what Pradeep Kottari will going to give here, the decision here. I just wanted to go for the try. The ball is almost close to the wicket keeper. The batsman is not really aware of where the ball is, quickly realizing that the wicket keeper picking the ball. Now they just try to put the bat inside the crease, but is it going to be good enough for him to save that run out? It looks like it might be a batter is in trouble and he's gone. His bat is in the air. One more wicket back in the pavilion. 11 for 4. We are thankful and grateful for all the sponsors and donors who are cooperated with their heartfelt support for the success of this cricket tournament. A big thanks to prime sponsor of this cricket tournament, the Planet Air Travels Dubai, and Elite Cafe Krishnapura, Laundrywala, the Karavali Credit Cooperative Society Limited, Rakesh Chai Station Gujar Kere, Mulihitlu Friend Circle Registered Mulihitlu, Gokarnatha Tigers Jeppu, Sridevi Cricketers Works Mulihitlu, City Friends Mulihitlu, 10F3 Sports Melkar, sponsor for all the man of the match, and the organizer really giving their the big thanks for all the sponsors. This time chipped it away quite deliberately in the gap down to cow point region. They wanted to come back for the second. In comes the throw. No says by the non-striker. It might be one more disaster if they went for a couple of runs here. Quite rightly there, the new batter Zafar just calling his partner not to come for the second. Otherwise the chance of run out which is created, it's 12 for 4. Zafar and Zabir, the batter, are in the middle. Izaz just changing the field set here at cow point, fielder coming towards between cow point and backward point, in between that. Swings and missed. Excellent line and length. And the problem continues here from the batters of United Suratkal. Not really looking for the rotation of strike. Now 23 needed from 13 balls. 23 needed from 13 balls. And the final time in this over is ours.
Balled him, cleaned him up, went for the big shot. Again, the pays the penalty for that. Fifth wicket is back in the pavilion. Izaz strikes again. What an outstanding bowling spell from Izaz. Just have a look at it in a replay. Izaz coming almost and using the crease, coming wide of the crease. And just delivers the ball almost in the middle stump. No turn, but straighter one and quicker one. And batter just tried to play the big shot in front of wicket. Pays the penalty, misses the line completely. So 2 overs, no maiden, 4 runs. 5 runs in fact, and he picked 4 runs and picked up 4 wickets. You can't get better than this in that 6 overs limited over match when bowler concedes only 4 runs in 2 overs with the economy of 2 runs per over and picking up 4 wickets means the great bowling spell for the bowler. Very disappointed from the batters of United Suratkal. No one has got the patience to spend the time in the middle of the pitch. Everyone walks and back, walks and back. 12 for 5. Wanted to go for the mighty drive, doesn't get that much of timing, but good enough for batter Zafar to rotate the strike. Addition of that single score moves on to 13 for loss of 5 wicket. First bowling change after both opening bowlers completed their quota of 2 overs, sharing that first 4 overs. And now the bowling change, Nisar, second time in this over. Right arm over the wicket to Ashraf. Ashraf this time played it nicely in the gap towards the cow point, but you can see that all that energetic youngsters in the United Patur are almost giving their 100%. Very quick in the field. Just like I mentioned, when they're depending the small total like 35, they have to give you 100% in the field. Nisar, third time. To Zafar. Zafar lofted! And looks like that will going to be a maximum or not. One more disappointment. Well. It's definitely disappointment for everyone. Even for me as well. After I'm watching the stroke there from Zafar. Just have a look at that one. He's absolutely hit that one pretty well. But sometimes what happened in a usage ground, and this is not a typical condition. What we are seeing in a usage ground. There's no wind at all in the ground, and the ball is almost lost their speed. And just inside the boundary line, the fielder completed that catch. Shafi looks like the fielder in a deep long one completed the catch. One more wicket back in the pavilion. It's 14 for 6. Nisar. One more experienced campaigner and good all-rounder can be very effective from the bat as well. Nisar. Facing Nisar. Nisar to Nisar. A very good competition. This time Nisar misjudgment. They went for the reverse sweep, but umpire is asking for the third umpire for the wide. The bowler came right in front of umpires. So umpire's call. This is umpire's call. Please note, umpire not given any decision. And Nisar, total misjudgment. In fact, he just wanted to go for the big shot by playing the switch it, but bowler did a great job. It's a right delivery. It's a fair delivery. So, score will going to remain the same. It's 14 for 6. Struggle time continues here from the batters of United Suratkal. Fifth time in this over. Nisar bowling away from us. Right arm over the wicket delivers. Again, just Taif has been outstanding behind the wicket, just like his brother Bashit.
What a fantastic keeping so far. But I think a lot of work there for the umpire, as a square leg umpire. Every time Taif gathers the ball, he will not really given single opportunity. An umpire have to walk quickly to the stumps. And 14 on the board for the loss of 6 wicket. 7 balls remaining and 21 runs required for the victory. Do or die situation now for the United Suratkal. Here comes Nisar to Nisar. Appeal, Flum, absolutely Flum in front of wicket, no doubt at all. This time is the bowler targeting the middle leg off stump. Nisar just wanted to break the shackles, but couldn't manage to connect the ball and just try to play against the line. Reverse sweep is attempted and pays the penalty for that. 7th wicket back in the pavilion. This is absolutely Flum in front of wicket, no doubt at all. 14 for loss of 7 wickets back in the pavilion. Last over remaining and needed another 21 runs to win this match. It's a long way to go. So after this match, one more big match, what we are talking about, the two very good teams will going to clash. And that next match, the quarter final between Sridevi cricketers Jeppu versus team Friends Kuttar. Winning the toss, SCC, they elected to field first. And Taif will going to bowl the last over of their innings. 21 needed from last over. Taif, the tall man from the Planet Air Travel end, round the wicket right arm. This time, oh, what a catch. Excellent catch. Everything is going wrong here for the chasing team. The wicket number 8 is back in the pavilion. 14 for 8. Disappointment continues here from United Suratkal. Nothing wrong with the stroke actually. He just flicks that one off his legs. But taken an aerial route and a good catch taken in that mid-wicket region, short mid-wicket region. At 14 for 8. This is what the cricket lovers enjoying the game of cricket in UCG. Of course, one of the best moment for any cricket lover to come and watch the cricket tournaments. It's a different feelings when you're coming here in UCG cricket ground under the shelter of the branches of tree around this cricket ground, and make this different feelings, isn't it? Watching the cricket matches here in UCG cricket ground. Salam is a new batter in. This time appeal for leg before wicket and pitching outside the line of leg stump. The bowler is operating around the wicket. Leg by call by umpire Pradeep Kothari. With the addition of that leg by Scobar Namozanto. 15 for 8. 20 needed from 4. And at least 3 sixes required for the victory. Bowled out, 9th wicket back in the pavilion. Now looks like just a formalities left in this game. 3 balls remaining and 20 required for the victory. Even 3 sixes in a row will not going to help the team to win this match. And looks like it's a dominated performance from the bowlers of United Pathur. After they are collapsed a little bit in the batting performance, but they depended very well that small total of 35. You're watching this. Looks like they're given up, and that's it for this match. Team United Pathur, they won this match quite comprehensively and with a huge margin of 19 runs
Congratulations for the team United Patur for their performance, and now we are coming to the one more big match here, match between Sri Devi Cricketers Jeppu versus team Friends Kutar. Toss which is completed. Captain of Sri Devi Cricketers Jeppu, they won the toss, elected to ball first, and before the match will going to start here. It's a time to change in commentary box, but just have a look at the beautiful view of sunset, and this is a wonderful view you can see in the big screen, and of course almost looks like the sun will going to complete the journey from east to west, and the cameraman catching that beautiful moment, isn't it? You can't get, of course, in time progress, the more colors will going to surround the sun with some orange color. It looks more beautiful. So coming to this next match, and before that is a time to announce the man of the match. Izaz, one who really dismantled the batting department of their opposition team with the excellent bowling spell of 2 overs, 4 runs, and picked up 4 valuable wickets, and it deserved this man of the match award. May I request Izaz, please go to the main stage and get your collect your man of the match award from our chief guest Sujit, and I request Sujit, the chief guest, for the presentation of man of the match award, and Izaz from United Patur will going to receive the man of the match award from our chief guest Sujit. Thank you. Thanks a lot. Yes, thank you, Satish. Moving over towards the next match, that's between Sri Devi Planetary as well as Friends Kuta. It's going to be the 9th match of Gaurav Trophy 2025, held at this most prestigious UC cricket ground. And coming towards the part, toss was won by Planetary SDC, and they have elected to field first. And I request the batsmen of Friends Kuta to enter the field, as we are short of time. Still 3 more. So still 3 more matches are remaining. Considering this, after last 2 matches are remaining. It's Gaurav Trophy 2025, proudly presented by Planet Air as well as Jeppu Friends, in loving memory of late Gaurav Bolar. This is the day 1 schedule of this tournament. Gaurav Trophy 2025. It's a local pool, and the match is going between STC Planet Air as well as Friends Kuta. The 9th match of the tournament of the day 1 schedule. And the 2 batsmen are heading over to the midfield. The field has been set, outfield has been set. The batsmen are going to be set very soon at the start of the night match. Yes, we have 2 batsmen for team Friends Kuta. That's
Preetham on the striker's end and Sunil on the non-striker's end, and Shanawaz is to do the proceedings for the first over, coming from the commentary box end, passing umpire Pradeep Kothari for the first tap to Preetham for Friends Kutta. It's the start of the first ball in the first over, and he balls it. What a goal! But I think Shanawaz just slightly releases that ball. The fast movement, but I think a batsman could not manage to take up any run in the first ball of the first over. And I would say this is a power play over. The first innings, first ball was completely beaten. Good start for the bowling team. Second ball in progress. Shanawaz to Preetham, and he balls in. What a delivery! A pre for like before, and it's gone. What a ball that was! Absolute incoming delivery, attacking the off stump. And taking up the first wicket of Friends Kutta. Preetham is a man walking back into the pavilion. What a breakthrough coming at the first over in the second ball from Shanawaz of Planet 8 SDC. A great start for the team. Planet 8 SDC taken up a wicket in the very second ball of the first over. That's by Shanawaz, the man, the destructive man, sensible batsman. Preetham is walking back into the pavilion. New man coming into the batting attack for Friends Kutta. It's a new man coming into the batting attack for Friends Kutta. And the third ball, what an incoming delivery, rolling down the carpet, but the batsman just tipped away towards the backward point region. Fielder there given a protection, just a single coming in this delivery. 3 balls completed. Now the scoreboard has started for the team. Friends Kutta, single on the board, 3 balls completed. 3 more balls remaining of the very first power play over in the first innings between the match. Planet 8 as well as Friends Kutta. As we have a white and left combination in the batting attack of Friends Kutta there. A left-handed batsman facing the fourth delivery of the first over from Shanawaz. He was directly attacking the stumps, but I think Pradeep Kothari are showing any. And it's an out call from the umpire Pradeep Kothari. While taking up the second run, there was the batsman was slightly outside the crease. At the mean moment, issue was a man there in the backup. Get hold of the ball and uprooted that stump. So the second wicket departure, walking back into the pavilion. Second wicket departure in the very first over for Friends Kutta. Friends Kutta looking in a deep trouble after getting rid of their 2 batsmen in the very first power play over. Not a good start for the team in the batting performance, I'd say. It's already time 5:45. Scoreboard is 2 on the board, 4 balls completed, last 2 more balls remaining. Mahesh is a new man who is brought into the tag for Team Friends Kutta. 5th ball in progress. Sunil on the striker's stand tries to play the shot on the square leg region, but I think could not make that connection with the bat as well as the ball. Good over. Last ball remaining of the very first power play over. Shanawaz is strictly dominating the batting attack of Team Friends Kutta, not leaving them to make any good runs in the power play over. So final ball remaining of the first over. Sunil to face the final delivery. Yet again, same ball. Just passing away from the outside line of the off stump. Good ball coming to an end. Good over. Completion. Just 2 runs conceded from Shanawaz. 2 wicket departed of Team Friends Kutta.
It's a new man brought into the bowling attack. It's Anif Achapanur. He's also named as to do the proceedings of the second over from the Planet 8 end, passing umpire Sriraj for the first time towards batsman on the striker end is Mahesh from Friendskuta. Let's see what his sensible batting and cricketing strokes bring up once for the team. Team Friendskuta looking in a deep trouble, just conceding 2 runs from the bowlers of Shanavas in the very first over, taking up 2 wickets. It is not a great start for the second over. Starting from Anif, the ball was strictly drifted away from the leg stump. Umpire stretches his arm, given up a wide. Addition added to the scorecard. 3 runs on the board. Still first ball in progress of the first over, and chips it away. Fielder underneath, Gaurav Bolar. What a catch! What a brilliant catch! Running, coming from the extra cover region towards 30th circle. Taken up a brilliant catch, departing the most sensible batting. Batsman of Friendskuta, Mahesh, is walking back into the pavilion. One more breakthrough coming in the very first ball of the second over. After conceding 1 wide in the previous delivery, he has taken up 1 valuable wicket for team of Friendskuta. Mahesh was a man walking back into the pavilion. Scoreboard is totally frozen there. 3 runs on the board, 3 wickets down for the team. Team Friendskuta looking in very deep trouble now. They need to buck up. They need to make scores either in singles or in doubles or in hitting boundaries and maximum to reach up a high target mark, to set up a target so that Planet E could chase up them. Just 1 ball completed of the second over. Second ball in progress. New man coming into the batting attack is Santosh. Second ball in progress. Anif coming for the second time to Santosh, but I think the ball was slightly drifted away from the wide line of the leg stump. Pai stretches his arm, given up a wide. 1 more addition to the scorecard. Scoreboard moves on to 4 on the board. Still the second ball in progress. He is bowling like 1 wide, 1 a legal delivery. Yet again 2 back-to-back consecutive wide balls, slightly giving an increase in the scorecard. 1 more addition, 5 runs on the board. Just 1 ball has been completed. Second ball is in progress. Second ball in progress. Santosh to face the very second ball of the second over and plays it back towards the bowler, but I think the bowler just missed it. Ball was coming follow through towards him. Just a fumble coming at the last moment, because at the meantime batsman could take up a single run easily. So 2 balls completed. Now the scoreboard moves on to 6 on the board. Third ball in progress. The man Sanil, a destructive batsman for the team Friendskuta now. Third ball in progress. What a delivery that was. The ball was coming absolutely down the carpet. No chance for the batsman to make up any runs in that delivery. The scoreboard is completely frozen there. 3 balls completed, 6 runs on the scorecard. Now 3 wickets have been fallen down for team Friendskuta. They could not go for any fancy cricketing strokes because they would lay them another wicket. So they need to play sensible for the team to bring up more runs to set up a high target for Team Planet 8 STC. Yes, completion of 4 overs, 2 back-to-back dot balls. 6 runs on the board. 3 wickets down now. Fifth ball in progress. Fifth ball in progress. Sanil on the striker stand to face the very 5th delivery of the power play over. These bowlers are strictly dominating the batsmen of team Friendskuta in the power play overs, where the batsmen have an advantage to make up a huge runs in these 2 overs, but they're getting struck, the batsman not making any runs with the bat. 5 balls has been completed, 1 run has been taken in the previous delivery, so the final ball is remaining of the second over. 7 runs just considered in 1.5 overs. 3 wickets has been tumbled off team Friendskuta. Last ball remaining. He said the ball was totally down the carpet, but I think the bowler was missing his line as well, his length. Because of that, ball was just drifted away from the wide line of the leg stump. Wide was signaled by the umpire. 1 more addition to the scorecard.
This bowler has given up runs in the addition with wides. So scoreboard moves on to 8 on the board. Slide a bit. Sorry, I pardon, 9 on the board. 3 wickets down. Last ball. Switch it try. Missed it. And this needed him a wicket. This destructive man is walking back into the pavilion. He thought of hitting that ball with the switch hit. This was a wrong shot chosen from you. That led him. Another wicket fallen down. Now the most experienced player is walking back into the pavilion for Team Friends Kuta. 4 wickets has been departed. The bowlers of Team Planet SDC are strictly dominating in the 2 power play overs, taking up 4 wickets down. 9 runs they have conceded in the previous 2 overs. Let's see. Still 4 more overs are remaining. Batsmen are still remaining for Team Friends Kuta. Can they buck up in the last 4 overs? Let's wait and see. Santosh on the striker's end to face the first delivery of the third over. What a ball that was. Chipped it away towards Gully Point region. They feel that they're given a protection. I think just a single coming in the first delivery of the third over. Shanawaz is brought back into the attack to do the proceedings and ball the third over after a very good over. He has bowled in the very first over of the power play in the first innings of Planetary STC. Is brought back into the attack in the third over. First ball, just a single coming in this first delivery. Score now has moved on to double digit 10 on the board for Team Friends Kuta. First ball has been completed. Second ball, he tries to play that shot in the final region, but I think it was not a good shot played. As well as the ball just chipped away towards the third man region for a single now. With the single, a scoreboard has been leaded up to 11 runs on the board after completion of 2 balls of the start of the third over. Santosh on the striker's end to face the third ball of the third over. Shanawaz coming from the commentary box and passing umpire Pradeep Kothari for the third time. What a delivery that was. Absolutely an incoming delivery. Just right inside the wide line of the off stump. A good one. Now the batsman is completely beaten in the previous delivery. Fourth ball in progress. Santosh to face the fourth one. He balls it, chips it away, straight to the hands of the feet at the Gully Point region. That's lefty Nawaz. Was taken up the catch very well, leading up another wicket for the team Friends Kuta. Team Friends Kuta are tumbling the wickets as bowling. Have a look at the replay. Another wicket has been fallen down for the team. 5 wickets has been fallen down for Team Friends Kuta now. As far as now we can see, they are looking very in deep trouble. 11 runs they have only scored in the last 2.4 overs. 11 runs just conceded from the bowlers of Planet Air STC. Taken up 5 valuable wickets now. Last 2 more balls remaining of the third over. It's a new man coming into the batting attack. It's Nishan for Friends Kuta. Let's see what his batting performance can bring up the runs for the team. Fifth ball in progress. And what an incoming delivery. No one's conceded in this delivery. Final delivery remaining of the third over. Shanawaz to Nishan for the final time from the commentary box and he balls it. The ball was straightly down the carpet. Batsman not showed any interest in that delivery. 2 consecutive dot ball to complete the third over. 3 overs completed. Scoreboard is struck with 11 runs on the board. Loss of 5 wickets down.
It's the start of the fourth over. Vinod Pollard has brought into the attack for Team STC Planet Air. A good ball. The batsman just tipped away towards the square leg region there. Dikshit, the feeder, present. Given a direction, just a single coming in this delivery. Now the scoreboard has been increased up to 12 runs on the board. I'd say 5 wickets has been tumbled for Team Friends Kuta. Tries to play, but sharp incoming leg cutter delivery. Misses the batsman. No connection shown within the bat as well as the ball. This ball has been completely beaten. 2 balls completed. Score is 12 on the board, and this time the ball went straight to the hands of the bowler. Yet again 2 back-to-back dot balls. No scorecard has been increased. 3 balls completed. Last 3 more balls remaining of the fourth over. Fourth ball. What a delivery. Appeal for the catch, and it's given. The bat at the last moment led him a wicket, as well a wicket for Team Friends Kuta. Total of 6 wickets has been tumbled for Team Friends Kuta. The batsmen are looking in very big trouble. Not able to make any runs against the bowling attack of Planet Air STC. So 4 balls has been completed, just considered 1 run and taken up 1 valuable wicket for the team. Vinod Pollard. So 2 more balls remaining of the fourth over. New man coming into the batting attack is Vishwas. Fifth ball in progress. Vinod coming from the Planet Air end for the 5th time, passing umpire Sriraj for the 5th time to Vishwas. He balls it, sharp incoming delivery as well as well feeded at the mid-wicket region from Altaf Valpadi, passing the ball backside behind towards the wicket-keeper. Just a single coming in this delivery. With a single, scoreboard moves on to 13 on the board. Final delivery of the fourth over. He balls it, switch it try, improvisation. Hanif, the feeder at the backward point region, fielded well, saved 1 more run. After completion of 4 overs, just a single coming at the final delivery. So 14 on the board, loss of 6 wickets down. Last 2 more balls, 2 more overs remaining of the first innings. Let's see what the batsmen can bring up in these last 2 overs. Can they bring up a high target or end up with a low scoring target for against the Team Planet Air STC? Let's wait and see. As a new man brought into the bowling attack is jersey number 44. It's Namaz lefty coming from the committee box and passing umpire Pradeep Kothari for the first time in the 5th over to the man on the striker's end. It's Naveen. I think the bowler ball well. Just a single coming in this delivery at the start of the 5th over. Scoreboard is strictly increased up to 15 runs on the board with a single. 1 ball completed, 2nd ball in progress to Vishwas. It was a juicy full toss, but I think it was slightly away from the wide line of the off stump, as well as umpire stretches his arm, given up a wide. 1 more addition to the scorecards. Now the scoreboard moves on to 16 on the board. What a delivery! And appeal for a stump out is gone for upstage. Let's wait and see what's the call coming from the 3rd umpire.
It's not out. Call from the third umpire. Nevertheless, very well uprooted from the keeper Sabit there for Planet 8 STC. 2 balls has been completed of the 5th over. Scoreboard is 16 on the board. Loss of 6 wickets down for Friends Kutta. Third ball in progress to Vishwas on the striker stand. He balls it, chips it away towards the Spalak region there. And if the fielder there present, very well fielding effort, saved main runs where the batsman could have taken the second run. He did not left to take up the second run. With the single, scoreboard has now increased up to 17 runs on the board. 3 balls has been completed. Fourth ball in progress to the man Naveen. It was not a good shot chosen from the batsman to play with for this ball. Nevertheless, now the ball has been beaten from the batsman. 4 balls has been completed. 17 on the scorecard. 5th ball. Sharp incoming delivery. But I think a ball was slightly outside the wide line. Wide signal by the umpire. One more addition to the scorecard. Score moves on to 18 on the board. Still last 2 more balls remaining of the 5th over. 5th ball, hits it. Chance of a catch. Fielder underneath and is taken. And the wicket is walking back into the pavilion. Wickets are tumbling in numbers for team Friends Kutta now. 7th wicket has been fallen down. Still final ball remaining of the 5th over. The final delivery, chips it away, chance for the run out, but I think the batsman was well inside the crease. Nevertheless, single run taken in the final ball of the 5th over. So after this single, scoreboard has moved on to 19 on the board. Loss of 7 wickets down after completion of 5 overs. Last final over remaining in the first innings. That's going to be between Planet 8 STC as well as Team Friends Kutta. It's Vinod Pollard who is brought into the tag in the bowling department of Planet 8 STC. Was going to bowl the death over in the first innings. First ball. What a ball, but straight to the hands of the fielder. Chance of run out. But the batsman was quick enough to take up that single run. The bowler was not able to get hold of that ball. Otherwise, there was a chance of a run out there. Nevertheless, single run has been taken in the first ball of the final over. 20 runs coming up on the board. Second ball in progress. Hits it straight into the hands of the fielder. One more wicket has been fallen down. The batsman hit that straight to the hands of the fielder. Nevertheless, 8 wickets has been fallen down for Team Friends Kutta. 2 balls done of the final over. Still last 4 more balls remaining of the first innings. There's one more young talented player, Adi Shetty, brought into the batting attack. He's well known for his bowling performance. Let's see what his batting bring up for the team. Score is just 20 on the board, 8 wicket loss. Third ball, I think Vinod Pollard missed his line as well as the length. Bowling the ball away from the wide line. Umpire stretches his arm, given up the wide. One more addition, given up the total. 22 runs on board. Still the third ball in progress. Third ball, hits it in the no-fielder region. Nishan coming from the mid-off region there into the 30-yard circle. Just a single coming in this delivery. 3 balls completed. With this single, score moves on to 23 on the board. Last 3 more balls remaining of the first innings. Adi to face the 4th delivery. And hits it. Well,
But I think there is a feeder given a protection. What a throw that was, straight to the hands of the bowler. Just a single coming in this delivery. 4 balls completed, 24 runs on the board. Last 2 more balls remaining in the first innings. 5th bowler. It was the man, but straight to the hands of the feeder. Chance of run out. Yet again, missed by the bowler. He could not collect the ball very well. Otherwise, there was a run out chance. Another wicket will be departed if the bowler would have collected that ball, but it was a miss. Single taken by the batsmen of Team Friends Qatar. With this single, scoreboard has been increased up to 25 runs, and this time the final ball hits it away towards the feeder there, and just a single coming. One more wicket has been fallen at the striker's end there. With this single, scoreboard is 26 on the board, and 27 is a target for Team STC Jeppu Planet Air to take up in 6 overs. They're chasing up a target in the same region, 20 to 30. Yes, this is the time to change the boys in the commentary box, and handing the mic towards the most popular Hindi commentator, Mr. Gopi. Over to you, sir. धन्यवाद सात्विक. So the target is 27 for Planet STC Jeppu, set by Friends Qatar, had batted first. They managed to score 26 runs in the stipulated 6 overs. 27 the target, exactly 4.5 runs per over the required run rate for them, and their innings now going to start. The first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, और दोनों आर्मिक बल्लेबाज as usual नवाज लेफ्टी और अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और महेश the man starts the bowling proceedings from that side end, और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. तो बिल्कुल अंधेरा सा मैदान पर छाता हुआ, रोशनी काफी हद तक कम हो चुकी है, और गेंदबाज महेश इस वक्त तैयार. ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट. फर्स्ट बॉल, इस बार गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकरा, इस बीच अपील करते हुए महेश, और इस बीच एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. और आई थिंक इसको बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, नहीं इट्स ऑफ द लेग. एक रन का इजाफा और एक रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 1 विदाउट लॉस. प्लैनेट एयर एसटीसी जेप्पू, 27 the target for them in 6 overs. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और इस बीच अल्ताफ वालपाड़ी जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार महेश की गेंदों का, और महेश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. अल्ताफ वालपाड़ी के लिए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर, और दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त महेश की गेंद. यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, चूंकि और गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया, और रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला. शाम के 6:10 यहाँ पर बच चुके. इट्स ऑलरेडी
6 past 10 past 6 in the evening और महेश अगली गेंद लेकर तैयार इस बार that is an absolutely fantastically struck by Altaf Walpadi and it's gone many miles from the fence. It's a maximum. और इन हालातों में इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है जिस तरीके से अल्ताफ वालपाड़ी ने इस गेंद को उछाला था, काबिले तारीफ है, ऐसा कहना पड़ेगा। महेश की गेंद मिडल लेग स्टंप पर थी, जस्ट कॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट और रिप्ले पर दिखाया जा रहा है एंड इज डिस्पैच्ड इट इन स्टाइल ओवर द फेंस फॉर अ 6। बेहतरीन स्ट्रोक और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। अल्ताफ वालपाड़ी जानते हैं इस वक्त मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ, जितने जल्द से जल्द मैच को समाप्त किया जाए उनके लिए बेहतर होगा। ये गेंद इस बार हल्के सी गेंद प्लम, एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहता, मिडिल स्टंप को कंसंट्रेट कर आती हुई गेंद बैकलेग पर टकराई और आखिरकार अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई, उन्हें पगबादा यानी एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट घोषित करने में। और देखिए यहां पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है महेश की गेंद थी इस वक्त लेग कटर गेंद बैकलेग पर टकराई एंड एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। और अल्ताफ वालपाड़ी का विकेट गिर चुका, हालांकि छक्का लगाने के बाद एक आक्रामक बल्लेबाजी की सूचना जरूर दे चुके थे, लेकिन यहाँ पर अगली गेंद पर उनका विकेट गिर चुका है। बेहतर कमबैक करते हुए महेश और 7 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। इट्स 7 for 1 इन द फर्स्ट ओवर। तो इस वक्त उनका विकेट गिर जाने के बाद अल्ताफ नंबर 2 का आगमन होता हुआ इज नाउ अल्ताफ बसरगुड़ी का आगमन इस वक्त हो चुका है और महेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन इस बीच प्राप्त करने में सफल लेग बाय के रूप में। और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 8 रनों पर, 8 ऑन द बोर्ड। और जहां तक सवाल है गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी, उनके फ्रंट लेग पर टकराई थी और आखिरकार एक रन बल्लेबाज को मिलता हुआ 8 रन बन चुके हैं। 8 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज महेश इस वक्त नवाज लेफ्टी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद नवाज के लिए खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल। गेंद जाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। जस्ट अ सिंगल रन scored in the last delivery of the first over. A pretty good start, except they lost their wicket of Altaf Walpadi. Pretty good start made by the batsmen of Planet Air STC Jeppu. 9 for the loss of 1 wicket after completion of first over. That means exactly 18 runs more required in remaining 5 overs. 5 over का खेल बाकी, 30 balls remaining. 18 runs still they have to score for victory. Exactly 3.60 the required run rate for them at this situation. आदि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए he just starts a fresh proceedings from the commentator box and right arm around the wicket इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करते हुए इस वक्त नवाज लेफ्टी। अभी भी रन्स 18 और चाहिए, 30 गेंदें बाकी उनकी पारी में और ओवर की पहली गेंद लेकर आदि तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ, बिल्कुल अंधेरा सा मैदान पर छाता हुआ, रोशनी जो कि काफी हद तक मैदान पर कम हो चुकी है। और इस बीच आदि ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, स्टंप से ऊपर गेंद टकरा चुकी है और इसी के साथ नवाज लेफ्टी की पारी यहां पर समाप्त। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट वांटेड टू प्ले द रिवर्स शॉट द लास्ट मूवमेंट, मच स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बॉलर आदि। और गेंद इस वक्त देखिए किस तरीके से, हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले, बाएं हाथ ऊपर द विकेट गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ रिवर्स शॉट खेलने में चूके, गेंद उनके पैरों के बीच से निकलती हुई मिड लेग स्टंप पर टकराई, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है। नवाज लेफ्टी इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन एंड नाउ प्लैनेट एसटीसी आर नाउ 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और अब क्रॉस एंगल पर देखिए किस तरीके से इस गेंद पर नवाज लेफ्टी का विकेट गिरा था बोल्ड आउट के रूप में। It's 9 for 2. We are just waiting for the number 4 batsman. नंबर 4 बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए लंबे कद के खिलाड़ी शायद निशु जो कि स्वयं कप्तान है प्लैनेट एसटीसी जप्पू के इस वक्त क्रीज पर मौजूद और आदि इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज निशु इस वक्त सामना करते हुए आदि, 2 फील्डर क्लोजिंग फील्डर इस वक्त सजाया गया है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड विकेट। ये गेंद से बाहर और रन के लिए दौड़ पड़े और शॉर्ट फाइन लेग फील्डर यहां पर चूक चुके हैं। वाइड का इशारा
1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। और जहां तक का सवाल है इस वक्त रन्स इस वक्त चाहिए प्लैनेट एसटीसी के बल्लेबाजों को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद लेग से बाहर की ओर निकली थी और रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। एक्स्ट्रा जात्रिब के रूप में 11 ऑन द बोर्ड। आदि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। और इस बीच ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, प्लम इन फ्रंट। अब अल्ताफ वालपाड़ी, अल्ताफ बसवनगुड़ी की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। तो निश्चित रूप से अंदर की ओर आती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहता, गेंद उनके पैर पर टकराई और यहाँ पर उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद थी आदि की और अंतिम क्षण में कुछ हद तक लाइन पर टिप्पा खाकर अंदर की ओर आती हुई और शायद बैक लेग पर गेंद टकराई और अंपायर को कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हुई, उन्हें एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट घोषित करने में। एक और विकेट गिर चुका है, जस्ट मनाते हुए इस वक्त खिलाड़ी देखिए किस तरीके से। और 11 रनों पर तीसरा विकेट यहां पर हो चुका है। सो द मैच इज नाउ स्टिल इन बैलेंस। प्लैनेट एसटीसी जेपू के लिए अल्ताफ वालपाड़ी में पहले ओवर में छक्का लगाने के बाद एक बेहतर शुरुआत जरूर दी थी, लेकिन इसके बाद 3 विकेट गिर चुके हैं। अल्ताफ वालपाड़ी पहले आउट हुए थे, उसके बाद नवाज लेफ्टी आउट हुए और अब अल्ताफ बसवनगुड़ी आउट होकर पेविलियन वापस। नए बल्लेबाज नवाज, एक और नवाज नंबर 2 का आगमन यहां पर होता हुआ आदि सफल और अब तक उनका यहां पर साबित हो चुका है। और लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस वक्त तो गेंदबाजी करते हुए और ये गेंद इस बार गेंद ड्राइव किया, गेंद कहां पर गई है, कवर पॉइंट पर गई है, फील्डर दौड़ते हुए इस वक्त। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 2 और यहां पर एब्सोल्युटली इस वक्त कुछ भी मैदान पर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ अंदाजे से इस वक्त आंखों देखाल सुनाना पड़ रहा है। तो जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का और आदि इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। इस बीच बाएं हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और नवाज इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त गेंद और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। एक और विकेट और ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त फ्लिक किया था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद सीधे फील्डर के हाथों में पहुंचती हुई। और यहां पर देखिए कुछ हद तक इस वक्त सामने जो खुला नजरिया दिखाई दे रहा है उससे बेहतर लाइव टेलीकास्ट में इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से गेंद को फ्लिक किया था ऑफ द टोज और शॉर्ट मिड विकेट पर इस कैच को लपक लिया गया एक बेहतर जजमेंट के साथ। और एक और विकेट गिर चुका है, 4th विकेट डाउन। नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मैच। प्लैनेट एयर एसटीसी नाउ 13 for 4. Now 14 more runs they have to score for victory and what a fantastic over progressing here from Adi. 3 wickets in this over. They captured 3 wickets in the first 4 deliveries. और अब नए बल्लेबाज साबित, one more good striker of the ball is now comes out to the middle. और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज आदि इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट तैयार। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद इस वक्त जा चुके हैं बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, गेंद का पीछा करते हुए रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त, लेकिन बैकअप होता हुआ मिड ऑन पर एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। 14 द स्कोर, स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर फ्रॉम आदि। और जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम गेंद का सामना करने का, तो इस वक्त अंतिम गेंद सामना करने के लिए तैयार निशु इस वक्त जो कि सामना करते हुए देखते हैं इस अंतिम गेंद पर निशु किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। और गेंदबाज इस वक्त आदि 3 विकेट इस ओवर में वो प्राप्त कर चुके हैं, काफी घातक गेंदबाजी अब तक पहले 5 गेंदों में उन्होंने की है। और इस बीच इस ओवर में अंतिम बार तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई इस वक्त सिली मिड ऑन की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट इस वक्त कर चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति, 2 overs completed and after 2 overs still the equal battle is now on, 15 on the board, 4 wickets lost and now still in the remaining 4 overs they have to score 12 runs for victory। 24 गेंदे 12 रन, रिक्वायर्ड रन रेट कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सवाल है इस वक्त रोशनी का।
और मैदान पर लगभग अंधेरा सा छा चुका है और इस वक्त बिल्कुल हमें यहाँ पर कमेंटेटर बॉक्स से कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जहाँ तक लाइव टेलीकास्ट का सवाल है, लाइव टेलीकास्ट इस वक्त साफ, अगर मैदान के लाइव टेलीकास्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर जो मैंगलोर मीडिया का लाइव टेलीकास्ट है वो काफी बेहतर इस वक्त, और उसमें आप साइड कर सकते हैं कि किस तरीके का क्रिकेट इस वक्त मैदान पर चल रहा है। 24 balls left, 12 runs required, और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दैट साइड एंड जगदीश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, निशो सामना करने के लिए इस वक्त तैयार, और जहां तक सवाल है इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी शुरू करते हैं। फर्स्ट बॉल ऑफ इस फ्रेश ओवर इज नॉट कमिंग अप, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जगदीश निशु के लिए, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और इस बीच सिली डाउन के फील्डर के इस वक्त ऑफ साइड पर तैनात किया गया है एक्स्ट्रा कवर पर, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त जगदीश तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार निशु के लिए, गेंद को खेला, इस वक्त गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर, गेंद को रोका गया वहां पर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, नाउ 11 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 23 डिलीवरीज, काफी गेंदें बाकी है, लेकिन सवाल इस वक्त है रोशनी का, और अगली गेंद इस वक्त साबित के लिए, यह गेंद जगदीश की गेंद की, साबित ने गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नो बॉल का इशारा इस बीच, और जहां तक सवाल है दूसरा रन का, दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल, एक ज्यादा खिलाड़ी ऑन साइड पर इस वक्त मौजूद, और अंपायर श्रीरज यहां पर नो बॉल घोषित करते हैं, तो फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज 3 खिलाड़ी इस वक्त मौजूद, और जहां तक सवाल है इस वक्त नो बॉल का, तो नो बॉल अंपायर घोषित कर चुके हैं, और 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। फ्री हिट गेंद, फ्री हिट डिलीवरी फॉर निशु, और देखते हैं इस फ्री हिट गेंद पर निशु इस वक्त क्या करते हैं। जगदीश दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद निशु के लिए, बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट, नॉट सक्सीडेड एंड कलेक्टेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, और डॉट गेंद यहां पर जुड़ता हुआ उनके खाते में। द स्कोर स्टेज एट 18 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद जगदीश की, निशु के लिए, गेंद को ड्राइव कर दिया, इस वक्त कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए साबित, दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद इस वक्त गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, गेंद जाते हुए इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन का इजाफा। शायद उर्वा क्रिकेट मैदान के इतिहास में ही इतने घने अंधेरे में इस वक्त यह मैच खेला जा रहा है, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है उर्वा क्रिकेट मैदान के इतिहास में, बिल्कुल अंधेरा सा छा चुका है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि यहाँ पर खिलाड़ी गेंद को किस तरीके से साइड कर रहे हैं। यह गेंद स्वीप कर दिया है इस वक्त, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, गेंद पहुंची डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर आए, एक रन का इजाफा, और स्कोर बढ़कर इस वक्त एक रन के साथ पहुंच चुका है 20 रनों पर। 21 इनफैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज निशु और साबित इस बीच सेंसिबल बल्लेबाजी अपनाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेला, लेकिन वहां पर फॉलो थ्रू में मिसफील्ड थोड़ी सी, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, जस्ट अ सिंगल गॉट। ओवर नंबर 3 has been came to an end after 3 overs. Planet at STC Jeppu looking in a comfortable situation. Now it's 22 for the loss of 4 wicket. Now 5 to get from 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. So देखिए यहाँ पर आधे चंद्रमा आधा चांद को इस वक्त दिखाया जा रहा है। निश्चित रूप से कुछ हद तक बादलों के आड़ में इस वक्त छुप चुका है चांद, और चांद का सिर्फ एक पार्श्व यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा मैदान पर बिल्कुल अंधेरा सा छा चुका है। 5 रन चाहिए, काफी लंबी बातचीत चलती हुई फ्रेंड्स कुत्तार के खिलाड़ियों के बीच में। निश्चित रूप से बचे हुए 3 ओवर में कमबैक करने के लिए इस घने अंधेरे में इस वक्त गेंदबाज को चमत्कारी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाजों को। सो 4th ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स, और गेंदबाज आदि जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, इस वक्त अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। Just 5 to get from remaining 18 ball. First ball आदि गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, अपील, लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग से बाहर की ओर निकलती हुई एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। लेग बाय का इशारा। 23 on the board for losing 4 wicket in the over number 4 started just short while ago in the innings. This is match number
This is the match number 9 of this prestigious cricket tournament. Gaurav Trophy 2025 is now progressing, which is proudly organized by Planet Air Jeppu Friends Mangalore. और आदि ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त स्ट्रेट पास दी बॉल डाउन टू लॉन्ग ऑफ, एक रन मिलेगा, मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. 24 3 टू गेट फॉर विक्ट्री. निशु और साबित इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए, और इस बीच गेंदबाज बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. और ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, इस बार शॉट थर्ड मैन फील्डर गेंद को शायद छोड़ चुके हैं वहां पर, और गेंद सी में सीधे सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ तो शायद अंपायर का इशारा आना इस वक्त बाकी है, तो बाई का इशारा चौका. एंड दैट्स इट फॉर दिस मैच. प्लैनेट एयर STC Jeppu registered a thrilling victory under darkness against Friends Kuttar, and with that victory they are through to the next round of this competition. So match number 9 of this prestigious cricket tournament has been games to an under darkness, under heavy darkness in fact. और इस मैच में Planet Air STC Jeppu विजय दर्ज कर चुका 6 विकेटों से 14 गेंदें बाकी रखते हुए. तो आज के So man of the match of this match award goes to Shahnawaz, who bowled fantastically, who conceded just 3 runs in his 2 overs scored and captured 2 wickets, and because of that fantastic bowling spell, 2 overs no maiden, 2 runs 3 wickets. Shahnawaz adjudged the man of the match. I request Shahnawaz please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests.